was an art. Come where we start. Come back to where we from. Where we start. Come back to where we from. Back to where we started. Come back to where we from. Come back to where we started. The night won't last for long. Come back to the beginning. Come back to the start. Come back to the beginning. When techno was an art. Come back to where we started. Come back to where we from. Come back to where we started. The night won't last for long. Come back to. This stream contains fast flashing images that may affect viewers who are susceptible to photosensitive epilepsy or other photosensitivities. Viewer discretion is advised. Welcome to the Masters Santiago Grand Finals. I am Pansy. I'm joined by Hypoc, and we actually have the honor of being joined by Valorant product manager Armand. How are we feeling today, folks? Feeling great. Pumped. Yeah, crowd is out in force again today. Yeah, I mean, it's a good day to be kind of revealing a couple of things. I think we've got some fun stuff coming up. Yeah, okay, look, we've got a show match where we're going to be debuting Valorant's newest agent and the new game mode. Armand, what can you tell us about Knockout, which is the game mode which is coming up, and we're debuting it today. So anything leading in your mind here, what have you got for us? Yeah, so Knockout is our new 5v5 round-based elimination mode. It has a lot of similarities to TDM, but also some mechanics that make it play very differently from that game mode. Some of the things that it includes is a revive mechanic, so every time you kill an opponent, your teammate comes back to life. So we've got to be trading. Yes. That's what you're telling me. Exactly. So finally. Yes. The entire mode is based off of the trading fantasy is the way I'd like to describe it. So it's intended to facilitate a lot more team play than TDM traditionally does. Yes. I think when you think of TDM, it's like running it down, probably just like trying to warm up, feel the agent that you're playing, you know, trying to learn. But Knockout is a lot more Valorant adjacent is the way that I would describe it, but there's no objective beyond eliminating the enemy team. Okay. Okay, I'm looking forward to that one. I mean, well, yeah, just I guess in terms of the Resurrect then, in terms of like getting to the end objective, how does that kind of play into that? So there is a round timer that goes up to 3 minutes, and then there's an overtime as well that kind of functions in a unique way. Okay. But the main thing that kind of makes it so that the rounds end is as the round length goes on, the respawn timer also becomes longer. Okay. Yes. Okay, but how about the maps? Where does all of this go down? Is this kind of where are we expecting to be? So it's on all 5 of the team deathmatch maps, but there is a unique mechanic that exists within the game mode as well, which is team territories. So there's a line in the middle of the map that separates the 2 territories from one another, and that wall can move based on whether or not somebody interacts with an orb in the middle. Oh, so you're like pushing it forward or back? Or Yes, yeah, and the intention behind that mechanic is if an enemy team crosses over that line, then there's a notification that appears to the other team that says an enemy has crossed the line. Somebody's crossed into, okay. Yes. So the intention behind that is to make it so that the game mode plays a lot more front to back, like in the traditional Valorant sense, right? Because you think attacker and defender. Flanking is something that exists in Valorant too, but it's not really common unless someone's like kind of lurking around. So that line is intended to function as like a staging line. It's really meant to be like, okay, we're set up and we're about to go in and try to eliminate whoever may be like lurking around a corner by throwing utility abilities. Awesome. Okay, and what are you most excited for players to try out in Knockout? What are you kind of looking for today? I'm really excited to see people play in elimination mode with the agents in a way that feels like they're actually expressing their kits in the way that they're really meant to be used to sort of like get intel, clear angles, so on and so forth. So still kind of an emphasis on utility in terms of, well, a different application versus traditional, but in terms of taking the space and then moving forward, progressing through. That's really interesting. I kind of like the idea of that staging area, changing the dynamic.
dynamic of the map as well. It kind of changes the gameplay loop a little bit, right? Because the map feels different. Versus team deathmatch, forcing people further forwards and stuff. So yeah, I'm excited for this one. And obviously, a show match wouldn't be a show match without the players who'll be playing in it. So we can run that up for you. Take a look. I mean, it's pretty star-studded there. Mike, anyone catching your eye? Mixwell, always. Will always have a place in my heart, obviously. I mean, Sassy, or you just hate him now? That's I don't hate crazy. him, I can't believe that came out live on broadcast. As you can tell, the audience here is pumped up for this. And we did kind of allude that there isn't just the game mode. There's a couple other bits, but we'll get there when we get there. The audience is just, I mean, they're busy today. They're in early. This one is looking good. I mean, damn. I'll say it again, Cantor is just the GOAT. The GOAT, in terms of the crowd work here in Santiago. Ooh. And how has he still got a voice? I mean, isn't that just the question? However, we've kind of leaded you to this point. We've brought you here so far. You've heard about the game mode. You now have that in mind. But all right, we've been teasing it. Let's introduce Valorant's newest agent. Not the best vibes today. I can fix that. Uredu? Wiemy za akcję. So, ready to get out of here? Wow. Like, come on, man. You can't do this to us. That sounded so good. It looked so good. I need to see it. Yeah. I need more of that remix. Yeah, can we play it again? Yeah. Production, run it back for us right now.
God, if this crowd wasn't already pumped up, they're going to be. That's the way to get them going today for the grand finals for sure. Oh my God. I mean, I'm sure you've seen this before, but then seeing it here, that's got to feel kind of cool, right? It feels awesome. Seeing the big wingman on the big screen, though, is, I think, the best part. Yeah, 100%. 100%. Oh, my word. And obviously, we will be learning more about this agent as we go on, right? Like, yeah. We kind of need to now. You've hooked me in. I need to learn more. I need to see how it plays out. It looked kind of supportive. It looked kind of, on the trailer, like a little alluding to it. However, we are going to find out exactly what those abilities do in just a second's time. So if you want all that info, you need to be paying attention right about now. Let's make some noise. Mix is our new Sonic Radiant from Croatia. He's upbeat, he's motivating. He doesn't just meet people at their energy level, he definitely brings them up to his. He's confident, he's got swag, he can pop off when he wants to, but he genuinely takes pride in showing up for other people and letting them do their best. Hell yeah, that's my team. Mix is a supportive character, and all of his abilities really are about enabling his teammates. We have some agents on the team that are about stealing the spotlight, but Mix is all about shining the spotlight on others. Damn, Sage, who trained you? I need some of that. Mix is a Radiant with the power of sonic energy, so he releases radiant sound waves from his body, and the vibrations from those waves have a physiological effect on people. One of Mix's abilities is a stim. Harmonize allows him to choose an ally and stim them. He also stims himself, and what's unique about Harmonize is it's not only a combat stim, but every time you or your ally gets a kill, you both refresh that stim, so it really keeps the party rolling. He also has an impulse device that he can use to imbue his powers with, alter the sound waves to produce different physiological effects like a heal or a concuss. Mix's ultimate base quake creates this sort of cone zone in front of him. After a brief windup, he deafens and pushes back and slows anybody who's caught in the blast of this gigantic sound wave. Your teammates can, freely flood onto a site and a retake or a site execute without your enemies even being able to hear you. Mix was actually somebody who was added to the roster to give Sage some relief as a healer on the battlefield. He was actually discovered by Clove and KJ at an underground rave when they were on personal leave, and he was someone that they realized was definitely more than a sound. He was somebody that was a unifier, a morale booster, which is exactly what they need this year as they face off against Legion. And joining us to break down Mix a little further, it's Riot's gameplay designer, June. Please walk us through some of these abilities. It looks unreal. Yeah, so Mix, like all our characters, has 4 abilities. He is a controller, so he can smoke, and that's on normal cooldown timer, 60-second cooldown timer. Mix's C ability is a device that he can throw, and it can either set it to be a concussing zone or healing zone. Now, I think I saw the waveform in there, right? Could you talk us through that with a little bit? Because I kind of want to learn it as we go, right? Because look, I'm a visual learner. Talk me through how this kind of works. Because how does it slot in compared to some of the other agents as well? What should I be thinking of here? Oh yeah, so this is sort of I guess one of the ways in which Mix is exactly as you'd expect as far as our controller goes, and it's something that's going to be familiar to you hopping onto the agent for the first time. It has 2 charges, 16-second smokes, really just sort of, standard smoker. Okay, perfect. And to follow that on, Harmonize as well. That's something that certainly I've got my eyes set on. How does that kind of synergize with other agents in terms of, I guess, typical uses? Yeah, so Harmonize is really where Mix can choose a player on the team, and you kind of become stim buddies, for lack of a better term. And you both get a combat stim, and as you both get frags, it actually keeps refreshing that combat stim. Oh, you can really snowball. Yeah. Yeah, exactly. So you put it on your jet, they dash in, they get their opening pick, it refreshes, etc. Sick. Okay, but then Impulse then, what is this? You kind of saw it a little bit in the trailer. What does it actually do? Yeah, so Impulse is, it has 2 modes. It has a concuss mode and a healing mode. You throw it, and it has this, it's a little device or bot that pulses on the ground, and it either is concussing or healing depending on how you set it. Sick. Okay. Obviously, well, the final one, base quake, obviously, but we'll have to park that for a moment. Yeah. Yeah, I think we're getting ready. I think it's time to go. We're not going to hold you up any longer.
Okay, well, we need the outfits for starters. Well, yeah. How are they coming in with cosplay Probably already? the best dressed show match lineup we've had. I see a Paper X jersey. Yeah, now that's bold. That's kind of crazy, right? Like, all right, fair play. I'm on board. I love it. Everyone's excited for this, but we kind of... Look, we can circle this one back around as well. Look, these lot on stage, you get themselves ready, lock themselves in. I mean, yeah, this atmosphere is wild, but let's kind of roll it back to the agent, because look, we were flying through that. I want to slow it down a second and get a little bit more context. I didn't think we got to the ult. No, so we want to talk about Base Quake, Jaden. Yeah. So Base Quake, it's like a cone ultimate, which is an unusual shape for characters. Oh, okay, first time? Yeah, you know, Mix is a back line. Your teammates are running out in front of you. We want to make sure that you don't hit them right as they're going out onto the site. So we have this cone ultimate. It deafens, slows, and knocks back enemies. So enemies who are hiding maybe on the site, it'll like actually push them out from cover. Also, it has this cool effect of making it so all these all the audio from like dashes and steps and abilities they can't hear, right, because they're deafened. So yeah. So actually good work on a stage like this, huh? Yeah, actually probably the perfect Don't give it to Paper X, please. No. They're already up to no good here. But again, if we're now starting to kind of, no, we've done the scripty stuff, we can actually start talking about it like normal humans. How do you kind of see this playing as well, though, Mike? Because like you've been looking at this a little bit, we have as well. Like I'm sure you have questions. Because there's a lot of ways this kind of sits in towards kind of well, call it supportive, also in terms of like initiator sort of play style. So it slots right between controller and initiator for me. Do you kind of tend to agree with that? Yeah. I think this character is definitely a character that thrives on those like exec heavy comps and maps. You know, we're having that stim, having you know, the heals after your fight, having concusses and smokes, like it really brings together a kit that really supports and executes in that way. Yeah, I mean, I do feel like I'm just going to be plagued by duos with this now, though. It is like it is the go-to, agent, right? If you're a duelist, you see, again, queue up, and you've got basically something can fill both roles. Yeah, it feels quite flexible, too. It doesn't feel as... Okay, being completely honest, I get a little nervous when I hear support, right? Or something very passive and maybe not as involved, but it does feel like it fills both parts, right? It doesn't feel almost. Yeah, as you said, it refreshes on kills, like with the stims, and it kind of snowballs. It still feels really present. Was that something to have to try and keep in mind of this kind of idea of not having it being two backlines, but still feeling involved, still feeling like you're influencing the outcome? Yeah, definitely. You know, Mix is a character where you're very like buddy to buddy, shoulder to shoulder, fighting there with your team. Yes. A lot of our other supportive outputs are like through walls or from far away. They're not like quite in the thick of it. Whereas Mix is definitely a character you want like by your side, fighting with you, trading you, cleaning up the mess after, you know, the whole thing. I guess actually we talk about controllers then actually. It's more, what's the range on the smokes? You obviously saw the cast range there. Is it similar to other controllers like Brimstone, for example? Yeah, similar to other controllers. Actually, I think a little bit bigger. Okay. Oh, wow. But yeah, definitely have a good bit of reach. Not kind of Astra Omen completely disconnected. They can play from the other side of the map. It's more with the pack. Yeah, more with the pack. And have you guys, I mean, all of you have tested this out, right? But have you seen any compositions that kind of suit it well? Have you seen any of those sort of like synergies already showing in some of the like gameplay tests? Yeah, definitely. I think it's definitely a character we wanted to be, like you guys kind of commented, that like duo, team play, social character that's really about being quite flexible, but we've seen a lot of success with all of our entry fraggers. Yes. And, you know, maybe not the ones that get too far ahead, like a Neon might be, yeah, you know, you stim them, they just kind of take off into the distance, you know, normal Neon stuff. But like a Phoenix or a Waylay or a Jet, any of these characters, right, where you'd expect to be a little closer to them. And have you tried it in the new game mode as well? Because I feel like it would really suit. This is like, as I said, just playing with your body, a little bit of warm-up. Let's hop in and just like duo it out. Yeah, the whole kit is like S tier on Knockout. He's very, very good. So yeah, nice. Check him out. No, I was just going to ask about Knockout. Yeah, basically what we're going to be looking for today. Yeah, again, in my mind, when I'm thinking about Knockout with this, it's just that, I don't want to say snowball effect, because I do feel like there's a comeback mechanic of when you go through that wall, for example, if you're really pushed back, you're still being told that there's someone behind the lines here. Is that ever something you have to keep in mind, that there is like comeback mechanics in these new game modes as well? Like trying to keep it like not too oppressive if you are like on the receiving end? Yeah, exactly. There's a huge risk with actually going into the enemy lines and trying to get those last kills, because if you don't succeed, then they can potentially swing it all the way in the other direction
position by snowballing and reviving all their teammates. Okay. So it has to be very intentional in terms of like going and clearing that space with your allies. It's always kind of fun, interesting, and finding out the depth of the mechanics you guys have to consider, because obviously it does go to the extremes, right? Like sometimes you will be absolutely hammered in spawn, but there has to be that way back through. I do think we are pretty close to getting into this, and I kind of hope we see some of those OT mechanics, because I think we alluded to it earlier, but that kind of tick down of health. I watched one of the videos, and it actually puts people on the spot. I felt pressured. I was terrified watching it, let alone playing it. Yeah. It forces a fight in a way where either team needs to take contact. Otherwise, the resolution is it's a 50-50 in terms of who wins. Okay, I think we are almost there. Thank you for your patience. We are diving right in. There's going to be 3 maps, so best of 3 rules, basically. Now, will I be able to keep up on that? No idea. But we get to watch the brand new agent in action. Mix. Let's see who's actually at the helm of this. I do need to kind of check in on that. It's been a long time since you casted from this side. Yeah. Again, here seeing the notification here. That's it. Yeah, we really wanted to make sure that players felt like they were getting rewarded for their assists, like we were celebrating that more in games. So you can actually see as you're watching Mix Series getting these assist banners that show, oh hey, you just got an assist because of this ability you used. Okay, and what's the refresh time? Is it fully refresh the ability in terms of the stim? Yeah, so every time you get a kill while you have Mix's stim on you, either the person received the stim or Mix himself, that will refresh the full duration of the stim. Okay. I think as well we just caught well, Casey backed into a corner. We did see some of the util getting destroyed as well. What's the... Yeah, so... Okay, actually, sorry. Case just held down this for ages. Yeah, but it does show that behind lines thing, right? Like, it's brand new for me, kind of keeping an eye on the UI as well, of some of the new notifications, even just seeing like, okay, you're rezzing Sage, and then again reviving in 3, like these new updates. It's gonna be kind of fun just getting to grips with this new concept and these new sort of gameplay mechanics. Yeah, it's definitely a more tactical mode overall. I don't notice as well, when you go past the line, you get the Fog of War on minimap. Yes, you don't have the information. Yeah, there's the Omen like minimap obfuscation that comes with his ult. And I think it is all down to TCK, right? This again, he just held down the floor. Good luck, last alive. Gonna have to try and do some damage. Good work. Oh dear, overwhelmed in the end and first round then. Gonna be ticking over to the other side. I think the crowd liked that one. No. But the pacing, I mean, how quickly does the spawn retimer scale upwards? Is that kind of instantly from the get-go, or is it kind of incrementally across the round? The intervals spread across the entirety of the round, but it's incrementally throughout the round. Okay. Yeah. So it's not linear. It's like it changes over the course of like you cross 1 minute and then it adjusts. An average round time from, I guess, from playtest is obviously going to be different. But in terms of average round time, how long usually do these last? It goes anywhere from like 2 to 3 minutes, I would say, on average, unless it goes into OT. But it seems like the way that both of these teams are playing is just like stacking all on one side and just running it down together, which I think is like a pretty interesting way of going about it. It's pretty chaotic right now. Yeah, I think Chaos is going to be the name of the game here, if I'm honest. But even with that... unlucky. But again, it feels like you have to be quite intentional with those combat stims too, because they're not going to be sat around forever. It's not a long duration. It feels like you have to be quite aware of what you want to achieve with it. So it's not just something to throw out on the fly every now and then. It's maybe to set something in motion. Yeah, definitely. It's an ability where it's definitely part of your go button, right? You throw that stim, you want to maximize every second you get of it. And you want to make sure you can get in there and take a fight with it, because stims in general are just such a big combat advantage, right? Are we holding spawn? Are we? Yeah, this is a strategy that we see pretty often too, right? So holding spawn, waiting for them to push, but then there's the wall mechanic. You can see the enemy team just push it forward. Oh, you see on the minimap, Yeah, so the intention there is that if teams do this, the wall is intended to flush them out. And it gives them less space basically to operate from. Exactly. Okay. Oh, they are getting battered. They are getting, And this is smoke and rolled. Just... Why they unleash Bastarda in this? That does feel... Maybe we need to shuffle the teams a little bit, gang? I don't think that they're going to agree to that. You don't think so? No. I also think they quite enjoy seeing the crowd also hates seeing one person alive not pushing forwards. Yeah, but it's Kesnet, so the whistling's not happening yet. Yeah, he gets given a lot more freedom on this. And alas, it is a mix, so we're going to see the gang run him down. But yeah, it's so cool seeing the fog of war, or like the Omen sort of like TP. Yeah, again, obviously lacking map layer, but also when you spot a player, they're not confirmed by minimap information either. Right. It's just the notice that they're in your territory, right? So no like hard intel reveal, just generally in the area. Okay. Let's
game plan now. Okay, well, I was thinking of strategy. More for me. We got the Tactibear. We're ready. Yeah, the Tactibear, yeah. True. That is highly necessary. I hate to say it, but I kind of want to see Neon get stimmed. There it is. So, well, Yep. we got what we wanted. Now, will the observers follow that? No. You've got Mix well. Thank you. Who just got dropped by Sassy. Yeah, I kind of want to see the interactions now with all the agents, see how that stim feels and how it kind of like, oh dear. Soypan's kind of doing some damage, but there is a chance for the resist. I was going to say, just to clarify, the res is instant on the trade, right? No, not instant. Oh, so it's not instant. So it triggers the timer, right? And then the timer will extend over the course of the round. Okay, okay. Yeah, I'm trying to get used to just like looking towards it, so like the 4 seconds there for like the Sage to come back in around, so it's like kind of, it's totally changing how I'm looking at the game as well, the dynamics of these fights, because there is like the ability to totally turn the round back, potentially in your favor. I see it now, yeah, up on the top. Well, we've got another stimmed up Neon, but Suga's going to do it anyway themselves. They don't need the assistance, apparently. But again, I guess it is that kind of fact that both of them get the stim, right? It's not just one, it's not just purely to set them up. You're also in the fight. Again, so Mix can kind of follow up on the duelist as well, and not just sit in the backline. You've got the stim benefit. Yeah, it's really for you to both feel confident pushing together, right? And it's also one of those things where if Mix is the one who gets the kill, it'll also refresh the stim for both of you. So it's not like you're totally relegated to letting them get the kill. It's something that you're both engaging in together. Now, if only they got an ult. I want to see the ult. Yeah. Mated here. Yeah, also the smokes look so cool. They look really aesthetically pretty. Are the smokes kind of like near sight inside like brimstones, or are they kind of empty like... They're hollow smokes, okay. So, yeah. They are on match point now for one of them not mistaken. Okay, I'll change it now. I want to see Neon ult stim. Oh. Yeah. You just want Reddit threads to start? Wow. That's crazy. That's right here. That's wild. Also throwing me off. Everybody using Spanish in game, trying to get the notifications right. It's a little bit tricky, but again, there's that support system, right? Look at it. Look at the assists you're just farming through this. It's actually sick seeing this in play. Look at it. Yeah. And then it's refreshing, right? So you can just keep going through it. You're back in the action straight away. Yep, absolutely. And it's something that we actually noticed really early on when we felt like we were really hitting our goals with the character is you would see the scoreline at the end of the game and Mix would have like 32 assists or something, right, on a really good game. So this is definitely for players who like to see their contribution represented in ways that aren't just top fragging. Yeah, 100%. And so the stim refreshes on the assists, obviously, for Mix. Does that count for smokes as well? No, it's just for kills or just for kills from either player who is stimmed, either the player you chose or Mix. Okay, so yeah, that is the enemy behind line. Okay. Getting used to it. And we're getting 2 different languages. It's tough. Yes, yeah. We're being put to work today. But, again, I just want to see more of the kit. I can't wait to see until like the pros get the agent in hand as well and just push it to the limitations, because I feel like they always find another layer to things that you don't quite see coming. And well, I guess we talked about synergies as well. What have you discovered has been like the strongest synergy? Ooh, a second then. Wait, whose ISO just went out? I actually don't know. Oh, it's Kesnet. Oh, Kesnet got an ace. Okay, yeah. Kesnet got 5. Just like that. Kesnet is trying in show matches. We've been here before. But to come back to that, what's been the best synergy you've discovered? Is it like the dash? Is it the neon? Yeah, so especially on the entry, like all of those for sure. But I actually think one cool part of the character is it's really fun to play Mix with your Sentinel, because you can support them and like anchor the site with them and empower them and play different parts of the site, right? Okay. When you think about a Brimstone who puts down the beacon, you kind of have to all be there for it to happen. But this is much more like it has that range like Sage's heal, right? Where you can just throw it, put it on them from far away, and then you're playing off the stim together. So actually cross-site, you could, as opposed to you can huck it at them. Okay. Yeah. Oh, okay. Well, I'm all aboard. We are going to be going to a quick break. Do not go anywhere. We've already had our first glance at the new game mode, new agent, and I'm sure you want to see more of it.
All right, hopefully you have caught your breath. We are back. Still in the show match. Now, I couldn't tell you who won the first game. Team Kesnet. Kesnet got 5. Kesnet's trying very hard, but we go back through, right? And we were just kind of talking about it then. I want to just keep seeing this kit in play on this game mode because is it playing out in any way that you've seen so far? Is this a little bit sweatier? Are they playing it kind of similar to how you saw it in your testing? Definitely very similar, but I will say the aggression on both of these teams is definitely not like anything I've seen before. I mean, like they're crossing the line just so aggressively and looking for that fight. It's almost as if there's like they're looking for a vengeance for whatever reason. I don't know if there's some hate. What has gone on ahead of this? Yeah, I don't know who's been talking trash, but apparently it works. We are starting to see some of the kit utilized here a bit further. Once it kind of simmers down a second, you can start seeing them try and find some stability. But again, this is just, I guess the encouragement of trading is in place. Speaking of trading, doesn't get it, Kesnet. Who'd have thought it? We just caught it there, the healing. How long does it last on the ground, and what is the total heal? So I think TCK was full HP, and I didn't know the teammate there, but stepped into it after TCK had died. So yeah, so it will heal you to full pretty quickly from within the area, and it will pulse for several seconds. And in that time, it can actually be used by anyone. Oh, so the enemy could potentially heal. So you have to be careful. Okay. You know, you can't just throw it out willy-nilly. You got to be a little more tactical about it. And sometimes you'll walk into it and they'll be like healing you through, like, because it creates a big zone, right? You'll be on the other side of a wall sneakily healing or something like that too. So you got to be careful. That's quite a unique mechanic. Well, I was just, well, for a second. Well, here's the aggression we were talking about. Everyone literally death-balling. Yes. But some of them can get, well, they did get res. I think there's still 3 alive, so again, still not completely out of it. But you're right, the aggression is wild, because I don't think I've seen the mini-map in someone's POV a single time at this point. It's just gone. They are just permanently in front of the line, looking for fights. Well, I was just thinking straight away there about kind of like the lineup denial. How quick is the heal? You said it's instant, and it will heal you to full. Would you be able to deny potentially like molly damage or things like that? No, so you wouldn't be able to like deny, if you're like actively taking damage from a molly, you're not able to heal through that. Okay. While you're taking damage in Valorant, you actually have a buff applied to you that prevents healing and like, you know, that kind of thing. But yes, the heal comes out quite quickly. It can be shot before the healing happens, so if you're able, you know, kind of an interesting situation that would be where you can see the healing bot, but not the player it's healing. Yeah. Okay. Maybe an unusual situation. You know someone's tucked in somewhere. Yes, yes. And you have to be careful with it. You know, you don't want to give away people's location. No, that is true. I guess you do look at the bigger picture of it. Sarsi trying to put in some work here. Maybe try to keep Kesnet under heal, but I don't know how it's going to go. It's a tale as old as time. Yeah. Oh, that leave Megan alone! We've invited a lovely person to come play a show match. It's like, Kesnet's killing them through walls. Yep. I don't think Cat's-Eye will be coming back for another show match. I can't. Having a great time here at this point. It looks incredibly fun. Again, I just want to get my hands on it at this point. Now, if we could get an ult, I'd be very... Yeah, that's what I'm waiting for. Get to work! Again, especially here, because a narrower map. And especially with the way they're playing, you've got to anticipate someone who's following up. Yeah. And it's the first time. Hold on. TCK could have He's the ult. TCK has the ult. Observers, please. It's the other one. I'm being baited. I just want to see the ult. I mean, maybe we can see it in effect against them here. Sad. You can see they actually they use the impulse there to flush her out of the smoke. So it's really about the size of the smoke. Right? Yes. So really it forced the peak there in that engagement, which is pretty interesting. Yeah, I guess you get a little bit of area denial with it too. Like you can actually, I can't wait to see the pros get, even a try. Even if it doesn't get into like meta rotation, even just seeing them figure out new ways to clear it's a controller that kind of ticks a lot of boxes that kind of Astro does in terms of utility and being able to set kills up, but certainly more what you're saying in terms of deathballing and working directly with another agent, potentially be a duelist or a sentinel. I'm actually really intrigued to see how it would work in some of the more traditional maps. Yeah. Obviously here, shining because it's fast-paced, everybody's going forwards. TCK, I believe in you. I think you're going to get us the ult online. I firmly believe.
I might be delusional at this point, but I think I'll live by those delusions. But again, speaking of the ult though, it's the first time we're seeing something that shape as well, right? What was the idea behind changing that around in your mind? So for us, we actually found that because the way Mix plays, like game to game, is you're often like, all right, the barrier drops, I'm smoking, I'm stimming you, I'm gonna like, maybe I have a lineup for a concuss, or like I'm throwing a concuss onto the site. You're often the last person in, or one of the last players going in, because you just have a lot of stuff to do to support your team. And we were just like, with like a traditional shape, we found that you just often would be hitting your teammates. Sure. So having that cone shape lets you line it up so they can kind of run alongside it with you. Oh, that's great. And there's verticality to it. Yes. Right? It's not just a flat sort of cone, it has the vertical element. Yeah, absolutely. Ooh, okay. Maybe my dream will come true of seeing said ult. TCK is giving me nothing. Well, again, yeah, I'm more interested in kind of the coverage, how it kind of marries up versus like a Nightfall or a Rolling Thunder. Is it the same sort of area? Yeah. At the very end of it. Yeah, like, it's kind of hard. I don't know how to do some math about cone to rectilinear shape area coverage. I don't think I have that equation off the top of my head. But I would say that, like, yeah, you would expect it to be, like, pretty similar, right, in terms of, like, the site coverage. If people are playing back on the site, it's definitely going to be wider back there than, of course, close to you. So something to consider when, like, how you cast the ability. I think are we on map point here? I think we are for one team. For one of the two teams, they are winning. TCK's team. Good. Yeah, it's TCK's team on map point. Okay. So obviously the scoreboard at the top here, it's the round score up to 4, right? Yes, exactly. Yeah. First to 4. Kesnet, I don't think likes that. No. I think Kesnet is... Oh, Kesnet's dead. Bastarda just buried him. Down to the last 2. I mean, if you're be able to get any teammates back at this point, Megan joining in, that's going to sting. That closed out. Pretty clean last round there. And actually, I just spotted as well at the top, to come back to the respawn timer, you have the indication the whole time through at the top of how long the respawn's going to take. Is that right, in terms of the waves? Yes, exactly. Just to confirm, we are going map 3. The crowd we are. Yes, why wouldn't we? We need a tech pause in here at some point. Yeah, we need a tech pause. But no, we are going to go all the distance, so we get to see the full potential of everything coming up, so do not go away. Like that. Why you want to act like that? I think I can actually translate what was said there. I got a kill. Yep. I'm loving it. Yep. Look, let's go. That one's for Paper X. Put it in the bank. They're gonna need them later. today. That's You for think sure. you? Oh, are you alluding that they are not coming in? No as spoilers. Okay. No spoilers. Okay. But we are going to go back through into this and kind of get to see once again if we may be treated through this. And actually, I didn't actually catch that for a second. Buy-wise, do you start in like pistols and then scale up? Yeah. Oh, okay, so it's kind of like round by round progression in weapons. Yeah, there's stage loadouts. They're up to 4, so starting with pistols and then SMGs and then like light rifles and then eventually like rifles. Oh yeah, there it is. Yep. Stages. Cool. Okay. Let's see if TCK can keep us on board here. I'm praying for ults. And again, maybe I don't want to say less aggression. I kind of like aggression, and there's the setup on the neon. And my ult is not quite ready. get a fight yet on it. No target. I can't get out. The smokes look probably the coolest of any controller. I'm going to be honest, yeah. Aesthetically speaking, I'm happy. And then actually first time we've seen as well, actually the indication kind of the wall moving up. We saw it previously on the minimap, but see it there, the barrier moving. Yeah.
And they're just ult orbs, essentially, right? Or on the ground to be able to move the wall up, right? Yeah, so when you pick them up, the reward is 1 ult pip, and then you also regen your HP. Oh, you get a regen as well? Yes, exactly. Okay, so it's actually quite an encouraged aspect. Actually, Mix just is insane for this game mode in general. In terms Yeah. of like the snowball and the regen. That would be huge. All right, TCK. 3 more kills, and I'd have been happy, but there we are. First round picked up. All good. So just because we touched on it there, we come to the second round now, and we go to SMGs. Yes. Is it kind of hard locked there, or? There are a number of different weapon options other than SMGs too. I think it's Stinger, Bucky, Sheriff. Okay. I wanna make sure I have that right. But Sassy, love him being back on the stage. I think they're doing an homage to Boaster. Oh, okay. That was actually his dance originally. Okay. I've heard. I didn't catch the dance, so Well. I have to go back. Okay. Love we're taking off headsets. Yeah. Big It's the tech force. fan. It's the There's tech force coming. Yeah, it was inevitable, right? Brilliant. Play without headphones. All right. Back into the action. You can Mix see well. heal here, Free too. go around. You're actually there able it to is, heal through the wall. Yeah. Oh, okay. So there's gonna be some ratty spots. You don't need LOS on the actual util. It's within still within the RE. Yeah, that's correct. So it's actually pretty useful too when people are on the other side of a box and you can't quite reach them. You can kind of throw it right there, and it'll still wrap around. And even just through the wall and be able to heal them. And is it visual for the opponents too? Could you? Yeah, you can see see the that. Everyone can see the zone, but it's really only the impulse object itself that is the shootable part. Right, so you do need LOS to that or dependent or something. Okay. TCK slowed us down, and you died. Well, it looks like maybe Sheriffs are the play for that then. Yeah. A couple of people running down with stingers and Mixwell to clean up. Yeah, there's always a couple maniacs on the team, right? You just buy the stinger and send it. It's just kind of the way it is. I can't believe you've called me out. And again, I think I just spotted there. Now we go to Bulldogs, Guardians, and I think a Spectre. So it is kind of like within the categories of like 1600 to, well, 2.2 basically in the buy and the third one. yeah, it matches like the loadout value in terms of like how the categories are set up. Okay. Operators possible? Not in this one. Yeah. Good. Good. I mean, we're one away from an ult. I mean, the mode's supposed to be for fun, right? Yeah, exactly. Yes, exactly. Someone tell the players that. Someone let them know. Yeah, we got a... Okay, we can get to see. That's a stun. That's a stun. Master Input error. Bastard. Input error on that. And is that just like a right click to change it over? Yeah, you can right-click to toggle it, and it's very snappy. So it doesn't really add any time to casting of the ability. Suga, come on. One more kill, then we get the ult. I just want, I just want to happiness. the ult now. Sassy's farming. Sassy's removing the ability for me to see the ult. Of course. It's About to get another ice hole. Yeah, I was just Yeah. Oh. Oh, punishment, 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 punishment. Bastardo, Knife, 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 knife. Bastardo, Bastardo, No! please! It was so close to finding happiness. It is kind of fun though seeing this back and forth because I keep thinking, okay, round's done, and then the mechanics of like the rest is coming back in, and it just it feels like there's such like a momentum swing at times in this Right, too. yeah, team swinging it back. And the fact that they're so bloodthirsty, sometimes they're just not pushing it together to get that last person. The ego peaks. Yeah. This is the heal. Again, I'm still trying to make note here of obviously the UI elements. Obviously behind lines indicated down here above the ammo. And then you were noting as well the assist marker and obviously top and center. That's the team notification, right? Everybody gets that to say enemy behind lines. Yes, yeah, exactly. So your team, if somebody crosses the line, sees the enemy behind lines. And then if you are someone who crosses the line, then there'll be a debuff marker on the bottom left in the traditional section that exists. Hey, ultimate. Oh. Yes! There we go. I don't think we're going to see too much. Actually, they did. Actually, yeah. They actually did. Yes, you did. That's perfect. Yes. And there's Let's the go. assist banner on the bottom that actually shows like what ability got you that assist too. So it's really, even though you didn't like necessarily see it happen, it's like you kind of get all the glory in the end, and you see that your impact was felt there. Actually love it. And That feels good too as well. hard to It's got a gauge feel with good this feeling. minimap, but the range is, I think, probably similar to the back end of the Rolling Thunder of the Nightfall, right? Yeah, definitely. Okay. This So could in be terms fun of a really site exec, nicely. it's going to provide the same coverage. And it seems fast as well. It's snappy. It's the pace of it that kind of encourages. I mean, speaking of bloodthirsty. Okay. They're back to business. And just clutch do the that, last I one. guess. Yeah, got to do it again.
Adley alone for now. Oh my God, what that was shot. clean. That tracking was nuts. Insane. And when you res, do you res back in your spawn or where you died? Yeah, back in the spawn room. Back in the spawn room, okay. And the spawn room never changes regardless of the attack line, right? Yeah, it's always the spawn room constant. Yeah, stay the same. And again, we were down to one player just a moment ago. We're back at a 3v3. Yep, it's so crazy. Swung it back, it's like exactly. swings and roundabouts that you can do. And you can see this is like pretty indicative of this mode, right, too, where now we're actually, it's kind of slowed down a little bit. Yeah. There's a little more tension to it. It's kind of nice seeing this. Bastardo waiting. Catch. Oh my God, more than waiting. Waiting. Had enough. Waiting to strike. Yeah, had enough of that one. Bastardo putting on a show for us. And I guess buy-wise, we're into those bulkier buys now, right? You should be able to get those 4 weapons behind you as much as you'd want. Yep, we're in the Vandals and Phantoms now. Yes. Odin? No, Odin. Thank you. Playing for fun. Playing for fun. Thank you. Yeah. I thought the mode was for fun. What? Yeah, no, the Odin is fun. For one person. Yeah, for the person using it, yes. Yeah, we call it the morale booster in our playtests. Well, judges? Are we allowed judges in this? Not in this one. Again? Yeah. We've found happiness. Yes. I think I'm going to spend a lot of time here, actually. You know what? I really like I found my new home. Huh. Okay. We're up again, are we? The celebration did not go well there. No. Punish. Guess it. Guess the It's pump like, police nope. just appears. I do want to see another roll in the last couple of rounds. I'd really like it. I'd really like it. Come on, TCK, I believe in you. I was so ready for him to just grab the kill feed as soon as I said it. Go. And you can see there it's shootable, right? Able to clear out that concuss area. This one's tense. It's definitely slowed down a little bit. Yeah, they've realized actually it's simmered down. Yeah, they're all really trying to win now because it's 2-2 into the last game, right? So it's gotten sweatier. Absolutely has. And the sound effect of the AoE there at the stun is actually so cool. In comparison to the healing. Yeah, our audio designer, Ryan, put a lot of effort in actually making that sound like music and actually made some tracks to kind of draw in and make it feel like there's an audio track that's playing as the ability pulses. Oh, that's so cool. And sorry, just the heal goes through the wall, just the stun as well? Yeah. Okay. Starting to get a little bit more of the idea of what you could do with this. Oh, slow fine TCK. Still, was it a 3v? Oh, okay, no. Sarsi's at least bringing the numbers down to a 2v2. It's so hard to keep track of them. Well, yeah, because I'm like trying to keep up to date on the res going back in, and then I guess you need to position for it. If you know they're going to spawn back towards their spawn, so maybe you could move up a little bit. Just kind of like, it's a real map control game. I kind of like this. Oh, dear. Oh, that's nice. The stim to follow up there on the Gecko ultimate. Yeah, and also that stim, you can right-click it to cast it just on yourself. Oh, okay. But, so if you're the last one alive, it's not like you can't cast it. Okay. You just don't get that benefit of killing a player and refreshing it. Oh, that only happens if you do that towards a teammate. Correct, yes. Oh, so, okay, interesting. Much like Sage's heal is often better on the teammate. Yes, Very similar case here where Mix's Harmonize is better on teammate. Don't be greedy. Yeah, don't be greedy. Unless it's just you, then do your thing. Be greedy. Yeah. Treat yourself. Amounts of greed is fine, just not too much. Speaking of the aggression, it feels like there's an actual tempo to what we're seeing now, and it's a firing squad. Mixwell and Kesnet gonna have to sit this one out for a second. So you got 12 HP, but still in the fight. It's on a default skin. 100% clutching this now. And again, the visualization here of the line moving forward. But it's also not too intrusive as well. No, it's not actually obfuscating any of the vision on this. And who do we have coming back? Okay, so 2 new players have, well, one from either side has rejoined, and actually that's a bit of a problem. Look how many are standing. Oh dear, this might be done for soon. I mean, they're respawning still pretty quick. Now it's just got 5 seconds. Yeah. Well, to say that, 2 kills come through. But that was at the 2-minute mark, right? So, like you said, it's at these milestones through the round. Exactly, yeah. And you can see the timer up there, right under the timer. Okay. Okay, bud. Who's got something to do about this? Told you, default skin. Let's go crazy. The crosshair. Crosshair is gorgeous. It is as classic. Riot intended.
I think we're down to 1 for now. Suga, this is a lot of work. Spotted. Oh! And instantly brought down. I mean, I want to play the game mode. I want to play the agent. You've sold me. And I wasn't here to be sold, but it looks so good. I guess in terms of that chaos as well, it's, like you said, it's a controller that can stick with the pack and really actually excel at pushing other players forward and getting them enabled in the fight. Yeah, definitely. And I think a lot of our other controllers, right, they're supportive in very different ways. They feel like they're not necessarily like right there alongside you fighting, and Mix is definitely that character where it's a lot more, you know, buddy to buddy. You know, you're fighting right there with your friend, and more social in that way, right? Because you can kind of see all the action that's happening as you play. Yeah, I really didn't expect it to feel so in the action on that, so kind of instrumental at building your team in and feeling so involved in it as well. It doesn't feel like you're as hands-off as some of the others, like, you know, with like a Sky Heal or even Sage. That feels like you're right there with them. But again, game mode-wise as well, there's a perfect, nuts. Yeah, the perfect demonstration for it. But I love the pacing where it's kind of like, you know, 3 or 4 kills come through, somebody's got to clutch up and stay alive, wait it out, and the longer it goes on, you've got to basically just sit and wait. Yeah. You saw how the teams kind of changed their strategy by that third match, right? Where it was like the ego peeking and going for that last kill without coordinating probably resulted in some swings that they didn't want to happen. So playing as a team is pretty important in this one. If I'm not mistaken, if we are following what I know to be true, we are normally heading towards a little bit of an interview soon with, I believe, down on the stage. So as soon as that's ready, we will be handing over to it. But again, when can people play Mix in the new game mode? Is it as soon as possible? Are we ready to go? Are you guys allowed to tell us? It's next week. Okay. The specific days? Yeah, so we patch on Tuesdays. So you can expect it shortly thereafter. Hell yeah. I can't wait. We're going to hand it over to Belina down on the stage for the Verizon post-match interview. ¡Qué increíble showmatch acabamos de presenciar, Santiago! What an amazing showmatch to showcase our new agent and Megan of Cat's Eye. I want to talk to you because you were amazing. I just want to know, how did it feel playing Valorant on that stage? It felt so incredible. I was definitely nervous, but my teammates really helped me, and it was just so much fun. Definitely, it looked so much fun. Y bueno, hablando un poquito de lo que había sido este showmatch, quería saber cómo lo pasó jugando encima de ese stage. Dijo que fue increíble y que además también jugar conjunto a sus teammates fue aún mejor. Now I want to know, yesterday you played at Lola Chile. Now today you were on that stage playing at Master Santiago. Do you have any messages for the audience? Te amo, Chile! The crowd is loving that, Megan. Thank you very much. You can go ahead and take pictures with the fans because now we're going into the winner, IGL TCK. How are you feeling right now? I just want to know, what are your thoughts on that amazing agent we just saw? The agent is really fun. I hope we could show all the abilities and stuff. It's a very fun agent for you to play with your duo, with your best friend, and yeah, it was really fire. Definitely, it was fire. Y hablando un poquito de lo que fue esa gente, también quería saber cómo lo sintió y cómo lo vio. Dijo que es muy entretenido, que le hubiera gustado tener la oportunidad para poder mostrar todas las habilidades, pero que sí, definitivamente está muy entretenido. Now we know that the crowd is really loud. How did it feel in that stage? We definitely could feel the crowd on the stage. It was really amazing to play in front of you guys. Thank you so much. Obviamente le pregunté sobre cómo jugar con todos ustedes acá en el evento y dice que es increíble, que muchas gracias a todos por estar aquí apoyando y gritando. You're free to go. Thank you for the interview. But now I'm going to the loser side. Suga, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo fue jugar en tu región, en Latam, con toda esta gente apoyándote? Fue un sueño hecho realidad, la verdad que me enfoqué 100% en disfrutar el momento, sentir la vibra de la gente. Esto es algo enorme para Latinoamérica, este público es sensacional y toda la gente que forma parte de este evento sepan que es de lo mejor que viví en mi vida y eso que tuve el lujo de ir a muchos eventos, este es sin duda el mejor que he vivido. Qué increíble, qué emoción. So I was talking to her, I asked her, how
was playing with all this amazing crowd in LATAM, so she said that it was definitely amazing. The people are crazy, the sound is good, and she was focused on just having a good time and just feeling the vibes and the energy from the whole crowd, and it was definitely amazing. Suga, ¿algo rapidito que decirle a la gente? Gracias por estar apoyando. Le quiero mandar un saludo muy grande a mis padres que me apoyaron siempre en este sueño de crear contenido de videojuegos, y a mi hermana que también me está mirando, y obvio a mi novio que estaba por ahí filmando toda mi reacción. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Suga. So she's basically sending hi to all her family that's watching here. But this is all we have for our show match. I hope you guys like Mix, because we're going to our most important match. We're going to discover who's going to be the winner of this Masters Santiago. So wait ahead. We just got to see Mix and Knockout's debut, and now I'm here with Anna, head of Valorant Studios, and Leo, head of Valorant Esports. Thanks so much for joining me. How are we? Oh, I mean, I'm great. How can you not be great? It's amazing here. So good. So good. The atmosphere, it's quite incredible here in Santiago. I've been shaking since I got here, honestly. I can't believe it. Now, Anna, we just revealed Mix to, I would say, quite some fanfare from the crowd here. How are you feeling about it? I'm really excited about Mix. You know, like agents are like the most complicated thing we make. They change the game so much every single time we put a new one into game. We put so much thought into it, and sometimes they really land really well with players, and sometimes they don't. And I'm so excited about this one. I'm a support girly. I am never going to be top in a leaderboard, I can tell you that. And everything I love about Mix is going to allow me to play that way, to support my teammates in really special ways, and not actually have to get as many kills, because it's not me. That team-based utility is like nothing I think we've seen before. It's going to be so amazing. And then he's just got like green flag energy. Yes. Like he's just super positive vibes, and I just like, we need a little bit of that in our space. That's one thing I'm struck by. And sometimes Dark World of Valorant setting, it's like a beacon of hope. That was what I got in that cinematic. Absolutely. I think we need a little bit of all of it, you know? And like represents our player base too. We got some edgelords out there, and then we got some supports, you know? Absolutely. Now, Leo, this might have been one of the most compelling starts to a Valorant season so far. Man. Tell us, any news on the esports fronts? What is ahead for us? Look, we're very excited. I think we're implementing a number of changes this year. New format for kickoff, which landed well, going to, new cities, Santiago, and then London. There's a lot in 26. But we are very excited about the future of Valorant. We've been talking about a number of changes we're going to implement in 27 and beyond. This really feels to us like the beginning of the next chapter of our sport. We've been talking about making the VCT more open, doing more events, going to more places, and having more variety in our sport. And we're going to start announcing things really soon. I'm excited. I don't think there's ever been a better time to be a fan of VCT than right now. Oh yeah, it's been really incredible. And again, hopefully we get to come back to cities like Santiago more, because we're going to do more events and go where fans are. So I've been blown away personally by the reception here and just the crowd involvement. How does it feel for you guys to be here in Chile? It's my first time. I don't know about you guys, but this has been an eye-opener for me. Yeah, I've never been to Chile before. This is incredible. Like, we knew that there was going to be demand for Val to come here, but I think it just like completely blew us away. It really did. Yeah, Look, it really I did. grew up in Brazil. I'm ashamed to say this is also my first time in Chile. We expected the crowd to look. The Latin American crowd is incredible, but I think this is really, we had high expectations, but this, it's blown us away. So again, I hope we get to come back. It's been fantastic to be able to steal you guys for a moment and get some thoughts you. and insights, of course. For now, though, let's learn a little bit more about Nongshim's story from Ivy in our HyperX player moment. 사실 딱히 그렇게 큰 감정을 느끼고 있진 않고요. 지금 솔직히 이 마스터즈보다 어센션이 훨씬 더 부담이 크기 때문에 반년 전만 해도 어센션에서 부담감을 많이 느끼고 있었습니다. 하지만 이제는 마스터즈 산티아고에서 매 순간을 즐기고 있습니다. So they're still going to go, and Downbeat is going to be once again handled. It's Francis to get a kill back here. Jaw, there is an army against you, man. They've just taken a fight. It's deathmatch, and it might be the death of G2. Trent doesn't have the bullets to do it. Leaf has to save the day. He certainly is now. Decay's time to come in. He wants the spike, and he won't get it. Desperation in the end. 페이퍼렉스, 아직 우리 한 번도 안 만나봤지? 누가 더 위인지 알려줄게. 페이퍼렉스는 아주 공격적인 팀이라고 생각합니다. 그런데 이제 저희랑 페이퍼렉스가 이제 만나게 된다면 아무래도 퍼시픽에서 가장 공격성이 높은 두 팀이기 때문에 아주 피 튀기는 싸움이 되지 않을까 생각합니다. 페이퍼렉스,
너네 아직 우리 같은 팀 안 만나봤지? 한 맞아봐. What a story we have here today. It's an all-Pacific final. The crowning achievement for a region who so often led the way in playing aggressively and embracing the double duelist playstyle. It's also the much anticipated first encounter ever between these two teams. Isn't it wild that Nongshim have come up through the ranks so quickly and yet they've never played PRX in an official? It's so cool to see this happen. We haven't had a regional final since before the partnership era. Even then, for a true regional final, you have to look all the way back to 2021. And for it to be now this PaperX team, emblematic of the region, versus a brand new squad playing for the first time, it's just so perfect. It's the legacy of PaperX that they have proved across the years against the Nongshim that had literally to build every single step of the way their own path onto this stage. It's so astonishing as well. Their last loss was in their Ascension journey at some point, like right at the beginning of that Ascension tournament. Since then, they've been absolutely flawless. But let's dive a little bit deeper into Nongshim's journey. They've made it to the finals in their first ever global event, becoming the first team to go from Premier through Ascension to a global final. This timeline is astonishing. Yeah, I think it's absolutely crazy. You see the three players, Francis, Ivy, and Dami, playing in Premier together, qualifying to that Challengers, and doing it very well in 2024. Almost, you know, in that, not even making it to Ascend in that overtime against Boom. But yeah, ever since then, even though they fell at the end of last year, they were able to bounce back, and what a way to do so. That's what makes the story so impressive to me, that they were relegated. They had to start over again, re-earn their spot for 2026 in the league. But they kept that core, those players that have been with this squad since the beginning, and the success they found this year has been meteoric. They found a perfect style in the meta. They have not lost a match at this level. It has been a truly unprecedented run from Nongshim. I think it's also like, because of them being the first seed, I feel like the people have not connected so much with them as we've seen in other events, because we've seen teams having to do a very, very long and difficult run to make it into this final. But at the end of the day, for the longest time, we thought that G2 was going to be the team being like, oh my god, we can make it. And they got very, very close. But now the chances for Nongshim to become the first team to complete the full journey, to prove that the ecosystem opens the door for anybody that is playing at home, you can end up on that stage. Yeah, truly a proof of concept for that path to this global stage. But if Nongshim are the upstarts, then PRX are VCT royalty. They've been one of the most consistent performers on the global stage for years, have been in multiple finals, and have already notched a win in Masters Toronto onto their belts. So now, does another win here in Santiago establish them as the best team in VCT history? I don't think it puts them there yet, but it puts them on the path. If they could go back-to-back, have a dominant year, I think that puts them on the course. But winning a second trophy, doing a thing that so few other teams have been able to achieve, would put them exactly on that path. And what's impressive about PaperX is that it's been through so many different metas. It's been through so many different years, but it's been this same core. Before Nongshim even played their first official for practically any of these rookie players, it was these guys already making international finals, slowly making upgrades to stay consistent as one of VCT's absolute peak teams. But Mimi, how can you say all of those things and not say that they are the best team? You say they keep in this core, working so hard. The game has changed. We've seen it in so many different states, so many different metas, but a team that has been consistent in delivering has been PaperX. Yes, okay, the trophy we see like what, 4 grand finals at this point? Yes. Maybe on the way today to get their second trophy, but I think that PaperX has fans all over the world because it is very difficult not to cheer for them. Specifically when we're talking about the spectacle of going into the matches on stage and just making the viewers happy, PaperX has to be your favorite team. And it's good to see that, you know, they're a mainstay. It doesn't matter where you go in the world, you will find PaperX fans. Not just true competitors, true entertainers are PaperX. Now it's time for our MasterCard fan poll. We're going to keep this one nice and simple for you folks at home. The question is, who will win today's grand final? Will it be Nongshim, Red Force, or PaperX? And as always, use those hashtags VCT and Valorant Masters to get involved in the discussion. Not just your answer, you can of course submit that with the QR code down there. I'd love to hear any of your extended thoughts on it. And I want to dive a little bit deeper into the stylistic analysis here between these two teams, because I feel like we're looking at, right now,
They're two of the best double duelist teams in the world. 100%. The question is, which one is the better? What makes PRX's style so distinctly different from Nongshim's, for example? They've said themselves they feel like they're the emblematic double duelist team. And I think that's true in the variety they play. Look at the agents they've played throughout this tournament. And there is a big difference in the amount of maps they've played. But look at a PaperX who's picking Phoenix, picking Raze. It is switching up even, you know, considering that Jet at times too, in a world where Nongshim is basically always playing Neon Yoru. They perfected that. They're the best in the world at that. It's a PaperX that will change their comps, change their style, switch into any different idea and be able to execute on it perfectly. That's what makes them PaperX. And we have seen a PaperX that has needed to bounce back in this event, following into the lower bracket, playing against AG and then against G2, getting that revenge against NRG. But as you're saying, it is different. For the side of Nongshim, they rely a lot on the flexible, actually the explosiveness that Neon has, that fast pace. Dambi, of course, being the highlight of that. For PaperX, it's literally playing with your opponents, thinking about all the tools that you can have, and the speed sometimes doesn't have to do with the agents they're playing at all. For sure. This is an inter-regional final, and Pacific is the best region at double duelists. There's no doubt about that. But it's also a head-to-head against sub-regions. Korea, who has always been known as the strategic region, the team who is putting together some of the most creative executes since the beginning of time. I think you still see a lot of that in Nongshim's play, in the way that Would it be RB, maybe? Yes, maybe absolutely. That's the reason. Who's been there since the beginning of Korean Valorant, against a team that personifies Southeast Asia, the hyper-aggression, the willingness to change, to do it on the fly. PaperX succeeds in the brawl. That's where they want to be. Nongshim succeeds when they are playing their style, when they're running the executes, running the rounds that they've thought of ahead of time. They are the kings of chaos if you think about PaperX and their entire history. Now, in every single one of the encounters that we've seen from Nongshim, we think, oh my god, is this going to be the team that is going to stop them? Are they going to slow them down? Who is going to be dealing with Dambi? Then other issues are starting to appear with Francis going back online on that stage. But according to PaperX, they feel like they are the ones that can, out-chaos them. They're the only ones that really know, because they've scrimmed them. We know that much, but no one else has seen them go head-to-head. Let's dial in on Zambi a little bit here, because Dambi's the one that's basically been on everyone's lips as we've talked about what has gotten Nongshim Red Force here. How can we rank this performance so far from Dambi against some of the best performances at Globals in general? And do the numbers even do this guy justice? Because it feels like so much of what he brings is stylistic and intangible. Yeah. It should be like 400 ACS every single one of the maps. You have heard it from every single player that has been asked the question, what is it like going up against Dambi? Does he meet the expectations? And to me, it's not about the agent being oppressive, but the player being singular in the way that he plays it. Yes, we see a lot of the judges. We've seen the Odin. We've seen him succeed in every single one of these very, very electric executes. But I will say, credit also to everything else that goes behind him. I think that the utility that goes for Dambi to have this kind of place, to have this kind of freedom, props to him for the stunts and the amazing way that he moves around the map, but also to the rest of the team that enables him to do though. I don't think there's been a player at a global Valorant event that has made teams adapt to his style in the way that Dambi has. Yeah. There have been excellent performances. You think of the all-timers, your Tenzes at Reykjavik at the very beginning when one man could take over a server. This is different. This is Dambi, not just being incredible in the fragging department, but creating the most space of anyone in this tournament, playing one of the most mechanically difficult agents the game has seen. This is a Neon that is nerfed, that has one slide, that has slower recharges. Yes, she's still strong, but what Dambi does on this agent, no one else does at his level. I think it is unprecedented what he's doing this tournament and the way that he is forcing teams to respect him. And I don't think we've ever seen a player impose their play style upon their opponents to the same degree as Dambi has. On the other side of things, the deeper that PRX have actually gotten into this tournament, the more Forsaken has, and maybe has had to, rise to the occasion. Can he become our first two-time MVP? And also, if he wins today, right, and maybe if he gets MVP, let's say that, would he then surpass Chronicle as the undisputed Valorant GOAT? You're looking at me for that answer? Yeah, you want me to go against yeah. I will say, it is difficult because Chronicle individually is brilliant, but part of my heart really feels like he is. Because we're speaking about Dambi doing these things in Neon, but the things that Forsaken has done in almost every single agent in the game, we have not seen anyone get even close.
he was MVP already once, and I think this tournament and the way that Paper X has been bouncing back, he has been a very, very, if not the most important part of it. Let's now head over to Jen Lee, who had a chance to catch up both with Dambi and Forsaken before the game. Out here with our grand finalists, Forsaken of Paper X and Dambi of Nongshim Red Force. Now, Forsaken, you said we can kill Dambi, and we're the only ones that can kill Dambi. Why? What makes you say that? I think because we met him on scrim, but not in match. But I learned his movement already, so I can read you. 스크림에서 많이 만나봤기 때문에 담비 선수의 무빙 다 파악이 됐다. 그래서 담비 잡을 거다 이렇게 얘기를 해주거든요. 동의하시나요? Do you agree, 담비? No. 스크림은 스크림일 뿐이고 핑 40이랑 1은 정말 다르다. Scrim is just scrim. Ping 40 and ping 1 is very different. Well, guys, we have the Paper X and the K Paper X. Anything you would like to say to each other before the match? I will slide you before you slide us. 먼저 슬라이딩 쳐가지고 잡겠다고 합니다. 담비 선수도 한마디 하시죠. Give me trophy. Give me MVP. Oh, okay. Well, give me trophy and give me MVP bracelet. Give me also. Okay, 본인도 달라고 하십니다. Okay, you know what? No matter what happens, hope you guys have fun on stage and go make Pacific proud. No surprise, they both got their eyes on an MVP trophy, and they're definitely in the running. Now, earlier we asked you who you think will win the grand final, and the results are in. And the PRX fans out there on X are turning up in full force. 78% of you believe, as usual, that it will be PRX to get yet another global win. It makes sense. I think that you can look at them as a favorite going into this one. The fans certainly think so. It was such a long road to even get that first trophy. But now I think it's clear that this is a team that going into any finals should really be expected to get another. Now remember that Nongshim have the double ban advantage as a reward for reaching the final undefeated via the upper bracket. So let's find out just how much of an edge that's going to give them in the map veto. Okay, so this is the map selection for Master Santiago Grand Finals. First of all, congratulations on reaching this point of the tournament. Because Nongshim is coming from the upper brackets, they have the advantage of banning 2 maps and choosing to be Team A or Team B. Team A. So Nongshim is Team A and Paper X is Team B. So first ban for Nongshim? Pearl. Pearl ban. Ban Pearl. Pearl, the second ban for Nongshim? Bridge ban. Bind? Bridge. Oh, Bridge. Okay. The first map pick for Nongshim? Pick Corrode. Corrode. Side on Corrode for Paper X. Defense. Defense. Map pick for Paper X. Abyss, Bind, Haven split. Which one? We pick split. Split? Okay. Side on split for Nongshim. Defense. Defense. Map pick for Nongshim. Pick Abyss. Abyss. Side on Abyss for Paper X. Attack. Attack. Map pick for Paper X, you have Bind or Haven. Haven. Haven, okay, so side on Haven for Nongshim. Attack. Attack. And side on Bind for Paper X. Defense. Defense. Okay, that's it. Good luck, have fun. Despite Nongshim having the double ban advantage, I think we end up with a pretty reasonably even pool in this best out of 5. Nongshim have a permaban in Pearl, which, well, Paper X are solid at. It's not the top of their map pool. Yeah. That's gone, but that also means now the permaban of Abyss gets exposed as map 3 for Paper X. But the thing about Paper X, I think they're always scary to have prep, even on a map they haven't played. This should be a very competitive final. Well, it is a story that could only be written here. A team that climbed from Premier to the grandest stage in the game, up against the VCT's most mercurial legends. It's the Pacific Final. It's the Grand Final. And it starts right now.
With the chance to win back-to-back Masters titles, how much do you think experience will help you tomorrow? We'll be facing Longshan for the very first time this year. They cross paths during kickoff. My question's going to go to Forsaken. Many people consider you guys to be two of the best players in the world. Do you have any words for Dambi? 길다면 길고 짧다면 짧을 수 있겠지만 2년 전까지만 해도 저희는 아마추어에서 경쟁을 하고 있던 선수였고 결승전 진출은 저에게 과정과 경험이 담긴 무대라고 생각합니다. My hot take is Nongshim is the Demby show. Just like Toronto, history will repeat itself. 일단 꿈꾸는 것 같고 우승을 한다면은 더 좋을 것 같습니다. 여기까지 왔는데 멈출 수는 없을 것 같아요. 페이퍼렉스 우리 처음 만나지? 매운맛 많이 보여줄게. This is the scariest version of Paper X that you're gonna face. ¡Hola Chile! Hemos llegado al final de esta linda historia que hemos construido entre todos nosotros. Hoy es el final del BCT Master Santiago y es una fiesta. Démosle la bienvenida a Pu. Hola Santiago, ¿qué pasa, cabros? Es momento. Nongshim Red Force. Santiago, thank you guys so much. Make some noise, Chile! I'm so happy to be here. Let's bring all the energy. Vamos, Chile, let's get loud. Let's make some noise. Let's make some noise. Santiago, la estamos pasando bien. ¡Vamos! Es momento de darle la bienvenida a un equipo que quiere repetir internacional, que quiere Masters. Ellos son प्राइस पूल कितना डॉलर है पता नहीं, प्राइस पूल का नहीं पता भाई। देखूं क्या देखता हूँ।
$10 lakh है. Gracias, Santiago. Make some noise. This grand final started. Have some fun today. Goodbye. Thank you. $10 lakh. $10 lakh. Once called princes, then our kings of the Pacific region look to cement their dynasty here in Santiago. But facing them, the young upstarts, the new princes, Nongshim Red Force, who have paved the royal road from Premier to this very stage to stake their claim to the throne. When Pacific was a minor region, it was 8 international tournaments that RB attended. Failed to bring home a trophy, failed to prove what he could do. Had to watch another team, Genji, be the first. Now it's Pacific on top, the first regional finals of the partnership era, and he's back after this time down in China, after his time off this stage with a team of rookies trying to bring the next generation of Korea to the team that has defined the Pacific, has been one of the most consistent teams in Valorant. $1 crore $1 crore रुपए का tournament. Flawless year for the side of Nongshim. Could end up here with a very tragic loss. On the other side, the possibility they are one best of 5 away from making history and becoming the first premier team to lift a global trophy here in Santiago. Against them, what some might think is a familiar opponent because of both teams being from Pacific. But as we're saying, this is the first time these two teams are going up against each other in an official game, and the stakes could not be higher. And while Nongshim Red Force have stuck to their guns and played the same style while the best of Americas, the EMEA, China have been thrown in front of them. They are committed to their style. It's a love letter to the game and the way they play it. PRX, though, have been happy and willing to reinvent themselves every step of the way to stay ahead of the competition. And they love nothing more than to knock these upstarts down. This is PaperX's meta. This is the moment where double किसी ने सोचा नहीं होगा भाई, मतलब गेम से भी पैसे आ सकते. It seems it's the moment that they're primed to आ lift सकते हैं another भाई. trophy. पहले किसी ने नहीं सोचा था कि गेम से भी पैसे आ standing in सकते. opposition, गेम खेल a team from their own region who वो is भी taking इतना that भाई, in इतना stride, who ज़्यादा. has come from nowhere to dominate. They have not lost this year. But PaperX, they have been on the long journey. They have lost matches. They've done it the hard way. And they know what it takes to win in a BO5, to show up to a match of these stakes and perform. भाई इंडिया में लोग ऐसे हैं नहीं ना कि जो ऐसा सोच सकें भाई ऐसे लोगों का जैसा माइंडसेट है वैसा इंडिया में किसी का है नहीं जो गेमर है जितने. उनका ये है कि मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन हायर कर ले, एक सैलरी दे दे और बस काम चलता रहे उनका. जीतने का ऐसे उनके कोई सोचा ही नहीं कभी आगे जाने का. वो सोचते हैं सेटल हो जाएं बस, पैसा आ जाए बस. ये सोचता हूँ ये लोग जीतने के लिए खेलते हैं भाई. हमारे यहाँ सपोर्ट करते तो कभी मजा ही आ जाता है. अभी आएगा भाई, को तो सही 2-3 साल लग जाओ. 2-3 साल में देखो तुम आ जाएगा काफी. पीसी गेमिंग जो है अभी ऑडियंस समझ रही है धीमे धीमे क्या है. मोबाइल में ज़्यादा घुसी है. We saw G2 struggling a lot against Nongshim, even though changing things around to go specifically against that Neon and the explosiveness. But on the other side, we saw a PaperX that was flawless against NRG yesterday, especially on the defense side. Well, it's the grand final and the Pacific region are already celebrating. So let's send it over to our benevolent overlords, Achilles and Paperthin. उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. Welcome, ladies and gentlemen, to another day of VCT Pacific. I'm Achilles. That's Paperthin. अरे हमारे भी करेगी भाई, रुको दो. Baby, an all-Pacific final here at Masters Santiago. हमारी टीम थोड़ी जाति धर्म से बाहर निकले तभी तो कुछ होगा. हमारी गवर्नमेंट जो है वो जाति धर्म में ज़्यादा फंसी हुई है. An insane matchup. Two of the most explosive teams. मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, only PRX something. This is the highest entropy team को भी नहीं, only PRX in something. Something मेरे को अच्छा लगता है. It should be explosive. And Pacific have been masters of the VCT since Shanghai. Now it's down to the princes and their brothers who are looking to claim their titles. मेरे को प्लेयर पसंद है, टीम पसंद नहीं है.
Nongshim first on the attack at the ready. Odd stack working their way. It's just Forsaken, tucked in behind this Viper wall, but he gets flushed out. Francis reads it, finds a headshot. NS तगड़ी team है भाई. First blood found. That's already good prep being shown here by Nongshim. That's a spot that PaperX likes to tuck into. Envy. Clean one tap. Francis now on the floor, back into a 4v4. Goes pretty much across the board here for PaperX. A little bit more oomph behind this. See if they can find their target. So is Ivy looking for a timing. He gets caught off guard. Not ready for something. Just jump, plant his feet, and find the headshot. Suddenly, Nongshim reeling a bit here in the pistol. The barrel for the slide across. Envy gonna get caught on the Danby. Finds that kill. The shutdown RB. Trying to clutch it out, but it's gonna be Envy to stand a bit taller. 3K over 3K. PaperX find the opening pistol. Phenomenal work here by Envy. His first time in a grand finals. His first time on the global stage. Coming over to PaperX and making the most of it to start. Knife out, no problem. Little bit of a jump, a land. And a clean shot from something. RB looking to join Stacks and Buzz as trophy lifters from the original Vision Striker squad. मैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लाया. हाँ जरूर भाई जरूर. 6 players on this stage that have never seen a grand final. Envy looking to go on that golden road here alongside PaperX joining this year and already finding themselves on one of the biggest stages that we have to offer. As here's the judge around the corner, something giving Demi a little bit of his own medicine, but they return fire with these bandits in hand. It's looking damn clean. This is something that a lot of teams have been leaning into recently. Forsaken finds one on the back. It's a kill on X Ross. Ivy, however, this time a lot cleaner with the Sheriff. It's Francis ये Viper बढ़िया मारता है भाई Seraph. Behind the bricks, and I don't think it's going to matter too much because Forsaken has his knife out. Claims the kill, and Nongshim, barring Ching. NS का जो Viper है ना वो तगड़ा मारता है Seraph. Tying things up 1-1. G2 को मारा था देखा था मैंने. Paranoia to connect on the no one, and RB to shut him down. Then recovered Judge doing wonders, and just like that, it is already neck and neck. Well, you can already see some of the ideas here from PaperX. Throw a Judge into the mix, try to slow Danby down, but the Bandits, something that PaperX has been working into their rotation, especially on their ecos. Wouldn't be surprised to see a few of them in the mix in the following round here. So potent at close range. That one-tap headshot, absolutely devastating on a map like Corrode in particular. Can really set you up for success. Nongshim looking for a little more purchase in towards mid. PaperX also trying to scale. A couple, one bandit, 3 sheriffs. It's an all-Pacific final. Let's see if we can really bring Pacific to the stage here in Santiago. Get a trade back on some of these thrifties. X-Ross, however, some different ideas. Able to find 2 before getting taken down. Danby just going to be collecting that weapon. Francis looking for an angle with that outlaw. Slow walk down. Jing hearing the swap of the weapon. Swings the corner, and Ivy will have him dead. Something in the divide, trying to see if they can get a bit more damage in. Not pull off the clutch itself. Gonna be tough with that outlaw there for Francis. He's gonna have a great angle. No matter which direction they end up coming from. First hurdle going to be Danby. Sat here center sight. Bottom of hut. With Devi on the swing. Takes his head clean off. And suddenly, you have to start wondering, is it possible? Can they do it? Devi, he says yes. Finds the one. Drop down. Has the read, and he has the shot! Welcome to Pacific, ladies and gentlemen! If you haven't been watching, this is what we've had all year long. MasterCard Thrifty, PaperX back in the lead. It's Devi again with the Sheriffs. The guy has been outrageous with them. And he is perfect. ये लोग रीड अच्छा करते हैं. With all of his timings, headshot. No problem at all here. Anticipating the peak from Francis. My word. And we knew coming into this it was going to be an exciting match. Oh yeah. And this is already delivering well beyond what we might have anticipated. Didn't really know what to expect given that they've never played against each other, but something now, that Judge again in hand, able to find the shutdown on the Danby.
It's Nongshim going to be left scratching their heads. Yeah, Forsaken got a dink in there onto Francis as well, so he's actually going to try to hold the line a little bit, see if he can challenge Forsaken. Jump peek though, top of the toxic screen, but showing that Yoru is going to keep a couple extra players over on the B for Paper Rex. B मार के ही चला गया. Potentially does have some of that Vice util though to rely on to help something, to give him a little bit of an early warning system. Oh, and it's just getting worse. Back down to 22. Trying to continue to keep that interest on this side of the map. Something for now. Alone on A. Being cycled forward in the mid might give Paper X a bit of an idea of what the game plan is here, as Francis is going to get caught. Anticipating that second layer, but also Nongshim very slow to try to scale in towards his A site. And on the approach that they're taking, something's going to happen. He's got that judge in hand. Yeah, he just needs to play it safe. He's got, again, that Vice util as well. Kind of give him a little bit of help as soon as the wall is going to be popped here. Elon Musk भी वेलो देखता है. हाँ देखा मैंने, देखा था. There, judge at the ready. Seems like this little back and forth will be coming to an end here. Something greets them at the door. RB to fall, and it's going to be a flawless for Paper X to move up 3-1. अरे अच्छा गेम है भाई Valorant. इंडिया में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है ना, इस वजह से लोग आगे नहीं आ पा रहे. पता बाहर के जो रेडिएंट है ना, तेरा कैम राइट साइड ले ले, मिनी मैप नहीं दिख रहा. They're at the point of attack of Dambi every time with the judge. A couple rounds ago, it was in a link, and here they're just pushing out into B main. So it's 0-4 for that stellar superstar Neon, and that's going to force the timeout early from Nongshim. Try to get this situated, try to get some recuperation, probably talk about, you know, how and when they can start accelerating, how they can get Dambi into places where he can be effective, where you're not going to fall for those early traps here in this Coinbase win condition timeout. I mean, we zoom in on Dambi at the moment, has not been able to draw a drop of blood, 0-4-1. It's been a rough go of it, and in the arrival interview with Jen, Forsaken saying, yeah, we know how to shut you down. We're going to be able to shoot you a bit fast, and you're going to be able to slide at us, and so far that has rung true. I mean, I figured if any team, if NRG couldn't do it, I figured the other one that could would be Paper Rex. Sure. They're the ones who understand chaos. They thrive in it. It has been their home for as long as they've been a team. They play the game so different from anybody else. And Nongshim, a team that kind of embraced some of that mentality. Talked about in the past how Paper X is a team that they respect, that they emulate a little bit. And now Paper X is like, okay, well, you're the students, we're still the masters. You have to prove that you've earned this title. Out of the timeout, a hero rifle in the hands of Ivy. Some more bandits to share for them. हमारे में जो कुछ रेडिएंट है इंडिया में वो विन ट्रेडिंग करके पहुंचे हैं. और बाहर के जो रेडिएंट है भाई वो रेडिएंट ही है. Holds him back for a brief little moment as he's trying to get the slide going. Eventually will be able to find it. How he keeps working these miracles, I do not know. That is Jing dead. कोई पहुंच ही नहीं पाता. Continue to utilize that weapon. एक दूसरे को वो करते हैं ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है. Something at the same time, trying to hold the line here on this A site, but has to refract back over to safety. Reads the position of Ivy well, just trying to see if he can get a straight tap in, but won't be able to make it happen. The poison orb set up. RB now just spraying and praying. Seal Garden just to take away what few weapons they do have in hand. Ivy tucks back away from that one. RB trying to TP out. Is now the convergent pass as well going to be layered in. Something on the entry up and over, but loses out on multiple players. And the timeout call is absolutely gorgeous. It's a flawless in reply for Nongshim. And they get some big ults away from Paper Rex in that round. And again, it's where Dambi begins his movement, where he's beginning to accelerate. It's before the door this time. Somebody's going to have to teach me how he makes the judge do what it does. The way he's able to get those bullet spreads to land is unparalleled. And it's just little things that they need to do. Once you get that space, that's where Nongshim is so dangerous. That's what makes them so formidable. Is that they're going to get there, and they have great post plants behind it. They have a bunch of ults to work with. Opt there for something. It's going to be holding down A. वो गेम ही स्ट्रेटजी का है भाई, टाइम आउट वर्क तो करेगा ही. Try this A link angle again. This time, Invi's been shifted over. The dimensional drift is going to maybe give away his position. Actually, they're checking main. They know that Paper X likes to be aggressive there. They get the spot. Oh, exit, and something is so damn ready for it. Immediately shuts him down with that shorty.
Looking for the peek, but Jing already claiming the kill onto X-Ross. Looking for the flick. Ivy able to find something, but Jing is there for the trade back. Suddenly their advantage. RB halted in his tracks, needing to try to find some value, but Forsaken just swings out, takes the fight and takes his life. Dambi found now on that flank, and Paper Rex not allowing for Nongshim to start building up momentum. Yeah, and I think here just तेरे पास जो भी है ना फोन वोन जो भी है सब कुछ चला के रख दो इसमें मेरी स्ट्रीम operator at hand. A lot of times in the past on this map, it's been them constantly Phone, laptop, pushing one side or the other. You know, using that operator to try to force their opponents into Devi's side of the map, where that Vice util will be. But this time they're a little bit further back. That means the dimensional drift doesn't really get the info that you would normally find in that situation. Therefore, something Yoru, expert of his own, able to shut down Francis before he's even able to get anything going for Nongshim. Just another aggressive mid push, and Paper X has been happy to absorb this space. They don't want to fight for it too often here. Jing looking for that catch. Jing just not quite peeking out far enough for Francis to be able to collect it. Shot ringing out. Dambi just going to be backpedaling away from A. Looks like this is going to be a massive shove through the connector into B. और फिर देखना VCT पे मतलब मेरी वॉचिंग पे कितना फर्क पड़ता है तेरी क्योंकि लोग वॉचिंग देख के आते हैं ना इसलिए कह रहा हूँ भले कोई कितना भी अच्छा कर रहा हो भाई एक की दो की वॉचिंग आती तो नहीं आते लोग He's playing with an operator, and now the pit is placed. This should be unassailable for Paper Rex. Slow creep forward. X-Ross dead. The Nightfall available and immediately invested in B. Feels like they have a solid chance to be able to take this one. As there's a spot out in Ivy. Caught! The pit now gone. RB dead, and Dambi recovering from the decay. Has 3 players to try to clear, but Envy cuts him down. Plenty of time remaining on the defuse, and Paper Rex up 5-2. They just catch Nongshim overstepping a little bit and getting Envy that Nightfall. अगर देखा जाए तो जो राइट साइड मैंने शिफ्ट करा है अपना बैक में कैम अच्छा है so much of that information ऐसे कर सकता हूँ trying to hold those angles on site. That one right there on the X-Ross went for the peak, paid the price, and then everybody kind of scrambles. The protocols there feel like they fell apart a little bit for Nongshim in that post plant, and you can't give Paper X those opportunities. Because now you're on a weak bye. You have one hero rifle in the hands of Ivy. Something again, holding this line. Oh my God! It's a shutdown onto the critical player. It's Dambi dead again. Ivy working his way through mid is able to find Envy here over the previous round, going to be eliminated. Something he's still here, still standing. Left से थोड़ी ठीक तो लग रहा है. Manages to back away. They can't chase in deep enough, fast enough because of the hinder. Finds himself plenty of space for that saturate. Ivy needs to come up with a kill, but he cannot. Forsaken just has him outdone once again, and X-Ross cannot get the sheriff drawn fast enough. 2 players in the post plant, a Stinger and a Bucky. Francis is looking for some damage. He's the one eating it. And RB now would have to clutch it up with a Bucky. Finds the first 2. Grabs the Phantom, TP's back across the opposite side. And as he swings, it's to his demise. Devi out wide, catches him by surprise, and that is going to be Paper X now, already up 6-2. They are extremely well prepared. They don't give this team any opportunities. Again, it's another perfect position to counter Dambi before he can even really get rolling. This is something that teams have occasionally found success with so far this year against Nongshim, but not consistently. So far, Paper X has done an excellent job of it. They're not giving those opportunities for kind of the positional mistakes that Dambi can capitalize on. They're hitting good shots, that one in particular from something who has been stellar with the operator here in the playoffs. They're going to go push it. Trying to bait with that Prowler, allowing it to come into him, but that's going to be something. Just scooping up the quick kill. Francis now dead. Right, left. Every twist and turn, Nongshim are just struggling to find any kind of early advantage. जो stream देखता है उसके लिए left. It's been different looks every round. I mean, Paper X has been showing them a very deep playbook, and now with that wall popped, they're going to have a couple players here in place to
Thorns to open this up. Looking for that timing. Divide swinging forward, will be overwhelmed. Shot connecting, but not getting the elimination. Now the overdrive in play, and Dambi's able to find Envy. Dambi neon main है क्या भाई? Neon ही खेलता है. Hands of Nongshim. Looking like a full, actually 3-player wrap, at least the 2. Go towards A main, RB. About to find out though that Forsaken has scaled a lot further forward than he might have anticipated, so suddenly we're back to parity. इसको मैंने neon खेलते ही देखा है बस. If he gets in deep enough. Given where the players are playing, he could just, walk forward, but does still have that spike and belt, but the TP up on top of Hot. Dambi is there, in position, finds the punish. Looking for the slide down, a bite, layered in. Ivy just trying to delay as much as humanly possible the slide, and Dambi just going to be a hair off, and now Forsaken into a 1v1, or rather something into a 1v1. Forsaken does fall, but the time is just not going to be there, so he has to make his exit, backing away. Ivy looking for the kill, won't be able to find it. He will go down to this spike, but Nongshim do barely manage to bring back the round. Well, it's something, that's for sure, but this time they're able to get just enough space. Paper Rex playing a little bit more towards B-Link, even with the Razor Vines there. Get that ult going for Dambi. That shot just not connecting onto RB. Good read there as well onto Jing's tendencies with the TPs. It's okay, Nongshim keeping it close. Doing their damnedest, still down by 3, a chance of trying to rescue this, run this back into a 6-6 half, but we need to get that momentum built up. Consecutive rounds have eluded them thus far. Another very different look here for Paper Rex. Leading the op in towards mid. Not seeing anything, so. He's about to see Ivy. Looking for the flick down, and Ivy, lucky to be alive. He's anticipating this repeat, and he wins it out. A critical find for him, but Divide at the same time, able to find Dambi back over on the B side. Overpeak क्यों कर रहा है? Francis forward, tucked into the coming Prowler. Chase does get cleared. And RB dead as he tries to TP over to get the spike planted, but the return fire looking decent, but Envy, it's looking excellent for a brief little moment. Once again, Ivy here in that 1v1, but no real clue where the hell Jing could be. He's got 56 seconds to play around with though. So it looks like he's going to make his exit, anticipating that Jing would have gotten over towards this B site. It's a really nice read here from Ivy. Great understanding of negative info. He's an operator that he's just going to bypass, of course. 11-6 right now. Ivy, such a stellar clutch player for Nongshim. Coming into their opening match, he was outrageously good. He's got another chance to do some real damage. Jing, no ult available. He's going to have to hoof it on foot. Does have the paranoia. So if we can find Ivy out, could find an opportunity to use that ability to shut this one down. Ivy going to tuck in towards elbow though. Try to play off the tap, so the spikes it looks like. Still does have that bite. This would give away his position once he lobs it through. Smoke now in. Jing able to hold this one up to half. He's going to try to just stick it. And Ivy doesn't manage to find the kill. Nice. Jing just too fast on the draw. Shuts him down and secures the lead at the half. And Jing also positions himself on the opposite side of the spike where you'd probably expect the player to be defusing. And I think that catches Ivy off guard just a little bit. Envy, huge 2K there. Lock this down, and oh my, you're getting the second timeout already coming in for Nongshim. They feel like they've got to get a couple more rounds here on this attack side. They know they need the next 2. Struggling on the attack. Dambi बहुत aggressive खेलते हैं. Nongshim are used to at all. Zoom back in, our second Coinbase win condition, and Dambi, yes, able to pick up the pace a bit, able to find 5 kills compared to the 0 that we saw in that first timeout call. But he is not dominating, he is not running all over Paper Rex, which is what he's been able to do against every single team that they faced on their run to this moment. Paper Rex just isn't giving him many opportunities. Like, Dambi is often looking to find a moment where he can punish either your default position where he knows where you're going to be so he can relay bolt or just run past you, whatever it may be, or he's looking for mistakes where you're going to throw a piece of utility and reveal your position. But Paper Rex is playing it really close to the vest, and when they're not, they've got layers behind what they're doing to make sure that they've got that kill onto Dambi, that they can take him out of the equation.
and then deal with the rest of the team from there. Feeling like if he's not there, force the impetus onto Francis, onto Ivy, onto Xros, onto RB to step up and beat them in 1v1s, and I guarantee Paper X likes those odds. Gonna fall back here. Something. Once again, that judge in hand, looking for the early shutdown. Second will be eating some damage, but do they read this position? No, they don't quite do. Nice. 2 kills still gonna be found for something. Or Xros is finally able to take him out of the equation. The judge to be collected, but this time it doesn't feel like Nongshim's gonna be able to work that thrifty magic off the back of the timeout. Well, and Envy is over clearing A main, trying to set up for the flank just in case. They're trying to cut this noise, but yeah, because Envy is so far forward, Paper X feel more than fine to keep 3 players here on B. Exactly. It's gonna have to be something brilliant. Got a couple shotguns and a bandit. Do you risk it and throw an ult in here? Get into a post plant. Ivy's got the pit. And Divide, he's got the angle and he's got all 3. One by one they fall. And one by one, Paper X continue to rack up these round wins. Just loving the game prep here for Paper X. It's so hard to get a read as Nongshim on where the open space is going to be. This is something they haven't shown you since very early on in the half, since like round 3 with the shotgun tucked into the corner. So it's hard when you're in the heat of the moment, when things are going sideways, to remember that far back to some of the ideas that Paper X has been showing you. This time, just Forsaken and Envy going to challenge this B hit. To clear the Prowler though, and a follow-up as Divide leaning in this direction. Looking for that pass hit yet again. Paranoia connecting on a Forsaken. Dambi sliding forward. Able to find Envy. Turns back in. Francis will fall, but Dambi collects a second elimination. Divide. Not going to be able to shut him down this time. Dambi maybe starting to find his footing, coming alive here on the stage. Pit now going to be invested as well. As Nongshim know how desperately they need this final round of the half. Dambi going to be able to find himself a 4th. Something dead. Now it's all on Jing. Will quickly be cleaned up. So 8-4 at the half. Really interesting stuff that we're seeing. Paper X so far has a decent read, but that time you're able to use the Nightfall to give Dambi the space that he needs to go charging in. The fadeaway slide into the follow-up onto Forsaken, just straight up out-dueling Divide. Gets the 4th to make sure that there's no real hope here. Gonna need more of that on this defender's half. Gonna need a hell of a lot more than that one. Let's see if Nongshim's gonna be able to recover, but for now, we do have Valina who's standing by with a very special guest. Always love to hear from him, so let's send it over to her and hear from none other than Tens. Hola Santiago, estamos aquí con Tens para hacerle una preguntita surprise. Going crazy thing. NS को support कर रहा है. I just want to know, how are you seeing this venue? Are you liking it? What are your thoughts on Chile so far too? Yeah, so far Chile's been awesome. I mean, the atmosphere, the crowd here, they go absolutely wild. You guys have been really loud out there, so keep it up. And yeah, the games have been fantastic. Definitely, it has been amazing. Y bueno, obviamente preguntarle cómo ha sido Chile, qué piensa usted. Dice que ustedes son una locura, todos los que están aquí también alentando, gritando. Ya la energía ha sido increíble. Los matches también han sido impresionantes. But now I want to know, I see you're wearing the Nongshim shirt. Are you going for them? Are you rooting for them? And what's your predict for this finals? So, my heart's divided. I'm rooting for both teams. I do think Paper X is actually the favorites to win. I wanted the Nongshim team. I mean, I think their story is just so beautiful, working their way from the bottom to the top, now here to the grand finals. So I want to make sure that like they have my support so they can play the best they can play, and we can see the best match that we can get. Definitely, and it's been a great match so far. Y hablando un poquito también de a quién está alentando, dice que obviamente Paper X es el equipo favorito para poder ganar. Por el otro lado, encuentra que la historia de Nongshim es muy linda, empezando desde abajo y subiendo poco a poco, y ahora están acá en este stage increíble, entonces quiere mostrar ese apoyo para estos chicos. Esto es todo lo que tenemos por la entrevista. Tens, thank you very much for this interview. Do you want to wave and say hi to this amazing venue we have here? Chile, una vez más para Tens! Thank you very much, and now we're going back into the game. Good to hear from Tens, but thank you very much.
is aligned with the rest of us, just wanting to see that solid series, wanting to see that titanic clash that's been long since promised between these two squads. For now, Paper X, they have had the upper hand. And that's the thing that's most terrifying about this squad. When everyone is shooting the way that they are, they look unstoppable. Well, and they've been there. They've done that. This is their fourth global grand finals ever. And they've already got one trophy. You could bet they're chomping at the bit to get another one to prove that they're certainly one of, if not the best to ever play the game. They're gonna slowly work their way up A, but this mid push, three-man push, completely unaccounted for. Envy maybe finding out the hard way. Drifting up. About to have that contact. He's good for the first, looking for that second, but Nabi just continues the slide across, dragging the attention, dragging that cross here. Well, X-Ross under some fire, the swing coming into by. On the approach around the back, X-Ross gets a read of it though, turns back, facing forward, finding himself a third. Now suddenly it's Jing, the 1v3, the quick fade away. Nabi down on the floor, Ghost recovered. Jing trying to make a go of this one, but RB takes him down to 14, the spike now collected. Nabi still on the approach. The swing around the back, and Jing just no idea where RB has gotten off to. We'll just swoop forward into RB's open grasp. Pistol goes the way of Nongshim. Just fantastic stuff from X-Ross. A longtime player for Nongshim, but a new addition to the main roster. He's had a couple big ones. The first finals, the upper finals in Pacific, he really was electric. He just holds the line, holds the sight. That's got to feel good. That's got to feel like some weight off your shoulders here. That pistol going to give you a really good shout into this. Just a Sheriff, one Bandit for Envy, Shorty for Forsaken. Oh, why the hell not? Definitely not the player you'd expect in this composition to have the Shorty. I think it might be something, but you know what? You never know with Paper X what they've got up their sleeve. Not worth trying to figure out what's going on in those brains. I don't know why I'm bothering. Zombie just trying to keep note. Zangles around mid. Spawn of the buy. Relay bolt going to be lopped in there. Defiant barely survives. Walking away, quite literally 1 HP. Thought some of that might have been decay damage, but no. He's taken down to that single digit. While Forsaken leading the charge, pushing forward with that Shorty in hand. Will be to his doom, but that second layer coming in. Jing able to clean one up. And that's going to be a Spectre recoverable. The spike still slowly eking its way forward, waiting for the smoke to bloom. It's the cover. Envy just waiting on those timing shots. Jump down and get the plant in action. Ross able to find a buy. Finishing off the earlier job, keeping Nongshim in with a player advantage. Spectre in the hands of something, however, as well as that Bandit for Envy. Certainly has to be a consideration and a concern. It's the double swing there at Heaven, but Dambi able to flush them both out. Now it's just X-Ross to find the finisher, and Nongshim finding their footing so far here in that second half. Bringing this back to a 2-round deficit. And if they can find a bonus conversion, then oh, goodness me. Then you start to be a little bit concerned if you're in the Paper X camp. Just really nice stuff from Dambi, showing that it isn't all just his neon movement and ability, it's also his individual, just pure mechanical skill is quite high. Only 2 guns dropped there for Nongshim. Painful, you know, Paper X at least able to get the plant down. भाई 1 करोड़ का टूर्नामेंट खेल रहे हैं. 1 करोड़ का टूर्नामेंट तुम ये देखो भाई. 1 करोड़ का टूर्नामेंट है और कितना वो खेल रहे हैं, कैसे मतलब मेंटली कैसे हैंडल कर रहे होंगे ये लोग. They're going to stack heavy over towards B. Meanwhile, Paper X actually spreading the map, looking for that aggressive push, looking for that attack lane that Dambi's going to take. So taking some angles where you'd have a favorable chance to at least do some damage to him before you can really get in your face. So main control usually something that Paper X do try to lean into, do try to establish early on, but the gamble this time for Nongshim not necessarily going to pay off. Nobody yet. Still working his way over there. Give them a chance. Mera famous dialogue. We'll send out that Prowler. It's confirmation now that the Paranoia goes flying. He's able to back away. Forsaken on the scale forward, catching Ivy completely off guard. And that A site is wide open. Dambi not able to find Envy. He holds his own for one. Backpedals, shifting over to the side, but still is in for the fight. Turns the flash, looks for a little bit more.
won't be able to come up with the goods. Vandal will recover now into the hands of Francis. Devi's position going to be noted here in mid, but something. Sol to try to play him in. Keep him tucked away. Keep him a mystery. TP forward. He now strikes. The blind there on Francis. He finds the second, looks for the third. X-Ross has managed to shut him down. Comes up with another. And 2 players surviving. Paper Rex will be able to close out the anti-bonus. Yeah, I mean, you can see again, even on this side of the map, how prepared Paper Rex is for Dombi's ability to just try to punish you. Again, it's Dombi waiting for that piece of util that you throw out. Then he's going to accelerate, come at you. And Envy plays this really, really nice. There it is. We're back in Pacific. We're back. Welcome to the Sangam Coliseum. क्या हो गया? ज़्यादा क्या हो गया? But it's their ability to be prepared for Dombi right now that is really giving them that extra little boost. Still only 3 rounds though. Still Nongshim has so much fight in them. And they can still punish you if you give them any opportunity. Here's that B main control you were just talking about. One away from a convergent pass for something. Everybody else, Envy not too far away. 2 more kills and he'll get it, but just going to be that slow creep forward. Spot on the RB, but Wall's actually up in mid here this time for Paper Rex, and they're going to try to cut off that mid rotation, use the extremities of the map themselves. They're just waiting. Just trying to suss out if, you know, Nongshim's ever going to try to turn on the Jets, but Nongshim also wants to play the patient game, so kind of both teams anticipating that maybe speed and aggression would be their opponent's sort of go-to. Francis pushed forward. It's Forsaken on that late lurk. Wanted to reopen that A side of the map, potentially go for the pivot, but now there is no further recourse. They have to push forward. They have to try to get the plant down here on this B site. Refract out with a flood in from Nongshim. They're going to pull off the retake as Jing, however, on the swing, finds himself a second, but Dombi will find the shutdown. Nongshim not looking to have this map slip from their grasp. It's their opening pick here in this grand final. लेकिन भाई Neon कितना aggressive खेलता है इनका. And it's now within 2 rounds. It's good reads here. This is a big kill for Francis. Because you're killing Forsaken, he's oftentimes going to be one of the players that's out on his own. So it gives them a really good read that they can play for that flood. That fast rotation over towards B. They're just in a perfect position to shut it right down before it even starts. Now you're going to see same timing here for the timeout for Paper Rex as Nongshim took in the first half. Alex feeling like they're getting just a bit too close by. नहीं यार, Neon ठीक है यार Neon. Wanting to make sure that his team can तो secure ऐसे this win. भाई जो एजेंट मास्टर कर ले फिर तुम नर्व केस क्यों करते हो यार? मास्टर कर लिया तो फिर मास्टर क्या है? सब थोड़ी ना खेल पाते वैसा. कुछ लोग ही खेल पाते हैं. So you're well set up to have a 2-0 start to immediately take this to match point, force Nongshim नर्व क्यों करते हो? यूरो का फ्लैश 2 से 1 कर दिया, बताओ भाई. अब क्या बचा यूरो? first ever grand finals appearance. टीपी का टाइम घटा दिया उसके. Getting this corrode is absolutely monstrous for Paper Rex's hopes. Absolutely, and they've been getting better and better and better on this map. यूरो क्लोन का तो भाई पूरा करियर ही यूरो पे बना है. Favored one of Nongshim. उससे पूछो कैसा फील हो रहा होगा उसको. Paper Rex has shown that their ability to adapt, their ability to work the map, you know, win so many of those contact fights at the mains has given teams a lot of problems. But Paper Rex has looked pretty scared so far. So it's going to be them trying to challenge those mains a little bit more, trying to play for some of that positional battle a little bit sooner. Some sprays through there to try to keep X-Ross safe, but instead, it's just going to be another orb collected, a second ult, well, a third ult. Ooh, miss on Envy. Able to find the punish. Be right back. Still alive, still with that Nightfall. Should they feel they have earned the space to open up with it? Jing, however, getting tagged low, as is something. Refracts all the way out, but Jing is pushing forward, quickly dispatches Dombi. Bandit yet again doing wonders, but he cannot steady the spray to find RB. Ends up being that 1-for-1. While the rotation's back, Francis setting up that gate crash all the way across towards the B side of the map. Be able to join in, reinforce alongside Ivy. I wouldn't have minded seeing Jing TP out of that spot there, but Snakebite at least going to force Ivy back. Something, though, getting lit up on the way in. The rest of the team hasn't been able to join him, so X-Ross tucked in the corner.
Peek out, and Francis able to find anything from on high. Devi still going to be good with the Sheriff. Cleans up 1 minute, needs a hell of a lot more. And at the moment, he's boxed in, now flushed out. Something good for the 1 kill, but Ivy gets a drag across, finds the headshot. Timeout call not going to be leading to a thrifty here for Paper Rex. See what the strategy was set to be ahead of this next buy round. And all of a sudden, this feels like a must-win round for Paper Rex in this map because their economy is going to be in the dumpster. The most credits anybody's going to have behind this buy is Devi with 350, and you have 3 ults, 2 of them really, really big ones. The Convergent Paths and the Nightfall going to be available. A little bit of sweat there for the Nongshim staff, and Alex trying to keep it together so far. Paranoia to back Forsaken off there. Just trying to take some A main space, but Paper Rex gonna do a little bit of lingering. Still just thinking that eventually Nongshim's gonna wanna try to push a player in through mid, but Nongshim's just been playing Absorb. Letting them take a little bit of space, make the good read, go for the flood, and they've got a great read going right here. Now it's exchanged. You know how far forward something is now that Refract expired. Ambi turning back over towards Man and X-Ross, taking that first fight, something in the fall, and X-Ross finds the double up. Invi now dead, he gets 4! RB will find the final, not allowing for an ace to come through, but it's a flawless round. As Nongshim tied up 9-9. He's just rock solid on that A site. X-Ross just not giving him anything. Oh my God, that force, that tap. And that is more of the X-Ross that we were seeing back at kickoff that caught them that first seed. वाइपर के जो बाद caught the second time out. मारा तो ठीक है, वाइपर के बाद वाले को जो मारा उसको तो प्री फायर में ही मार दिया शायद से. This is tough, man. Again, both teams have really good reads on each other on these defender sides. They really understand how they want to work the map. Nongshim is barely trying to challenge anything early. They're just waiting for Paper Rex to get a little impatient, try to push through a choke, and then they're just shutting them down. And this time you have the turret of X-Ross in A Link, just 1-2, okay, that's probably the most they're sending through Link for this split. I'm gonna turn my attention the other way. Just end the round. And you even get to use the ults as Paper Rex. You're just chewing through them. Are about to have 4 online. Devi 1 away from having that next Steel Garden in, but same could be said for Nongshim. The overdrive nearly there. Francis 1 away from that dimensional drift. So if Paper Rex do manage to get into a post plant, damn sure that ult is going to be coming through. Yeah. He's going to be giving himself maybe a little bit of a backup. Had the op in hand carried over, obviously, but now does have a judge as well. मुझे समझ नहीं आ रहा वेले लिंक से क्यों गया. वेले मेन से एंट्री कर सकता है easy. We'll play for it. Has the op set up. Casey snaps back with that gate crash. Going to collect that and provide cover at range. Paper Rex realizes their own tricks. Oh, they didn't send it into the corner, but something is swinging out a little bit wider, so does avoid getting 1 shot. Francis exits with 5 HP. Meanwhile, RB catching Forsaken again. He's continuing to try to enact these lurks to get forward onto A. But Nongshim continue to suss it out and find the timing. Just veteran presence, veteran awareness from RB. Out-reading Forsaken, who at times looks like just a genius with some of his lurks, but RB beat him to the punch. He's playing a very deep angle. He's only going to be able to find 1 more, so weapon going to be given over. Francis at 5 HP, that could end up being costly, but X-Ross again! Continues to hold the door. Puts Ching to 45 before he finally falls, and Dambi now perfect position. Will find the punish in Nongshim. मैं भी ऐसे ही बैठता हूँ पता करोड़ करोड़ में मैं भी ऐसे ही बैठता हूँ एंगल होल्ड करके बढ़िया. That's his sight. ये एंगल बढ़िया है जो नियॉन होल्ड करके बैठा हुआ था. To deal with him. You need to get some util to unbalance X-Ross. Goodness. But this right here. Oh, the first one. Disgusting. ADS in. Makes that Vandal look like a sniper rifle. And now it's starting to show. Now you got a bunch of ults to counter here. This is where the chaos can really ensue. Paper Rex wanting to up the pace.
It's been slow going these last several rounds. They're going to try to change it up a little bit. Dambi does get tagged down low. Blind shots from something, putting him down to 30. Well, RB caught on timing. Forsaken able to find him this time around. Cleans up the kill, but already Nongshim getting their forces in position to hold the line here on this A side, but Dambi now going to be traded out. Player advantage at the moment, over to the side of Paper Rex. Forsaken expounds upon that, finding Ivy. Now it's just Francis and X-Ross trying to see if they can take this up to 11. It's a great scramble recovery here from Paper Rex. Really good use of their util to close off that A-Link angle, using the Thorns and the Poison Cloud. Forward into the smoke, the shorty looking for a target, but now X-Ross all alone. The swing out, Forsaken has him. 3 kills and we get tied up 10-10. This is just something I've been kind of looking for from Paper Rex. They've been playing very slow by their standards throughout a lot of this half. This is the one where they finally turn up the tempo. And again, really good util usage. The counter here to when the dimensional drift gets put into play is for them to immediately start holding entry angles from A-Link and other sides. And Forsaken does a great job reacting to that, anticipating that he's going to be getting pinged out, so he can be in a position to punish that if he reads it correctly, and he does. They're baiting here for Francis. Trying to. And he's just going to take a straight shot through the wall. Something dead. RB. Filling space forward into the smoke. Eventually will be fished out of it, but my goodness. What an opening kill from Francis. दो मार गया भाई ओमेन उनका. And everything that Paper Rex had in mind for this round immediately has been squashed. Brilliant setup from Nongshim, diverting those prowlers so Francis doesn't have to deal with it. Then he just goes for the big shot and hits. Now the reposition in the mid, the spot on the 1, the gate crash out to safety. Spike collected. Right, has been spotted, has been worked lower. Jing, nice solid shutdown on the Dambi on the slide, but Charles is right there playing alongside the Neon. Now it is just Devi. They know exactly where he is, at least they should. Scale forward, there is that wall set up from behind. Ivy maybe looking to pop it to draw the attention. As Devi gets closer and closer, trying to play an X-Ross, but I don't even know if he needs the assist. Swoop the corner, he will be able to find Francis still fighting as much as he possibly can, but Devi just cannot do enough in this round to try to get it back into Paper Rex's favor. Nongshim once again in the lead. Gotta find some opportunities to use some of these ults as Paper Rex, but you're just a lot of times getting beat to the punch, or in the round you did win, you just kind of got in there so fast. Yeah. भाई उसने PRS की गलती थोड़ी ना यार, समथिंग की गलती थोड़ी ना है उसमें यार, उसने स्मोक के थ्रू मारा. But now you got to start thinking back to those 2 timeouts in the first half that Nongshim popped in. उसने रीड करके मारा, क्या ही कर सकते. Really understand their team and how they play this map and where they're more effective. They knew this defender side would be better. Here we go, convergent pass in, Nightfall in. Goodbye. Finding one convergent pass, finding the other, push forward into the smoke, and something's able to find Ivy. Dambi still alive here on the side, sliding forward, trying to hold this door as much as he possibly can, but he just cannot. Gets flushed out, Paper Rex. They commit the ults, they go quickly. They catch Nongshim by surprise. Nothing more for Francis to do to try to escape. Something on the approach will have him outdone. The flick not connecting as we get tied up once again. He didn't scoop up the op. I was kind of curious if maybe he would think about it, but लेकिन PRX जो something है ना, just a wombo combo here. There's nothing you can do if you're on this site. है ना, Literally the convergent pass in the Nightfall यूरो cover काफी the बार whole मारा है thing. ऑपरेटर में बंडल से. So Nongshim there, if you're anywhere near यूरो से ऑपरेटर हो नहीं रही spots itself, you're अगर just देखा done, जाए you're तो. cooked. It's okay, finally use those ults, finally get some value out of it, but it's so late. You're not going to be able to cycle into those again. Now you're going to have to rely on getting to a pit, using that steel garden, maybe open up some space for you. Good news is you knocked the op out of Francis's hands. He's been really sturdy with it. And the money just hasn't been good. Haven't been able to build that up. On the entry, lands right there alongside Francis, but he's unable to find that kill. Just a smattering of damage, something down to 70. And immediately, Paper Rex just backing away a bit, cutting the noise. ये round 22 called करना चाहिए.
Looks like they still want to try to rescale though. I like this. ये round wise को next round उसके 4 second को निकल जाएगा match. Dambi a world away, obviously can join back in very quickly as the Neon does Entry have that के लिए wise call overdrive. करना चाहिए. Francis, he had never moved, so Forsaken, it's an obvious place for him to check. Immediately finds the kill, Steel Guard, and looks to keep them zoned back, stop them from flooding forward for a little bit longer. Well, Paranoia does connect on the 4. This Forsaken says, I don't need vision to send out this pet! And something, gonna find 1, RB with 2. Player advantage, however, now gonna be equalized as Ivy. Leads up a kill on Envy, lobs in that bite. Looking for some damage, gets a bit there. Spam continues, X-Ross forward! Flushes them both out! The ultimate's कहाँ गई denied! OP ना? Nongshim! पता नहीं फेंक दी होगी. They take themselves up to map point. Oh, this is just incredible from Nongshim. A great read early here by Paper Rex. They get into the site, they shut Dambi down. It's a 5v3, but RB on the outside of the pit finds 2 huge kills, and it's X-Ross again. Says, yeah, I wasn't here this time to defend it, but it's still my site. They were just so unprepared for RB to do that. To slink his way into the back lines. Now Paper Rex needing this round win to take us into that OT, but look at the ult on the other side. The pit immediately invested by Ivy. X-Ross there as well, backing him up. Nightfall in hand. Paper Rex early, unable to find the catch. Paranoia dissuades Forsaken from swinging further. RB just playing contain at mid. This might just have them all funnel into Dambi. Tucked away at yard, a judge in hand. I mean, oh, the Nightfall invested. Moves out, connects at least onto the buy. Poison Orb gonna be chucked forward. As RB just clears the thorns, repositions. Left side of top mid. Dambi staying statuesque, not wanting to make a peep. Has the cover of that smoke though. And now we'll slide back across, swing the corner, finds 1, Forsaken dead, looks for a hell of a lot more, and something down low, finished! Weapon scooped up, Dambi out like a thief in the night. Says thank you very much for the vandal. Now Paper X stranded, corralled in mid. Jing swooping forward to his death. Francis is there, swapping positions as it is Justify left. Finds a second, it would have to be an ace clutch. Turns back, RB. The next one to take the fight, Devi, able to win it out. Here's the approach, but the time is getting away from him. 11 seconds remaining. And Ivy now arriving at backside the lob in on the snake bite. Devi nearly dead. And the round is over, the map is gone. Nongshim struggle at the start, but they show us why they picked Garode. Really, really impressive stuff from both teams. Showing good understanding, good preparation. But Nongshim's defender's side was masterful. Obviously frustrations there from the Paper X camp, feeling like they should have been able to win this one. But this is far from over. Split is coming up next. I mean, we're used to this style, guys. Yeah, boy. I think today is either gonna win fast or lose fast, dude. It's same aggressive, dude. Sometimes we don't even know what we're doing, you know. NS थोड़ी सी aggressive है, देखा जाए. PRX भी aggressive है, ऐसी बात नहीं है.
He's hunting down that title. The time to write the next chapter in the esports history books is finally ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा. BCT देख रहा. Steps up to the plate and he can knock this one out of the park. They shall be engraved alongside the greats. डाल सकते हैं. सोच रहा ओट्स बना लूं क्या? क्या हुआ ब्रेकिंग बैड भाई, क्या हुआ? Hi guys, I'm here with Bastarda Chilean in the house. She's the player for my BRGC right now. Breaking Bad भाई क्या हुआ? ¿Cómo te sientes mirando todo este espectáculo desde tu casa? Increíble, yo creo que es una oportunidad que nunca voy a tener en la vida, como estar en mi país con mis Cutie papás, ahí. mi pololo, entonces como mi amiga, todos estar aquí, entonces como ver todo el apoyo es muy increíble para mí, estoy emocionada inclusive. She's saying that she's really emotional actually because of all the crowd, because she's here with her parents, with me too, and also the crowd has been amazing and it's really emotional to live all of this in her home country. Pero ahora quiero saber también cuáles son tus predicciones para el día de hoy. Yo creo que va a ser 3-1 Paper Rex. Okay, she's thinking that it's gonna be 3-1 Paper Rex for this Master Santiago. Winners, Bastarda, muchas gracias. This is all we have for the interview, but back to you guys. 4 में से 3 जीतने हैं PRX को. तुम लोग चैट क्यों नहीं कर रहे? ब्रेकिंग बैड भाई, अंशु भाई क्या हो गया? सन्नाटा क्यों हो गया? Subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto que estoy la es mentira. Full de los bolsillos para darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto y que estoy la es mentira. Full de los bolsillos para darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla. Here with Silkanen of Nongshim now. Coach, congratulations on a great start on Corrode, but it seems like Paper Rex have indeed cracked the code on shutting down your Neon very efficiently until you guys took over in the second half in map 1, of course. But what do you think you need to watch out for in today's series all across the maps that you will be playing, considering the way Paper Rex was trying to counter you? 상대가 뭔가 저희 네온을 위해서 준비했다기보다는 저희 러시 타이밍을 어느 정도 잘 예측을 하는 것 같아서 저희가 1세트 때 어느 정도 조금 당했다 보니까 다음 세트 넘어갈 때 좀 어느 정도 꼬우거나 하면서 할 것 같습니다. अंशु भाग गया. I don't think it was हाँ वो all पढ़ता है ना. about shutting down our Neon. It's पढ़ता है just वो, Paper पढ़ने Rex were फोकस able करता to है थोड़ी predict सा. our rush timing really well. So I think given what happened in map 1, heading into map 2, I think we are going to change things up a bit. Thank you very much, Lokanan, and good luck.
Enjoyed the grand finals, folks, but want to know how to get even more Valorant info, perhaps? Well, you can download the Riot mobile app for the very latest in news, esports, dev diaries, video drops, and more. All the Riot Games info you could ever ask for is at your fingertips and on the other side of this fancy QR code on your screen right now. And of course, welcome back to our desk here on the other side of the first map in this epic final. We're sure it's going to be. Let's have a look at our HyperX reflex moment quickly from X-Ross in round number 18. Someone who stood up on defense especially and held it down. Yeah, we have to talk about X-Ross, as you're saying, for this defense. It was the name of the game. And so many of these dry peaks that we saw from the side of PaperX, he was on the other side. The youngest player that we had at the tournament, full stop, and also the oldest standing member from the initial roster of this Nongshim squad. So very crazy to see that he's willing to put up the numbers because it was not easy. This map started out very muddy for both teams. This was a match where I think both teams had a very good read on their defensive side of how the other squad likes to dive. I loved how PaperX was playing close on these smokes, punishing Domby's pathing, and they locked him out for most of the first half. But when we switched over, it was a great approach from Nongshim as well. I think in particular, they had done excellent prep as to where something likes to path when he's playing this solo waylay. And they almost always had someone in good position to police and force into a fract. And because PaperX is playing this solo duelist, so often they would not have a second player to follow him up. So once that fract and dash is burned, it really limits their options of where they can exec on attack. I feel like something was always hitting that 8-yard position and being forced to pull the plug pretty quickly in those rounds. Curious though to hear what a very frustrated, at least during those coach moments, Alex has to say ahead of map 2 here for PRX. Down here with Alex of PaperX. Now, Alex, we saw you guys get so much value out of the Vice and the Judge, of course. You guys were able to shut down the Neon from Nongshim very efficiently in the first half. So what made it difficult for you to continue that momentum in the second half? I mean, we basically just did exactly what lost us the game against AG, and they totally forgot about it, you know. So it was a bit upsetting because I think they can play a lot better. There wasn't anything really specific. I think we just lost the plot a little bit there. So it was a wake-up call, reminder. Okay, well, best of luck in the next map. Pretty strong words there from Alex, saying that we've just sort of forgotten the lessons that we've learned on the way here. I think that this has been the key for many of their matches, right? Losing that first map and actually having to bounce back. I do disagree in some of the things. So obviously, we see the full picture. He has only seen like half of it, but it also has to do with the things that he has been hearing on the server, I assume. Yeah, certainly so. I think where he's probably targeting a lot of that criticism is around the way they called that attack side. I think that was a PaperX that was slow to adapt. I would have liked to see them realize how much they were struggling on the hard execs and go into more mid-control. Just didn't quite figure that out fast enough. And when they did, X-Ross was shutting them down. Good news for PRX, though. We had to split a map they've been absolutely excellent on this tournament, where I think they're going to be a clear favorite here. Yeah, and considering that Nongshim had 2 bans for today, I think that there was the question between, is it going to be split or is it going to be Breeze? Breeze we had not seen from Nongshim in the tournament yet, and we had a lot of tape on the side of PaperX, but they decide to leave this split open. As you're saying, if we're speaking about comfort, even if it goes the distance, you have to favor PaperX on this encounter. I do feel like this is the kind of map, though, where someone like Jing is going to be pitted directly against W. We're going to get that Neon versus Raze head-to-head here. Yes, this map really highlights some of the differences in the double duelist comps these teams like to play. For PaperX, they have the dive agent of Jing, and also Forsaken, who plays a lot like the dive with the TP. Watch on their attack side the approaches that they have to taking space. Not just the side execs, but when they're going for heaven, sending a TP on one side, the Raze satchling onto the other. They have so many different variants. They make it very hard for defenders to find the answers. No defensive team thus far at this tournament has, but Nongshim, they had time to prep. They knew this map was coming. Let's see what they got. Let's get right back into it, folks. Over to you, Achilleos and Paper Thin. Thank you very much. Already a banging first map. 13-11 the scoreline on that Corrode. And I don't really want to settle for anything less than overtime here on Split. It was so close on Corrode. I thought we were going to get it. Maybe Devi had something unbelievable in store for us, but just didn't have the time to play with. And I mean, for Nongshim, just able to make those adjustments enough as that first half came through that they could get that 4th round. And now they're going to have a very difficult task here going up against a PaperX that has been superb on Split.
Early deep one way and a kill for Francis. Hell of a peek. Something dead on the floor to start off this round. Francis wants a little bit more, but Forsaken will be able to shut him down. Trust, however, with the trade up and out to Divide with the trade back, and then Dami gets involved as well. Suddenly a 3v2. Forsaken down to 35 and now dead. Nongshim find themselves another pistol win. Yeah, it's just a brawl here, but you have that extra player in the mix for Nongshim, and Xros is still hitting. And that's a huge win condition here for Nongshim. If you get some of those backline players to be fearsome, accurate, in control. It doesn't need to be the Dambi show all the time with this squad. A lot of people probably just seeing this Neon, seeing the mix-ups and problems that it causes for other teams, but really you look at Ivy, Francis, Xros, and their ability to be difference makers behind that. A little bit of a jump peek here for Forsaken, trying to make some noise. Yeah, just any early damage you could possibly get would be nice, but none to be found there. Divide, get with that Sheriff, this time going to be shut down. Cannot get the better of Xros. Eliminates him with the Guardian. With the spot on one, something, taking that gate crash, now jumps all the way back over towards spawn, and this is going to be Apex rerouting a bit, bringing that spike through the sewer. Trying to sow a little bit of a fake on the other side with the Prowler, but there's nothing to back it up, and Francis is scaled so far forward. Probably going to be able to rotate pretty quick. Not sure if got the spot on the Jing there or not. At least able to get the Sheriff over to Forsaken. For not quite a Caterpillar smoke here. Just one to try to work their way across that gap. RB going to be struck down, but Ivy finds something. Xros finds Envy. That should just be maybe a bit of a one-by-one they fall, but no, Forsaken re-swinging. Able to find one. Dami decides to pull the trigger, and given how low he was, he's able to find the kill. So 3 players alive. Collect up the key weaponry, carry that forward as Nongshim start things off 2-0. Yeah, they're just reading the map pretty darn well right now. And again, with having that Neon there to make those quick pivots through mid, it's going to be tough for Paper Rex to maybe get those executes to go the way they want. I think that's why you're seeing some of that early attention in the pistol round paid towards mid. If you can lock that part of the map off, it'll make it a lot more difficult for Nongshim to get their rotations the way they'd like to play them out. This time Dambi all on his own. He's just gonna tuck in. Judge is there. A wide swing could be his undoing, but still is gonna be able to find something in the back. But Ivy finding 2 in the front. Envy and Jing both eliminated. The snake bite layered forward. Trying to scale, stop them from collecting this spike and stop them. He has Ivy. 3K, potentially a 4th as it's just Divide. What a twist, what a turn of events so far here. That C's did connect. Divide just staying tucked away, but then Ivy finds him immediately off the hot reveal. A 4K just locking down A main. Nongshim find the bonus conversion. Now you're starting to have some big concerns as Paper Rex. Ivy there gets the kill, just swings back out and takes out Jing. And then he just goes in with a judge of his own, and then you just smother Divide with utility. The 4K here for Ivy. Sound like the Pillsbury Doughboy in the celebration. He did a bit. The frustration continues for Alex. The suffering for Paper Rex. 0-3 start on split. We were talking about it, they have looked immaculate on this map, but right now seems like Nongshim have absolutely done their homework on this one. Go into the Coinbase win condition. See what they're gonna have to draw from. Try to get ये दूसरा बंदा बैठा हुआ बगल पे ये कुछ नहीं बोलता क्या? ये कैसा कोच है? So far in Corrode. Just the once, and other than that, there wasn't a lot of that heroics that you're used to seeing with Paper Rex. Some of those miracle rounds, you know, some of that whimsy that they're able to create. But so far, here, you know, just a simple little thing. You gum up the works on the A main choke, and Alex भर you just knock Paper Rex out before the round even really begins. So I think here as Alex, you're talking about, hey, you guys have to be more proactive with some of the util, with some of the jump peaks to clear Dambi's angles. I thought they were doing a pretty good job of it on Corrode. I saw a couple times where they were able to jump peek and get the identification that
Dambi was in a position to try to play those close angles. This time, Outlaws in mid. Wall about to fall, the swing out, the shot's gonna end up whipping from Francis. Opens up a bit of space, but look at Nongshim already corralling back in from both sides. Wanting to contain this position, and X-Ross there at B Heaven is able to find something on the approach. Dambi now pushing forward, looking for the transfer onto the second. It's Forsaken low, and X-Ross has the alley-oop. And whatever the call was, it was read by Nongshim. भाई जो NS है इस टीम ने ऑलरेडी बोल रखा था भाई 4 सेकंड से कि तुमने मेरे जैसी जो मेरी टीम है अग्रेसिव खेलती है कैसे आज तक देखी नहीं होगी तुमने themselves in a position to do something no one else has done is Nongshim, and that's make Paper Rex's attack side weaker than the other team's defender side to get more rounds than Paper Rex is able to accrue. मैं भी अग्रेसिव खेलना ही सीख रहा हूँ मैं भी अग्रेसिव खेलता हूँ You nailed it, dude. Like they're just reading this the whole way. They know this is a mid push. And that's the way Nongshim wants to play. Aggressive में होता क्या है कि प्रेशर जल्दी बन जाता है सामने वाले strong, when you have it maybe an advantage to take some space. 2-3 राउंड पे अगर तुमने निकाल दिया ना aggressive तो easy होता है. You with that util. Now it's the operator on both sides. In fact, something has one. You can see the one in Francis's hands. Jing. I knew that pre-fire is able to find Jing, but okay, off screen. Dambi going to be struck down. Jing does eventually fall. Duelist down on either side. Yoru's still yet in the mix. As there's the spot out, and Invi quick to collect the kill. Great boss of the A site now fallen. That's huge. This opens up a lot of different options, whether you want to go B split or A. You're gonna have a lot of map control. It seems like Paper Rex relying on that kill to maybe draw some additional attention towards A, but Francis has made the call. No, I can hold this. I have the operator. Decent enough angle, just checks around. Make sure no one's on that exit. Forsaken just watches something struggle with the Prowler. Forsaken did throw a smoke over to A to try to maybe pull the extra player, but Nongshim's just holding. They haven't moved a muscle for about a minute. Paranoia connecting, X-Ross. Lobbing in that haunt, but it gets cleared, but RB catches a glimpse, and that's more than enough for him to dispatch Forsaken. Approach from Envy here from behind, but his teammates down on the side, losing their lives. Suddenly he's the last one standing. Finds the first, drops down. Sees the in position, the time getting away from him, and Francis just Goomba stomps him with a shorty. 5-0 for Nongshim so far on this defense. You see the frustration on the players' faces. I can imagine it's even worse back in the coaching booth. As Alex has to assess when and should I call that second time out. I mean, they're maneuvering on the map really nicely here. Our Paper Rex are just getting outdone. They hit a good paranoia to keep X-Ross pinned, but the reinforcements were there for Nongshim in terms of just one other player, and they can't deal with it. Get the spot, you get some space here. Spawn reveals on both sides. Prowler chasing all the way around the back as there's the Bucky, but there's the Judge. Tommy finds Jing Devi dead. Reflection on this one, Dambi missing the rope. Will get punished. Forsaken able to pursue in for that elimination, but RB cuts down his reinforcements. Prowler finds him, as does Francis. He's playing off his teammates util. 6-0 Nongshim. They are starting to run away with this, and Paper Rex, they need something desperately to occur. They're just getting beat at every single point. There's nothing that they can do right, and everything that Nongshim is doing right. Spoiler alert, it's the second timeout call. Yeah. Paper Rex have to commit this one in. But Paper Rex, the team, are not the only thing that is 0 and 6 at the moment. Both duelists for Paper Rex are 0 and 6. They have not been able to find a single kill between them. It's unbelievable. It's hard to fathom. Now it's just gotta find a way to rally these troops. You know, these players, they've been there, they've done that so many times. They've been in these positions. Are they gonna be able to find that mental fortitude to situate themselves back into this map? And they're trying different stuff. They're spreading the map. They're gaining control at times. But this round, they're just devastated. Yes, weaker weaponry, but
You know, Domby's starting to get a good feel for the game. He's starting to get into the groove there. Reading that blast pack positioning from Jing perfectly to shut him down with the judge. Don't give that Bucky any hope. You're going to have a Nightfall. You're going to be one away from Devi's ult. You're going to be one away from a showstopper here. So this is a very important round for Paper Rex. Try to get an orb, try to get some control, but Nongshim wants to try to deny it. They're lined up right with them at A main. उसका अल्ट कितना तगड़ा है भाई, मतलब अपने पोजीशन से हिला देता है, ब्रीच की तरह एकदम. Crowd still energized, but Paper Rex, they're the ones that need the show. जो कवर में बंदा बैठा हुआ है तो उसको बाहर निकाल देता है. Still have the focus, the grit, the tenacity to fight their way back Sound into wave, this. पता नहीं क्या होता है भाई, कुछ भी होता Trying to है. make something happen outside of A main. टीम ने लो फील कर रहे हैं. That pit dropped and now Obviously करेंगे ना. मैं बता तो रहा हूँ, अग्रेसिव तुम थोड़ी सा खेल बस लो. मैं भी भाई मतलब कोई अग्रेसिव खेलते सामने मैं भी लो हो जाता हूँ थोड़ी सा. सभी लो हो जाते हैं. Slots forward behind the boxes. प्रेशर फील सब करते हैं भाई. Zinvi pushing forward is able to find X-Ross. Francis, however, strikes him down. The spike now on the floor, but something down below. He's able to find the first, but he cannot get the transition. Francis still alive, still kicking. विजन भाई याद रखियो, अग्रेसिव खेलना है, अग्रेसिव. 3v3, Nongshim needing the retake. The showstopper has to be तभी होगा good ascendant for Paper Rex. और immortal भी. An overdrive for Dambi. No more gate crashes. No easy exit for a sniper and Forsaken. He's just missing a timing on that. खेलेंगे कब? He's going to कल try खेलेंगे to कल. find that punish. Had he continued pre-firing the angle, might have been rewarded with a kill, but now instead he's going to be eliminated. Jing will be able to find Dambi, but now Ivy strikes in from garage. The time starting to tick. Jing, can he play this out? Finds the first. Ivy dead. Another paint shell lobbed in. That should be the round secured. Finally, as Jing comes alive. Finds a Red Bull clutch and gets Paper X on the board at long last. Just barely. वेलो ही खेलेंगे क्योंकि 2-3 दिन बचे ना, सोच रहा हूँ जितनी रैंक पर हो जाए हो जाए. Looking at his map there or what? He खत्म होगा फिर रैंक रीसेट हो जाएगी. Right shouldn't have even allowed this retake to अभी really ये मैच खत्म हो जाएगा, इसके बाद वेलो खेलूंगा मैं. At least you're able to keep Dambi out of the equation with that judge. Jing getting on the board when they need it most, but man, I was so nervous. So nervous there when something was walking into that site. No smokes at heaven. इन लोगों में confidence आया थोड़ी सा, अब खेलेंगे ये लोग. Somehow gets away unscathed, at least for a bit. Oh well. Yeah, you're gonna be playing those ranges. Paranoia is not gonna be enough to dissuade Dambi. Try तो करना पड़ेगा ना यार फिर भी. Jing, the hero of the previous, now gone off the rip, but it's time Forsaken. Able to secure the kill when he has somebody dead to right. Right of the rope from Dambi, keeping it quiet. Sliding forward, looking for the backstab with that judge. Meanwhile, a little leg shot there, and Dambi, he has just stormed the front. Forsaken and something, both gone. The spike still a world away. Meanwhile, Francis cleans up the kill on Envy, finishes what he started. And Nongshim Red Force, they are not allowing for that momentum build, for that confidence to resurface from Paper Rex. They are smothering them out of this map. It's just incredible. Dambi again, just right where he needs to be to shut Jing's entries down. He's got such a good read on where the Raze wants to be. And when he's got a judge there, not much you can do about it when you're mid-air, point blank range. ये लोग नियॉन को मारते कैसे भी करके, क्योंकि वो जज से काफी पिक्स निकाल दे रहा है आराम से. नियॉन को ट्राई करना चाहिए ना निकालने का हर राउंड में. तो निकल जाएगा. अब अटैक में तो जज करने ही वाला है, देखना. 7-1 with no lifelines remaining. Paper Rex left to their own devices, needing to figure this out on their own. They had no idea. He's so patient. He's so good at finding his moments. Yeah. It's tough. Not re-clearing that space, or well, they kind of tried to, but Dambi खेल ये लोग रहे हैं, प्रेशर पूरा वो ले रहा है. Dambi खेलते ही नियॉन है. मैं बोला था मजा आएगा देखने को. नियॉन प्लेयर को मजा आता है भाई. So satisfying होता है भाई इनको देखना. नियॉन को. His eyes are trained towards this Neon, so Ivy just backstabs for free. He's tethered in position, and no one can do a damn thing about it.
Oh, Francis finds two. Dambi sliding forward. Forsaken only good for the first. If you want to play with shotguns, Nongshim are going to win every day of the week. अगर ये NS जीत गई तो फिर PRS मुश्किल है जीतेगी नहीं जीतेगी क्योंकि फिर 3 में से एक तो जीत ही लेगी against Nongshim. The shotguns might work a little bit. We saw it on Corrode, but they're kind of just better. Dambi is the maestro of the pump weapons. And here we go again. मेरे से ही कोचिंग ले डम्बी ने Paper X just Alex को अटैक आ जाएगा कितना गर्म हो रहा है हाँ ना इतना गर्म नहीं होना चाहिए सामने वाले प्रेशर आता है A massive overstep. Perhaps some complacency and misplaced confidence. He ends up getting punished and now has opened the door for Paper X. मुझे नहीं पता कि वो जो गुस्सा कर रहा है वो टीममेट सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे शायद नहीं सुन पा रहे होंगे Hearing the bound across from Dambi, relays that to the team, lets them know that he is coming. Neon को देख Next Raw's now gone. Dambi on the corner, the judge still ringing out, still taking life विलन भाई सी को now. कुछ ठीक है Neon से सी को कुछ Comes to the rescue. ऐसे खेल रहा है अटैक एकदम अटैक घुस के और मैं वेले खेलूंगा घुस मैं आऊंगा तेरे पीछे से ठीक है समझ डेडली डुओ बनाना है अपन को Valorant. It takes an overstep from Francis for them to even have a chance to really get through there. And he goes for the big play, pays the price. For a moment, looked like maybe it was going to go awry, but that Nightfall was really well placed, really well timed. It hit Dambi, made it so he kind of had to slow down a little bit, couldn't keep running around. मैं क्या सीखूं भाई तुम्हें भी पता है मैं कैसे खेलता हूं नियॉन तभी तो कह रहा हूं और सीखो भाई कुछ अपग्रेड तो होता है ना वही अपग्रेड कुछ गलती करते हो तो अपडेट कर लो खुद को देख के नियॉन ने कभी भी ओवर पीक नहीं दी पता देख तो नियॉन को Anyone going to be watching their back. Okay. Here comes the flood. The haunt out. The overwhelm is found. Forsaken trying to TP around. And Francis again. Kind of misplaying it as Forsaken. Suddenly, they're in with a shout. A site completely opened up. He TPs over to screens. Sticks that one. The rest of the team still a ways away. Still plenty of time to work with. Should RB turn back, ride that rope and peek in. Might have been able to find a catch. Interrupt them, but now Paper X have a very real opportunity. Forsaken both down low, 57 health between the two of them. A pit, however, available. They might just have to commit that in to this post plant. The drop down, Ivy looking for that punish. But the spike makes its way over onto the site. Spike planted. For now, it seems like they favor their numbers. They like their chances. So the pit going to be saved for the last round, but now Forsaken gone. Lowest HP member eliminated, but Devi holds his own. Ivy dead at the elbow, and now it is just RB. Trying to assess where Jing could possibly be now. Spots him, but Jing faster on the मैंने बोला था draw. यार Gets the headshot and निकाल लेंगे दो तीन राउंड तो निकाल लेंगे ये लोग भाई. Well, there's one of those miracles that you needed as Paper Rex, and it's Forsaken's 3K here. अभी भी कुछ कह नहीं सकते हम. Should just be dead to rights, but PRS the जीत सकती shorty's है there मैच. just a little bit off the mark. Leave him with 9 HP left. Devi holding the line, and Jing good for another. One more round. हाँ मैंने बोला था ना वही होगा वही होगा. 8-4 होने वाला that है. round, Jing's gonna have a showstopper here for the final one of the half. Big one to consider in a big brawl. Overdrive. Dimensional drift as well. Try to counteract the pivot. Instead, they're just going to go crunching into A main. Showstopper going to be drawn out. RB, however, striking first. Something dead. The push forward. Jing looking for a target. Lobs it beneath his feet. And Tabby zaps him out of the sky. Finds the follow-up. Envy's gone. देखा. Nongshim do not give them the हाँ अटैक में देखा तूने कितना अग्रेसिव खेलते हैं ये लोग. They are so well prepared. मतलब एंट्री नहीं करने दी उनको भाई. पीक ही नहीं करने दिया. Every twist and turn, it felt like they had the read. अरे सबके हिसाब से भाई. PRS के हिसाब से कुछ है. NS के हिसाब से कुछ है. Paper Rex needing the run back. See if they can find the pistol after halftime. भाई साहब
Can I help you, sir? Here's the bill from the dealership. TRS जीत जाएगी. देखते हैं क्या होता है. Beat it with a better deal on one of these fine cars. भाई ऐसे aggressive खेलना मुझे बहुत पसंद है यार. Guess you're not as cool as Verizon. Bring in your AT&T or T-Mobile bill for a better deal today. न्यून भाई इसलिए थोड़ी सा मैं ज़्यादा पीक करता हूँ, समझो तुम बात को. मर जाता हूँ कभी-कभी, वो बात अलग है. लेकिन मैं आगे तो जाता हूँ. थोड़ी सा कीड़ा है मेरे अंदर आगे जाने का. कोई ना. जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम भी आगे जाओगे. फिर अपन दोनों आगे जाएंगे. फिर अपन 2v5 करेंगे. खुली है. Wow. ¿Qué fue eso? ¿Y dónde están los fans de Noxy? जब टीममेट्स अच्छे होते हैं तो मैं खुद घुस जाता हूँ. इसलिए कह रहा हूँ टीममेट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना यार अपन को. कितना आगे जाना है, मैप के बाहर निकल जाओगे. नहीं इतना नहीं आगे जाना है, मतलब समझ यार तू. फीलिंग्स को समझ यार. Rápido, ¿quién va a ganar? Paper Rex. Noxim. Los que ganamos fuimos nosotros, todos nosotros, Santiago. अच्छा वो भाई टीम गेम में बोल रहे हो डिपेंड नहीं होना है. अच्छा वाह भाई टीम गेम में बोल रहे हो डिपेंड नहीं होना है. अरे मतलब तू समझा नहीं. पर उनको थोड़ी ना सिखा सकते यार, अपन खुद सीख सकते हैं ना. ये कह रहा हूँ मैं. अपनी जिम्मेदारी ये थोड़ी ना है कि अपन उनको सिखाएं. अपनी जिम्मेदारी ये है कि अपन खुद सीखें. ये कहना चाह रहा था मैं. Very quickly going to find themselves up to match point. हाँ, बैकअप कवर डबल पिक. हाँ ये तो है, यही तो. अब ये भाई उन्हें खुद समझना चाहिए ना कब कैसे सपोर्ट करना है. जैसे मैं तो समझ जाता हूँ और मैं सपोर्ट करने जाता हूँ तो मैं ही मरता हूँ पहले. जिसको सपोर्ट करने जाता हूँ वो बच जाता है और मैं मर जाता हूँ भाई. डेडली सपोर्ट. No one's been able to really do on this map. There have to be big concerns, but मुझे अगर एक ब्रीच मिल जाए तो और कोई नहीं चाहिए मुझे. हाँ ब्रीच तो नहीं ले पाऊंगा मैं वेले ही खेलूंगा. लेकिन ब्रीच हम टीम में किसी को बोल के ले सकते हैं एज अ टीममेट, टीम रिक्वायरमेंट. Spike recovered, something still fishing for it, looking for it, but managed to slide away. Now escorting that spike over to the A site, which has been opened up. It's Forsaken fell. 30 seconds left. Momentless here. Both sides. The post plant, the retake. And now in be gone as well. Divide a challenge and to win it. Another belter of a shot from the Sultan. But needs so much more. Something caught. Dropping down to his death. 6 feet under. Jing now. Dancing around elbow is just overwhelmed, outnumbered, and outdone. नहीं ये तो गया भाई प्यारे. Another pistol in Nongshim, now up to double digits. It's rough right now for Paper Rex. ये round important था. I mean, something here had opportunities in that round to do some damage and really didn't do anything, and just dropping into the site by himself. And look at the way that they're constantly maneuvering. Dombi there at the very end as well with that little bait and switch. Make sure that even if Jing hits a good shot onto him with the Sheriff, he has that player from heaven to clean it up. All the little things that Nongshim do is giving problems, and there is no buy up here. No force from Paper Rex. It's one Sheriff and then a bunch of half-armors, but there's an outlaw in the hands of Francis. So he could still absolutely cook them with this. They're going to try to do this high-low. There's one gone, but he will still fall. In via ramp, able to finish the job. Love the scale forward, grab that weapon. Looks like that's exactly what Forsaken is going for. Ivy already scooped it up. Oh, no, you're right.
Yeah, quickly collecting it, keeping it out of the grasp. Ivy at risk of maybe being intercepted, but seems to have a read on it, slowing down as he approaches towards Ramen. Devi has been all reliable with this Sheriff, but until they can clear him, they're just stuck in position. That leaves just something in Envy to their own devices back on the site. This has to be dry here. They use a smoke. Smoke to come through. The 1-2 push. Looking for the shot. Forsaken drawing the attention. Gets that outlaw after all. But that was still critical time bought for Nongshim. Paper Rex need to make a go of this right here, right now. Shot connecting on the down B, takes him down to 10. But Ektross again finds 2. And RB cleans up the remainders. 11-3. A decent cheeky go of it there from Paper Rex. But it's not enough to find the Thrifty. Oh. Even getting one there, not bad at all for Francis. And again, taking that gun away, even though it ends up in the hands of Forsaken. ये 4 second क्या कर रहा है? Jump क्यों कर रहा है? Still got huge advantages. As Nongshim able to just double up and make sure that that flank उसको उम्मीद चली गई भाई कि वो find any जीतेगा. purchase. And the big purchase coming through. Judge for Envy, Judge for Forsaken for Paper Rex. So a couple of those half armor buys that they invested in the previous round, they're going to prove fruitful anyway. Swing the corner and Ivy finding Envy. The Judge just not hitting at all. Walls falling, the spot out onto something. It will just be the two players going their separate ways. Ivy tucks back, कल यहाँ एनर्जी watching for मैच that लाया था potential वापस. flank that will not come through. हाँ एनर्जी तो लाया था वापस. Clone to the corner, the poison orb delaying this approach down ramp. They're being held at bay. कुछ भी हो सकता है भाई, अभी भी कुछ भी हो सकता Here है. on the corner, the push forward into the second, into the fourth. Ivy, absolutely decimating. भाई ऐसे एम के साथ तो सरवाइव नहीं करने वाली. For an ace. PRX. You know where he's at. Stuck here around the corner. They're going to try to play him in. The shot's ringing out. एम अच्छा है भाई इन लोगों का. Looking for the swing, and Ivy will have it. मुश्किल His है. first global stage, his first grand final. And he has got an ace to take Nongshim up to map point. This is disgusting work from Ivy. Tucks into the corner, देखो and by the तो सही time कैसे Paper मार रहा Rex है. realizes it, it is far, far too late. Good guy teammates there, teeing him up, and he's standing up. What a feeling this must be right now. The Ascension Dreamers on the cusp of going up 2-0. And it's a statement that I didn't really ever think that I'd make, but he's got 18 extra kills of something. Who's just not been able to find his form, not been able to find his groove, and that is going to continue. Just cannot catch a break. Can't buy a kill at this point. Ivy will fall. Decent fight back here from Paper Rex. Do not want this map to come to an end, who do not want for Nongshim to get that 2-0 lead, to put them in the position where they have to reverse sweep. And so far in this round, so good. Yeah, just... Not quite. Almost. So Safer if you do it over here. Yep, the shorter wall. Yep. There you go. If you were Mata, you probably could have made it over the top. That's true, yeah. RB still wanting to try to make this painful, but he won't be able to. Devi able to hold his own. Francis, his position absolutely known and heard. Can he take anybody down with him? He is completely surrounded. About to have an old boy style fight here in the hallway, but it doesn't last very long. Paper Rex fight back for a fourth, but they need 8 in a row to get this into overtime. Just crazy stuff here from Devi in this round. No armor. The glass cannon, he's able to connect. Almost no cigar for Francis on the initial attempt, but he eventually gets it out of there, and stabilization of sorts here. This Outlaw is only going to hit one player for one tap, but something has been willing to take it, find those double taps. Right now, it's a mid push-up. Jing and Devi trying
Trying to play off of each other. Goes Dambi. Paranoia across. Dambi needing to turn back, but it will be Francis at that second layer to come to the rescue. Now Jing gone. X-Ross finds Forsaken. And in the blink of an eye, there's just two members of Paper Rex left standing. Envy and something to try to work a miracle. As the pit blooms and it cycles them into one singular position. Just an alley approach available. Francis still willing to fight forward. The swing in, he finds the first. Envy will fall. 13-4, outstanding from Nongshim as they kick off this final 2-0. One more map, and they will be crowned the champions of Master Santiago. It just keeps going. Can they do it? Map 3 is Abyss. We've never seen Paper X on it. They have to show it now, and they have to find the win. एबिस में पाया भाई अब एबिस में पेपर एक्स अच्छा है नहीं शायद It's more than a game. It's a world shaped by you, the fans. And our mission is to elevate that world by building technology that creates moments that last forever. That's why we're joining forces with the Valorant Champions Tour to transform how fans experience live events on the global stage. आज फाइनल्स हैं क्या हाँ फाइनल है आज पेनेटिक भी अच्छी टीम है मोहित भाई डायमंड नहीं हो रहा क्या The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolves. मोहित भाई डायमंड नहीं हो रहा क्या This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He's hunting down that title! The time to write the next chapter in the esports history books is finally here. And they fold it in his hands yet again! He steps up to the plate and he can knock this one out of the park! Now they shall be engraved alongside the greats! भाई खेल ही नहीं रहा इनके 2 मैच खेलता हूँ एक विन एक लूज ओ कोई ना Hi guys, how are you? I'm here with Sassy, co-streamer for this amazing event. And now Sassy, I just want to know, how has it been co-streaming every match with all the fans back there being really loud? Oh, it's insane. I feel like this Masters really hit it different, you know what I mean? Like, somehow, I know why, because there are a lot of teams, of course, but like we have the similarities with Brazil, Chile. All the crowd, like they have so much energy, so it's really entertaining. They don't care which team's playing, right? Because they are cheering for everyone, so it's even hard to know like what to predict when they're like shouting who they're cheering for. So I really appreciate it from the fans because it makes the show more entertaining than ever. Definitely, it's that Latin power that we all know. Locking was the same, it was amazing, but now I want to ask predictions for today. Who's going to win and how's going to be the count? You know, I got it right yesterday. I said it was 3-1 Paper X, and I will go with the same way, 3-1 Paper X. First best of 5 from NS on a grand final Masters, so I feel like it's going to be the second title for Paper X. Ooh, that's going to be interesting. Let's see if that happens, but back to you guys.
Very one-sided map there in map number 2 of this series. Split was all Nongshim all the time. And our Verizon high-speed moment goes to Nongshim's speedy dominance, literally and figuratively, at the start of the map. Yeah, every single time the team goes against PaperX for the first time, we say, oh, it is so difficult to take some of these duels. But for the side of Nongshim, they made something look like nothing, absolutely. The position and the duels that they were taking at the beginning of every single round in that defense. PaperX's attack side thrives in getting to go into execute, showing different pathing for that. They're excellent. So what Nongshim did was utterly disrupt them. These first 2 rounds, the pistol and the bonus in particular, were such a great example of this. This is a Nongshim that is playing incredibly confident, who has their individuals in peak form, but who also has great prep as to what their opponent's strengths are, and they look primed to win this final. Very quickly, something 1-17 on the map as well. I've never Unrelated seen that to this, happening. but that's not good. Oof, no, absolutely not. Yeah, it is looking grim for PaperX. There's never been a reverse sweep on the global stage. They'd have to do something historic. We have some special guests on the floor ahead of Agent Select. So let's head down to the arena with Anatol and Leo Farrier. बात ही कर रहे हो तुम सिर्फ लाइक वाइक करो यार क्या कर रहे हो? Zero like यार क्या कर रहे हो? Some things. Estamos aquí con Ana León y con Leo Faría también porque les queremos hacer unas preguntitas sobre lo que ha sido este evento en Master Santiago. So I actually want to ask both of you. You have taken Valorant events all over the world, but I want to know first from you, Ana, what has stood out from this event specifically? I mean, everything here has been so amazing. I've been shaking since I got here. It's so loud. Everyone is so beautiful and so lovely. And the only thing I really want to say is, Chile es la buena buena. That's amazing. Y bueno, hablando un poquito también de la respuesta, dice que desde que llegó acá está simplemente temblando. No puede creer todo lo que está pasando, el ánimo de la gente, que ha sido realmente una experiencia increíble, que definitivamente ustedes, todos los que están acá en este venue, han hecho eso pasar. Now, Leo, I want to know, what has stood out for you specifically this event? Look, it's been so incredible to be here. As you all probably know, I'm Brazilian. I grew up in Brazil, and I am ashamed to say this is my first time in Santiago in Chile, and this city is incredible. We've been enjoying our time here so much. You see, every time we go to a city, we hope fans will show up, but we have been amazed. We had high expectations, but you have really amazed us. It's incredible. We are, by the way, trying to change our sport in a way that allows us to travel more. We know this is only our first time here, but we want to come back. And we promise to come back if you promise to come back. So thank you all very much. We appreciate you. We know you love Valorant, and we're very happy to be able to be here and show some love back to all of you. Definitely, that's the Latin vibe we got going on here. Bueno, Leo comenta que obviamente él es brasileño, es de Brasil, sabe todo, también la energía que hay dentro y que es la primera vez, de hecho, que está en Santiago, pero que definitivamente han impresionado, están todos volviéndose locos, pero que definitivamente ahora quieren estar haciendo que el Valorant pueda llegar a más lugares para que todos puedan ver y presenciar lo que son estos eventos y obviamente si lo hacen posible siempre están esperando de que la gente llegue al venue, de que vengan a ver los partidos y si ustedes todos los que están acá y en casa lo hacen posible, puede ser que vuelva a pasar algo por acá, así que muy interesante, los veo muy emocionados, but now I heard you have a little message for our audience here in house, right? All right, look, we heard that you're loud, so we want to check if that's true. Are you ready, Anna? 1, 2, 3. Chi, chi, chi! Chi, chi, chi! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Qué increíble es tenerlos acá! Ana, thank you very much. Leo, thank you very much too. This is really perfect. We love it. Y ahora nos vamos a ir directo a la partida de ese Agent Select. We're going to our Agent Select because we have this map. So let's get in there. I want to hear you all for this Agent Select.
utter pandemonium here in the Espacio Riesco, but it feels like amidst all of it, Nongshim Red Force are pulling the strings up 2-0. Now we're headed to a map that we have not seen from PaperX at all this year, period. They're perma-banned, and it has to come up when elimination is on the line, when they would have to start a reverse sweep if they want another trophy. The question is, what comp do they go for? And it's an interesting one, picking the Vice into this map, going away from double control that's been so popular. Yeah, I mean, everything is on the side of Nongshim for this one. Pulling out the Harbor also on their side. Yeah, I think it is really interesting. I mean, obviously, gonna just hover that one and consider to change that pack over to the normal composition. But I think local language बोलते हैं ये लोग. Where it is a पर अगर ये इंडिया में हो रहा होता ना तो total English बोलते, total English. Bypassing Vice utility. You have Omen TPs as well. I think it's actually going to be kind of tough to get defensive value with that agent. I think it's going to be difficult for PaperX because yes, the Davai I think is going to shine on the defense. They got to get alive there. As you said, Mimi, we have never seen in a global final a reverse sweep. So now PaperX has to do the impossible to get their second trophy. And Nongshim has all the momentum on their side for turning around that corrode when they were down 3-8 to get in that split, jumping into this abyss. Let's get you into map 3. It's do or die for PaperX. Let's Nongshim Red Force run. Rough shot over them. Over to you, Achilleos, and Paper Thin. About the impossible task here. देखते हैं भाई क्या होता है 2v2 होता है या no team has ever pulled off a reverse sweep on the global stage, but PaperX were the first team to pull off a reverse sweep in a best of 5 in VCT. This is now the biggest one of all. The second map pick, this abyss for Nongshim. PaperX now showing it for the first time, and Forsaken continuing to play duelist here. एक दिन के लिए PM बना दो मुझे. I mean, you have to have huge question marks right now about what's going to happen in this map, especially for Nongshim. You know, what is this composition actually going to look like? How's it going to play out? We have no clue. You know, what PaperX is going to look like. And for PaperX, this is a map that Nongshim has figured out. They've gotten their groove on. They take so much इसलिए है ना space. मैं बता रहा हूँ क्या रीजन है इसके पीछे. इसका रीजन ये है कि इंडिया दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है. खुद का कुछ है नहीं. यार ऐसे मैच में कुछ तो करेगी यार करेगी और नहीं तो क्या हारना थोड़ी ना होगा. 1 करोड़ है प्राइस पूल पता है तेरे को. 1 करोड़. Misreading where it might come from. And are they even going to be ready? This is so quick from Nongshim. In the back, Francis now striking, finding the first Jing, taking down some damage in reply, but the kill not yet found. Quick refract back, a pop flash. Francis looking for a little bit more, but it's going to be Dambi to find Forsaken. Something now gone. Invi only able to find the one. Davai scratching his head, wondering what the hell happened. Finds one. RB down to a single tap. A stiff breeze would kill off this Omen, but Xros and Ivy both very full on health. Davai tries to make a go of it, but will fall shy of the mark, and Nongshim continue to be dominant in these pistols. They're just ahead of PaperX at so many twists and turns. And this one is just a free push up through mid. No util there, no bodies there to figure it out until Jing finds out the hard way. Davai try as he might, just can't do anything at that point. Nongshim here. Still बहुत important round होता है. There is going to be a Marshall pickup. Davai to grab it. Francis has one of his own. He's shown how deadly he can be. Davai similarly is going to be able to find a kill, and Invi holds his own. Double Marshall now in the hands of PaperX with a player advantage. Tying this up 1-1 off the rip would be such a fantastic start. Something, however, pushing forward into sight. Had his work cut out for him. Completely unfavored in that regard. Spike now to be collected. Looks like PaperX. ये NS जीते खत्म है. Deal with Dambi. खत्म तो है ही है. अरे आधे में पता लग जाएगा अपन को. You got those two marshals. So if you can suss his position out early. PRX इस मैप में वीक है थोड़ी सी. हो सकता है PRX ये ना जीते. Let's get tagged up there. पता नहीं. Has to drop below. Fracks out. Saturate. Set up. Envy caught in midair. The spike now on the floor. The double swing now.
double face with those marshals, and Divine able to find another. एनएस का जीतने का रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास 3 राउंड है। एक मेंटालिटी होती है ना कि हमारे पास तो 3 राउंड है, एक तो जीत जाएंगे, तो वो फुल कॉन्फिडेंट से खेलेंगे। ये नहीं तो अगला। और पीआरएस के पास डू और डाई का है, अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। Damage dealt for sure. But Nongshim still come out on top. पीआरएक्स देखो फुल प्रेशर में है, फुल प्रेशर में। There's glimmers of hope for Paper Rex. Dambi so clean here in that saturate. Devastating. Envy trying to scale forward. Hell of a shot from Jing. Just too many layers there. GG हो गया पीआरएस का भाई। Jing at least trying to stay positive, has a smile, trying to rally the troops, but 3-0 है तो Paper Rex, you need to rally. Something's mental. क्या कर सकते हैं लेकिन? That's the key player for me right now. Gotta find impact. Was just woeful on split. He's a player who's been so good for them, but he's been hot and cold this year. When he goes cold, it's brutal. And yes, the rest of Paper Rex can be there to pick up the pieces, but Nongshim is too strong right now. Let's see if he can get it going in this round. Francis again looking for that headshot. Unable to find it here, but Dambi catching Forsaken as he just goes double dashing up over the top. 4 second वेले खेल रहा है भाई, crazy. Francis gone. Divide. Giving up देखा that नहीं तो position, कभी that खेलते हुए flank वेले into मैंने। mid. As the pings come down, they have him noted. मैच फिक्स्ड है। हेट मिलेगा फिर टीम को बहुत। Going on a walkabout to see if he can try to intercept anyone. हेट तो मिलेगा ही। मैच फिक्स्ड नहीं, मैच फिक्स नहीं है भाई। Gate crash gets taken by something. Might just be absolutely screwed. No, Divide out from window, able to have the covering fire, keeps him protected. And the ये rest of IPL Paper थोड़ी ना है, Rex, मैच फिक्स हो जाएगा। they come out on top, they fight back, they deny the bonus conversion, get themselves on the board. Seeing some good reads from Paper Rex in this round. Divide watching mid the whole time. He's been so stalwart for them today. Jing again, big as well. Saw this on Corrode, but ब्रेकिंग बैड यार तुम लाइक वाइक नहीं करते उस टीम। गैको छोड़ के सारे एजेंट खेलने वाला एक ही प्लेयर पूरा बीसीटी में। Going to look for those extra angles onto you. And even though NRG knew about it, they had a tough time dealing with it. दिया है the trip position हारने के लिए। a little bit further back. तेरे को कैसे पता? Absorb some of that B hit तो इतना pressure. वो कैसे कर सकता है? Play off of that confusion, that chaos that will be caused by that Cypher util if Paper Rex walks towards it. Look at how deep Francis already is. I mean, he's so far forward. Does keep him back to tower. Clear the camera. PRS बहुत Dambi trying to find an opener. उससे खेलेगी ये वाला मैच। Just to give the angles. बहुत कम गलती करेगी। Forsaken working his way closer. Ping revealed. Spotted out. Some stray shots connecting on to Envy. Put him down to 70, but still going to be standing. Still able to fight. Divide, the one disconnected off site. Unable to utilize the steel garden from this position. And now Francis and Ivy, one apiece. Francis being corralled from the side, but Ivy has the covering fire. Keeps the Euro in the mix. And he fights forward to find something. Paranoid now on to Divide. To his demise. Nongshim बोला है उसने होस्ट continuing to not allow for Paper Rex to ramp up, to get that momentum, that wind in their sails. मैच देखा हूँ इस टूर्नामेंट। And they're just so on point. Again, having that early info, having the TP बोला है to make उसने this होस्ट their के strong सामने side. आज खेलने The वाला था। patience, देखो give up a little bit of space. लीड ही नहीं मिली। You have so much of that Cypher util. क्यों ब्रेकिंग बैड मैच फिक्स है, ये मैच फिक्स है। And the how. They just can't fight forward. You can see some of the struggles here, never having played this map on a stage this year. Paper Rex just looking just enough off kilter. You have Envy's ult, you have Devi's ult. NRG को तो हल्का समझ। 3 big ones for Nongshim. इसको बताओ मोहित को बताओ मोहित को। मुझे तो पता है फिक्स नहीं है। ये IPL थोड़ी ना है यार, मैच फिक्स करके क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलता। Spot there for something, gets a tag at the very least. Puts RB. Yeah. और ये मान भी कैसे जाएंगे भाई, ये मान भी कैसे जाएंगे? Looking for answers. Now you're going to send in Forsaken to try to hold इतने down लोग mid. पैसा कौन दे रहा है? हाँ वही ना यार। और जब इतना पैसा देना ही है भाई, तो खिलाई ना दे इससे अच्छा। Forsaken outdone, caught completely by surprise. Meanwhile, Dambi, a clean one tap IPL to में मान find सकता हूँ something क्योंकि there in उन्हें पैसे window. पहले मिल जाते हैं।
And वो मैच Francis फिक्स मान is just सकते हैं. gone completely unnoted. They've इन्हें given पैसे up नहीं this मिले भाई space. पहले, इन्हें जीतने के बाद ही मिलेंगे. The Paper Rex are so frazzled, they're so scattered. समझ बात को. They just cannot keep track. Jing able to find the double pump. Francis dead, but now he is all alone. The dash forward, the saturate connecting as he slowly drips to his demise. भाई ये क्या खेल रहा है वेले यार? मैं कैसे नहीं खेल पाता हूँ ऐसा? क्या मारा वेले ने? ये मूवमेंट क्या दी उसने स्टन देने के बाद भाई? This entire series so far, and they are bleeding Paper Rex dry. It's just so difficult when you give up this much space and then you get the ping reveal. And Francis is in a perfect position to punish. Paper Rex pumps the brakes, pauses the time, and Alex is going to have to give one of his best yet. It's been great with the timeouts. I mean, often Paper Rex is coming out of them and either winning the follow-up round or winning the round after the eco if they're in one. There's a little bit of a look from Seoul, it looks like. That's Sam Ryan's. Yeah. That's an Itaewon. I know that place. I had a friend say, hey, you going to be at this thing? I was like, well, no. Because I'm going to be casting it. Let's take a look, though, at the Coinbase win condition. It's once again called ahead of a thrifty attempt for Paper Rex, which they've really only been able to get one off the ground. But compared to what we were seeing at the start of that corrode when they were running away with that opening half, everyone was firing on all cylinders, everyone was hitting their shots. Now it is very much scattered across the team. Who was able to do what? Forsaken himself, currently struggling to find that first kill. But it's the same thing we saw in Corrode, where your double duelists are having zero impact on your attacker's side. I mean, this is extremely concerning. It just has to turn around. What else can you say? It has to. Yeah. And here they go. Look at this. They're right in the mid. They know that this is a huge problem. So they commit a lot of resources, but so much patience. Francis, nice little how do you do? Outlaw looking for the follow-up shot. Pulls back around the corner, can get that reload across. Meanwhile, Devi tagged to 60 by RB in mid. It's away unscathed. Thrown over the top. Francis wanting that kill. Has the backpedal out. Zidane forward, unable to find the punish. Forward into the cage. The shorty drawn out. Francis able to find a third. Eventually, Will falls to saturate. Had connected. But that's it. Just the one. The one kill. The one round. All that Paper Rex have been able to get so far. And this time, Francis does not overheat. He plays it close to the vest. Goes for the wide swing there, but gets out of it after the first kill. And the change in position of the Cypher util shows me again that Nongshim's IGL RB is on point with reading this macro. He knows exactly what Paper Rex is thinking and what they want to do round over round. This has to be it for Paper Rex. They have to turn it right here, right now with these ults. Tammy's just taking space, but will get shut down. Jing just strafing into that smoke. It'll find, but Francis still finds the time to take out something. He's dialed in. He's feeling it on this map, that's for sure. One hell of a heater. जीतना तो चाहिए. Second now, able to find one. As he does fall, Envy similarly. Jing setting up that paranoia. But X-Ross just holds down M1. He anticipates his movements. And he finds him blind. The drone uncleared, Envy known. Frantically trying to sprint away, maybe a pump fake. But either way, Nongshim scaling in. जीतना तो चाहिए, लेकिन हारने का रीजन ये है कि बताया मैंने ऑलरेडी. एनएस के पास 3 मैच हैं. उसमें से उसे एक जीतना है. इनके पास कुछ भी नहीं है. डू और डाई है इनके पास. ये प्रेशर में ऑलरेडी हैं. और वो कॉन्फिडेंट है. तो वो तो खेल रहे हैं. Can he find that prowess? Can he find that clutch? Take the backside. Plant now to come through. Double approach from main. Recon shocks all available. Envy looking for the first, but he's the one eating the damage. Tucks back away from the recon. RB ready to swing, and Envy manages to strike. The regen shield pushing him back up, reinforcing his health.
but Extros has the turn, has the kill. But again, I mean, Envy tries his darndest, but you have so many ults in this round, and you don't use a single one as Paper Rex. It just feels like their mental's gone. It just feels like they're frazzled. They don't have answers. They don't know what to do on this map. You know, sometimes you could come through and surprise opponents, like we saw with T1 last year in Bangkok, but Paper Rex is not that team right now. No, they're not. So you can see the dismay of the fans. They want a series. They want to see Paper Rex be able to push this, to give them their money's worth, to give them some solid entertainment, stop this from being a 3-0 blowout. And it might very well come down to this right now. Coinbase win condition, the final timeout call on this map for Paper Rex and potentially of the entire tournament. Just don't know what else to say. They just look off today, and obviously part of that is because Nongshim, the way they play, is so explosive, so well structured, so well thought out. And so many individual players have just gone absolutely crazy for them. Huge moments. Exros again here in this grand finals. Doesn't look like a rookie at all. No. He looks like he belongs. He absolutely does. There's no doubt about that. Hardly was coming into this tournament, and he very quickly got brushed aside. 7-1-2 at the moment. Crowd will count us down. It's Paper Rex, another buy. 5 ultimates to try to utilize. Virgin Path's gonna be sent over towards tower. No one at home. Dash in, Forsaken, dead. RB finds him. That might have even been before the cam reveal. I think he just caught him. Clone gonna be found now. Backpedal Ivy frantically trying to get away, but Exros with that Hunter's Fury is able to find a second. Envy and Ching, both gone. Something doubles up the kills. Running just a one shot, but the spike still needs to be recovered. The drone to check forward, doesn't clear the corner. And it's just a hair off. He's just right above the head. Something cannot find Extros. He picks up another 3 kills, and RB has the finisher. And it looks like Paper Rex are completely out of gas, completely out of ideas, and completely out of hope. They're flattened. कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं Nothing होगा. left to say. Get better, get better. He just watches him go through, could just tell RB, yeah, he's going up ropes. And then the ping reveals there. Oh my God. What a catch for Exros. He's playing insane. He is, and Get better, he's gonna take everything. Get better. Just on the players now for Paper Rex. Finally gonna invest the Dimensional Drift here. Try to use it to get a Hunter's Fury to connect, but Tombi's just jumping around. Just cannot track him down. Looking for the exit and something. Fallen. Francis forward, finding Envy in window. Meanwhile, an exec attempt over on the A side of the map. But the Cypher util is here. The tripwires are still there, and so too is Ivy. Finds the first, gets the second. Extros in between. There's another flawless. What difficulty. Nongshim can do no wrong. And Paper Rex can do no good. NS अभी नहीं है और NS ने 4 सेकंड से बोल दिया था उसके मुंह पे कि तुमने मेरे जैसे अग्रेसिव टीम देखी नहीं होगी. The individuals for Nongshim are certainly at championship मतलब उससे यही level. बोला था कि हम There's a reason, folks, they haven't dropped a single series yet this year. पूरे VCT में. Well, they are running this royal road. And they look to be that first Ascension team to claim a championship. एक मैच या एक टूर्नामेंट जज नहीं so well on their way right now. Paper Rex doing a little bit of mid exploring, a scuffed by here, a hero rifle for Devai, a guardian for something, a couple sheriffs, Jing with the bandit. Jing's ult, the only one left here. You've cycled through them and you can't find a damn thing. Forsaken on this waylay.
Dashes in. Oh, what a read! What a read! क्या कर रहे हैं just drops down, finds a neural theft. Indy's position now noted. Just settling a 1-for-1. Convergent pass to the invested. Forsaken going to be caught by that one. Makes the corner out the safety, but X-Ross still is able to find something on the exit. And all the while, the spike has never gotten planted. As Defy completely surrounded. Falls to the wayside. 9-1. ना हो रहा भैया, ना हो रहा. They're better in every respect. They're so aware. Ivy here, just ready for that TP spot. Pings it as soon as he goes for it. Yep. Then they have all that आज लटक control, जाता है all that awareness off of the ult. They can वही तो कह रहा हूँ मैं. use the convergent pass. It hits Devi as well. They've got a player watching for something as he swings to go back towards the jump. It's just so good. The way that this team has been prepared is incredible, and you just have to tip your cap to their coaching staff. Right now, glass cannon 4-5. Fairly empty B site. The crunch attempt from Nongshim ends up being a misread. X, a window to get this spike planted. Pop flash going to be sent down. Ivy going to be taken down, and now suddenly Paper Rex looking decisive in this round. As X-Ross unable to find a follow-up, and that leaves just Dambi. 1v4, the opportunity to get the jump. Eventually won't find it. Divine from down below will keep Invi alive. It is a much needed round for Paper Rex, but the best they can hope for yet again is a 9-3 half. Yeah, this time their answer is to just remember that there isn't much paint left on those W keys on the keyboard. Let's put it to good use. Devi wins a big battle in mid there too, and then they just storm forward together. Again 9-3 होने वाला है शायद से. Tombi tries to find one, but not able to do it. Who's got some other good call here for Paper Rex? Just trying to sell a little bit of a fake towards B, it looks like. Here goes Forsaken. Barely able to escape. France is not going to be able to find a punish from this angle, and now suddenly Paper Rex continuing to start to find these reads. In the last 2 rounds, work their way forward into these emptier sites. B still here at tower. The Nongshim are very quick to rotate and get into position. Shock Dart just a hair off. That one will get a touch of damage on the Envy. Looks to try to zone them back. Paranoia at the ready. The wall going to be tripped. Devi getting the spot on a Francis. Quick little exit on that gate. Crashes Dambi. Diving forward. Landing right in behind Envy. It takes Ross to find 2, but Forsaken Devi, 1 apiece in response. 3v3 of the post plant. RB off to a wider angle. They're not spamming him. X-Ross on the counter spam has it! And they just hold the defuse! 10-2! Nongshim! They want this done! They want Paper Rex 6 feet under! There are no answers for this team right now. Hard to imagine that Paper Rex has anything left in the tank. They'll have to start from the pistol. We'll see if they can find it or if Nongshim continue to be excellent when we come back after halftime. देख ओमन दूर कितना बैठा हुआ है भाई स्पाइक से. Red Bull gives you wings. इसलिए साइड सब छोड़ के नहीं जाना चाहिए. नहीं जाते तो मार खाते भाई. En serio que son increíbles. Ha sido un evento único y maravilloso. Y por eso yo quiero que todo el mundo se ponga de pie por acá. Todo espacio riesgo, así no estén en cámara. Todo el mundo a ponerse de pie. अंदर वालों की लग जाती है. Santiago, ¿están listos? लग तो जाती है. Quiero escucharlo más fuerte. या तो सब्र हो या तो सब बाहर जाओ. Quiero que retumbe espacio riesgo. Todos juntos. ¡Ole, ole, ole, ole!
एक कमेंट कर रहा है कि एनएस स्मर्फिंग कर रहा है. स्मर्फिंग अलाउड नहीं है. It feels like right now, even if PaperX had all of the energy of this crowd within their 5 players on stage, it would still not be enough to dissuade, to push back, to stave off Nongshim Red Force. This has not been a display of peak Valorant between these two teams, but it has been a display of damn near perfection from Nongshim. Refuse to give any advantages to their opponents. Exactly. I mean, it just goes to show you that it's so much more than just Dombi. Yes, he's incredible. Yes, he is fearsome on a Neon, but now they're starting to win maps where they don't run the Neon, and it's the players behind him who are doing special things. X-Ross today, outrageously good. Electric. Just every time he sees Paper X players there, it's dead, and he's going for more, and he's getting multiples. Early grab of the orb there for Francis. Ivy. साथ में लेकिन जितना मारा क्लासिक मारा एकदम. Forsaken lurk. Crispy shot मारे. Might have missed the timing though. He'll be able to spot the head, finds the shot. Ivy now gone. Key advantage and a key pistol that Paper X cannot afford to lose. Dumping some flashes into the A site, trying to keep Paper X's interests tied over there. Meanwhile, Forsaken catching the rotations, so Paper X can begin their own. It's still here. Base now doubled up. Forsaken will be able to find another. क्यों breaking bad? तो मतलब मेरा title change कर सकता है क्या? Nongshim bringing the spike across, ready to get the plan, but Paper X are in pole position. The flood retake. तेरे पास option है करने का. Oh, Stamina now. Down. X-Ross able to find one. Continuing to try to do wonders here for the team. Finds the second. Looks for that third. He takes him so very low. But a couple kills elude him. And Paper X, they managed to persevere. But it was desperately needed. And a really good mid-round call here by Forsaken to gather the reinforcements, to catch that extra player. The early lurk, well timed. But this right here, they get some extra guns to deal with Francis. That gives them a huge 5v3 advantage, which they kind of ended up needing. Still some signs of life. The heartbeat is there. It feels like it's in fibrillation for Paper X. Nongshim wants to seemingly get pretty aggro right into this outlaw. मुझे पता है. अपनी Gmail ID भेजना ठीक है. First shot cannot connect with the second. Does back away. X-Ross. जिस ID से तू mod बना हुआ है ना उस ID से. Wall right around the corner. गरे वाला mod बना है. वही कह रहा हूँ Gmail तो तूने Gmail भेजना अपनी. Ivy would love to have Gmail भेज. देखो जिस ये वाली जो mod बना हुआ है. Devi might just be giving him that opportunity, and he has. Ivy has the नहीं kill. वाला नहीं बनाया भाई. The Spectre in hand. मैं जानता नहीं था भाई इन सब चीजों के बारे में ज़्यादा. It's still hovering around A main as Forsaken. He ends up getting red. मैंने अंशु को भी ऐसे बनाया जैसे तेरे को बनाया. Cleans him up with the classic. Suddenly Nongshim. The player advantage. The plant to come through. Francis potentially getting caught. Spot on the Jing. Looks over in towards the window. Something also there, but Ivy still fighting. That Spectre put to good use. Francis fighting his way out of a corner. Jing gone. And suddenly there is just nothing more for something to do. They will not give him the chance. They will not give him the opportunity. They will not give him the mercy. It's just relentless. There's no stopping them. They have every read right here. He checks below. I mean, their mental is incredible. The discipline that they are showing. Checking every twist and turn, every corner, every possibility. Again, the understanding of negative map space. It's the most casual fist bump between two coaches in a grand final that I have ever seen. How good this must feel for Silkanon.
after having to grind through Ascension 2 years in a row to get here. Sungmin joining with him. Yeoman as well, a former player, joins the staff, and they have just got these guys on another level, on another planet. Well, fracked out, Dambi not going to be suffering that much damage. She's down at 79. Is now the Hunter's Fury opened up. Forsaken eliminated RB's Hamper Divide with a nice shot. Will be able to find Ivy. Quick little pause. Not exactly where you wanted to go. But this ended up just being a brilliant fake. Either way, Dambi finding Envy, something gone. Divide eliminated. Jing, the last one standing, saturated, dead. Dambi has 3, and Nongshim have match point. Match point. They're indomitable. Absolutely indomitable. They do everything right, and all Alex can do is shake his head. He knows where this is at. Oh, Dambi. The pre-fire through the smoke even. Beautiful saturate once again. So good with those today. His waylay has been really impactful. He's baiting for his teammates, setting up big kills. Look at this. Everybody on Paper X looking for Ivy here. Literally everybody. Now something pulls, or excuse me, Forsaken pulls away. He's still going to be able to find one. Jing eventually putting him down, but not before also suffering heavy damage. Something now eliminated, and it feels like this series, this final is coming to an end. Francis takes out Devi. This is just Jing, now Forsaken, blinded up, hunted down, and killed. 13-3, 3-0. Paper Rex have gone extinct, fossilized, turning to oil beneath Nongshim's feet. From premiere to perfection. Unbelievable. The gods of chaos have new favored sons. W Gaming falls at the hands of Nongshim Red Force. Ascension to elation. They have done it. Unbelievable. And RB gets there. He gets a title after being on the Vision Strikers, on the DRX teams, spending years in China. Now he has a trophy of his own. The second for Paper Rex not to be found, not on this day. Perhaps in the future. They will walk past that trophy, but they will not be sated by it. Nongshim Red Force, undefeated throughout the year. The damn near perfect run, hardly ever dropping maps on this road. 4 rookies on the global stage, and RP as their guide. They are your Masters Santiago champions! 938 days since that man in the middle was on a global stage! And now he lifts the trophy aloft! It's just so impressive how deep this team actually is, how they've had to fight, how they've had to struggle to find their identity. And they leaned into what got them into Tier 1 in the first place. Dambi on the Neon, fantastic plays behind that. The coaches lifting the trophies, how great this must feel for them. The trials and tribulations, and the moment of triumph. 1 करोड़ रुपए जीते हैं भाई ये 1 करोड़ रुपए जीते हैं Ascension team to lift a global trophy. Our first Ascension team and our first Premier team. Something that we are not likely going to see for quite some time. But I would love to be proven wrong on that front. I hope that this run inspires those out there who have the drive, who have the confidence to believe in themselves to make it to an event like this, because it is possible. But what a feeling this must be to never have been able to square off against Paper Rex and to absolutely rinse them. Oh, they obliterated them.
This is a masterclass. And this is a team that you don't feel like is going anywhere anytime soon. It's not going to get any easier in stage 1. Nerf the neon if you want. I don't think it's going to do a damn thing. We know what Dambi's capable of on the Raze, on the Jet, on the Waylay as well. This is a squad to be feared. This is a squad to look forward to seeing at many more events in the future. It's still a ways away, but you have to assume that London is already on their minds. Oh, yes. 100% this team looks locked in, looks prepared. And just again, the depth is incredible. Well, let's send it to Melina and hear from Nongshim, our champions, in the Verizon post-match interview. La escuadra de Nongshim gana Korea gaya. This amazing 3-0 win. Congratulations to each one of you. But right now, I want to talk to Ivy first. So Ivy, if you can come up here, please, so we can talk. 네, 3대 0으로 우승을 차지한 농심 레드포스 축하드리고요. 먼저 아이비 선수 모셔서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. So Ivy, you're the first team ever coming from Premier, and now you went to that Ascension, qualified, and you won your first international event. How are you feeling right now? 농심이 이렇게 되면서 BCT 역사상 최초로 프리미어에서부터 시작해서 어센션을 거쳐서 마스터즈 우승까지 하게 된 팀인데요. 지금 기분이 어떤지부터 들어보고 싶네요. 일단 이제 프로게이머를 하기 전부터 꿈꿔왔던 이 세계대회 우승이라는 걸 해서 정말 기분이 좋습니다. It feels amazing because winning a trophy has been a dream of mine ever since, before playing pro. So to be able to do that, it feels amazing. Definitely feels amazing. Y hablando un poquito también de lo que fue para él la experiencia de llegar desde el Premier, ahora llegar a este stage y ganar su primer trofeo, sinceramente ha sido increíble. Siempre fue su sueño desde que ni siquiera era pro y realmente estar pudiendo lograr eso ha sido increíble. Ivy, thank you very much. 감사합니다. And now I want to talk to Dambi because we have heard a lot from him. Hemos escuchado mucho sobre Dambi y han estado todas las miradas encima de él, pero quiero saber también qué le permite, qué hace su equipo para que lo permitan brillar y simplemente ser increíble dentro de este team. Dambi, we already talked. All eyes are on you, but now you're in everybody's mouth. Everyone's so happy to see you succeed. I just want to know, what does your team make to make you shine like that? That way you're shining, you played so confident. 워낙 마스터즈 시작할 때부터 담비 선수의 네온이 팬분들의 관심을 많이 끌었는데 이제는 팬분들 모두가 농심이라는 팀 전체를 바라보면서 열광하고 계시거든요. 담비 선수를 이렇게 빛나게 해준 건 팀원들 없이는 불가능했을 텐데 팀원들의 어떤 노력이 있었기에 오늘 이렇게 빛날 수 있었을까요? 일단 오래 했기도 했고
ओह टाइटल चेंज कर दो क्या भाई? गर्मी नहीं लगती हेडफोन्स में? नहीं नहीं भाई नहीं, फैन चला रखा है भाई मैंने। चलो भाई सब हो गया। आई एम क्या होता है भाई? कोई मॉनिटर है क्या? उससे होता क्या है वैसे? चलो भाई सब हो गया, थंबनेल चेंज हो गया, सब कुछ कर दिया। लेट्स गो। एक डीएम हो जाए भाई। ये कौन सी आईडी खुली भाई?
इस आईडी को हटाओ, अपनी आईडी लॉगिन करो। तो तेरी की रानी तेरी। भाई रैंक क्या शुरू है? आई एम कवर्डली। भाई रैंक क्या शुरू है मतलब? कहना क्या चाहते हो आप? तेरा रैंक क्या है अभी? दिख रहा है भाई, डायमंड 140 RR, ये मेरा करंट है अभी। वो मैंने इसलिए तो लगा रखा है। ओके ओके, साथ में खेलोगे? आपकी रैंक क्या है? मैं असेंडेंट के नीचे नहीं खेलता भाई किसी के साथ में। ख्वाब बड़े हैं मेरे। Match found. अभी डायमंड है शायद का क्या मतलब है भैया? मतलब आपको नहीं पता क्या है? आप हाई रैंक के लग रहे हो। Death match. Warm up. बहुत दिन हुए खेले हुए। These parasites aren't going to take one step past this place. Fight! Time to mobilize my pack. पीसीटी देखा है भैया अभी, ओनली 1 टैप पड़ेंगे, देखो तुम अभी 1 टैप के नीचे कोई बात नहीं होगी। ओनली एक गोली, ओनली एक गोली भाई, जल्दी बोलो आ जाऊँ क्या? कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई अभी तो सोलो खेल रहा हूँ भाई मैं अभी, मना नहीं कर रहा, मतलब अभी सोलो क्यों कर रहा हूँ। अभी तुम पनवेल निकल जाओ, बाद में खेलते हैं अपन। No more Viper. ठीक है चलो। हाँ Finish. छी भाई हग्गू। वाओ वाओ क्राउचर, वाओ क्राउचर, वाओ क्राउचर। मच्छर काट रहे यार, उनका जुगाड़ करना पड़ेगा, रुक जा। Dominating.
यस यस, ये एक्ट खत्म हो रहा है 2 दिन में। सोच रहा हूँ एटलीस्ट डायमंड 2 तो हो ही जाऊँ मैं। ये देख बुड्ढे को देख, तू बुड्ढे को देख बस। Buried. One less. वाओ, नहीं वाओ यार। अबे यार रेस क्या कर रहा है भाई, ये कैसे लोग आते हैं इसमें? ये रेस भाग रहा है सिर्फ, देख। भागो भाई, तुम भाग ही लो। Ten kills remaining. गिराने तेरी झलक Fire is gone. Headshot. 5 kills remaining. Brimstone down. ए, कैसे खड़े हो जाते हैं भाई? अरे ऑफ चलाते हैं, थोड़ी अग्रेसिव तो आए कम से कम। One kill remaining. क्या है? रानी तेरी एक झलक से मैं पागल। चादर।
Match found. यार एक गोल्ड की नहीं मानेगा क्या साथ में आने को? I don't try. I do. मेरी केडी खराब हो गई यार. भाई डबल सेंटी क्यों? क्यों डबल सेंटी यार? क्यों डबल सेंटी? Wings! How are you, me fella? He has no idea. Reloading. तेज भाई हिल देना. तेज भाई हील. ए रुक जाओ. बी तेरी कसम के चादर. भाई इसने दोनों को अरे वन में किलो तू साथ में रहियो दोनों भाई. तुम दोनों साथ में रहना. इन बी. पता ही था ये होने वाला. Last player standing. दोनों लो हैं. लो से क्या होता है भाई? 3v2 था यार. पता नहीं क्या कर रहे हैं. 3v2 खेलना नहीं आता तुम्हें? कैसे खेलते 3v2? I can smoke the bomb. Doing a thing. ऐसे खेलते हैं 2v1. I'm nothing like the enemy clothes. I wouldn't be caught dead in that outfit. My ultimate is not ready. A multiple foots. A
अरे ऊपर है यार सेज बोल ना ऊपर Last player standing. सेज भाई ऊपर था माइक खोल के बता दो कुछ तो कर दो मार्क कर दो कुछ बोल दो कर दो Hey, manners. I'm sorry, Sage. She didn't. तो ये नहीं पता चल रहा कि ए पे कितने खेलते हैं बी कितने खेलते हैं भाई क्या उम्मीद कर रहे हो तुम गेम से अगेन ए Gonna fall back here. ऊपर है जेट ऊपर है जेट ऊपर है Down A. Spike planted. Right here. Right here. Message sent. Joke's over! You're dead! Stand down. नीचे जेट था कॉर्नर पे किसी ने बताया नहीं जेट यहाँ था यही है जेट One enemy remaining. 95 है गुड राउंड यार सेज किलो तूने कूदता हुआ देखा था जेट को यहाँ पे गिरा था जब वो ऊपर से They didn't actually think that. मार की तो नहीं किया वरना क्या को मरता क्यों यहाँ पे We will claw our way back up to the light. Here. Mid. Careful. Spike planted. चेंबर वाज mid चला गया चेंबर मेन से आएगा Enemy remaining. स्पाइक पे उसके पड़े होंगे Weapon choice, it is so personal, no? Have a drop. You pick a gun and Need a it tells drop. me who you are. Reloading. Thanks. You want to play? Let's play. अल्टे मेरे पास इधर आओ Enemy down. Spike planted. दोनों साइड है Your duty is not over. Oh, it's on now. Back in a flash. Slowing them down. Joke's over! Last player standing. It seems these strangers want me dead. Eh bien, they're not Reloading. first.
लोग कौन सी वेंड है? दियो दियो। क्रेजी गेम प्ले। नूब हूँ यार मैं। Don't miss it too much. क्या ही करता भाई, हमारे सेज ने घंटों लगा दिए भाई रिवाइव करने में, टाइम ही नहीं था इसका। मैं तो जाना ही था भाई मुझे तो। इन क्लोव इन Spike down B. One enemy remaining. That's right. You tell him. ऑप्शन ना था भाई हमारे पास। Could have a drop. That's true. Good advice. तेज भाई तुम्हें बॉल करके ना मेन देखना है। मैं जा सेज ने इतना मन बनाया ना भाई, जब तक हमारे 4 मर नहीं गए तब तक उसने मेरे को उठाया नहीं। उठा देता भाई जल्दी हो जाता सब कुछ, हम पर टाइम ही नहीं था, मुझे घुसना था। ए Be right back. One enemy remaining. Spike down A. One enemy remaining. मेन ऊपर आएगा वो। ऊपर गया ऊपर जो ऊपर गया ओके। Team A. नाइस। Unscathed. I'm delighted. Alright, lucky socks. Don't fail me now. No loose ends. Get out of my way! Slow down. हेवन ऊपर आ गए, नीचे भी आ गए। Back like I never left. Spike down A. Spike spotted A. Jet main है। Headshot. भाई सेज मार One enemy remaining. Shot. I got you. Not AFK. माइक है क्या उसके पास? 30 seconds left. माइक किधर है? Dizzy's up top. Somebody's there. If you must fall, then fall near me. लो वैंडल दियो अपनी यार, ये वाली ले ले। लग रहा है केजे अंट करेंगे ये बी पे। Let's see how it goes. Don't miss me. I have Refreshing. Spike planted. Get him, wingman. Last player standing.
Take aim, Zenfire. Let's not complicate it. Reload, have a drop. Thanks. ये कुछ कॉम्स मिलेंगे तो कुछ मैं खेलूंगा भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। Show yourself you can. क्या हो गया? थोड़ा आएगा, मैप देख ले थोड़ा सा। मैप तो दिख रहा है पर क्या करूं मैं? बोलती निकल नहीं रही तुम्हारी, मैं क्या करूं उसमें भाई? Doing a thing. Spike planted. Last player standing. You know the drill. Gear up and get back out there. I don't want any sass about it. Watch me. Here. Back in a flash. तीनों वही नहीं है भाई, तू आगे क्यों गया था? मुझे लगा एक ही बचा है। अरे मैं तो गया, मेरी गलती है क्या वो? तू मर गया तो। मैं पीक लेने आ गया ना कि तू भी खड़ा वहाँ। अरे ब्लाइंड में मार दिया भाई उनने। One enemy remaining. Here. टनल क्या है? रोप्स। No charges. Your duty is not over. Thank you, Sage. Planting B. अल्टे मेरे पर रुक जाओ। भाई 3v1 है, 3v1। TT मुश्किल मेरे पास। क्या एक के लिए तूने अल्ट यूज किया क्या को? सही करा है। Last round before the Need switch. a drop. Spend everything. Thanks. Don't be cheap. बाय मैं मंगले। भी खेल रहा हूँ। बाय मंगले। You want to play? Let's play. Right there. BA chamber. Joke's over! You're dead! Enemies are A. Right here. Right there. Be right back. Someone's there. One enemy remaining. इन्होंने मिड से सकता है इवेंट से। Don't worry, friends. It hurts, but I'm good. Switching sides. Reload. I know what must be done. Reloading. Reloading. अगर हुआ तो क्या? Reloading. Reloading.
मिड चलते हैं गाइस Reloading. ये भी कर सकते हैं Fight. No peeking. Gonna fall back here. No sweat. Reloading. पीछे 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 क्लोज पीछे For you. That's a spike. One enemy remaining. हेवन Spike planted. Thanks, Wings. Look at that. They lost again. Reloading. अब बी में डायरेक्ट चलते हैं More of the same. Yeah. Reloading. Reloading. I had the spike. Enemy Spike down B. Gonna fall back here. Yep. फ्लैंक जिस पे गन नहीं है मेरी स्टिंगर ले सकता है वो right here. Be at peace. One enemy remaining. Reloading. Jet, Reloading. Jet, you should know better. Reloading. I reckon I'll take a kip after this. I've earned it. तेज भाई शरीफ देना अपनी तेज तेज शरीफ देना शरीफ मैं कह रहा हूँ जो मेन में बंदा पिक करता है ना मुझे करने दो उसे मुझे मारने दो उसे Don't miss me too much. करूँ फ्लैश अबे वेले भाई Man's gonna plant spike. Stick down. Spike's ticking. Thanks, little man. Next. Hitting the brakes. Zero support भाई One enemy remaining. क्या कह रहा है Here. Blow him up. Last player standing. 80 80 One bullet per enemy. That should be enough, yes? Reloading. Spike. Spike. My ultimate is not ready. Reloading. Flash करूँगा रुक जा Doing a करने thing. दीजिए। Slow down. Right here. Wingman's planted. Reloading.
चलिए चल अरे आने देना वो सब आ रहे होंगे फ्लैंक One enemy remaining. ये भी फ्लैंक है भाई सारे फ्लैंक आए हैं My ult is ready. That's another dead one. Gun here. Don't be spending too many brain cells You're figuring them out. running Overthinking is just as bad as underthinking. Let's do what we do. Reloading. Dropping smoke. I'm gonna fall back here. Got the spike, Wings. So long. Spike's digging. Thanks, little man. Busy out of target. Joke's over. You're dead. दोनों सीटी One enemy remaining. It's a shame you had to die, but you are not part of my bigger picture. Match point. Time to say goodbye. Can someone get this? Thank you. Reloading. Ándale. You want to play? Let's play. Doing a thing. Nice and slow now. Last player standing. Last player standing. Spike down B. Flawless. Aye, where to? ऊपर से भी चलो ये बहुत तेज फ्लैंक आया है भाई दोबारा भी चलो ये चेंबर को मिड में छोड़ दो मुझे बाय दे Can someone buy me, please? They are so dead. Be right back. Spotted B. My turn. Slow that. I have the spike. My ultimate is ready. Spike down B. Your duty is not over. Last player standing. दोनों बी में One enemy remaining. ये भी वही है Hey, hey, stay focused. Those shits are trying to kill us. I'm saving. Reloading. One less. Back in a flash. We're done. One enemy remaining. GG. Wingman's gonna plant spike. Be right back. Attackers win. Line them up! I'm hitting brakes. क्या रानी तेरी एक झलक से मैं पागल तेरी एक झलक से मैं पागल
रानी तेरी चलने से मैं पागल Match found. ये रानी तेरी एक झलक से मैं पागल I don't try. I do. Sky, ever thought about making other summons? Like, lions. Or, oh, dragons. Tried once. It was not pretty. Chamber no trap. Spike drop. Dropping smokes. Back in a flash. Reloading. A spike carrier's down. Spike down A. Our spike carrier's done. I have the spike. Reload. He's very Last low, player standing. 122 तेरे पीछे से आ रहा है अरे अब बैठ चलूं एंटी बैन डबल डिंग आया यार You know what we should do? I'll tell you. We should win.
ये स्मोक थोड़ी सी इसलिए बेकार से है क्योंकि प्लांट करते हैं तो निकल के मार देता है, कोई हटते ही मार देता है, कोई कुछ होता है। वन वे अच्छे रहते हैं, कैसे करूं बता? वन वे ठीक रहते हैं, थोड़ी दिखता तो रहता है कम से कम कि हाँ कौन सामने आ रहा है क्या है। क्या स्मोक करूं बता फिर। ये होता है ना वन वे, इसके ऊपर एक होता है, इस बॉक्स के ऊपर एक होता है। No, not box, not above the box. On mark. These should be the same. ये दिया ये तो दिया था, प्लांट कर देता है वही तो मरा तो गया था और प्लांट कर रहा था कोई। अरे तो भाई और बताना फिर कैसे दूं, ये बता मेरे को। अरे मैंने तो बता दिया ना भाई। अब रुक जा अभी, अब क्या घुसना थोड़ी, रुक जा अभी, वेस्ट मत कर, घुस ही नहीं रहे अभी हम। Rise is low, 70 attack. Don't miss me too much. Last player standing. Outside of this gig, immortality doesn't have As many day-to-day benefits as you think. अपन भी ले सकते हैं ना, वाइजी तो है हम पे। एक बंदा लॉन्ग से जाओ, बाकी सब ऊपर। और Nice and slow. Back in a flash. Spike down B. Last player standing. find the weakest link and kick him in the shin. फास्ट रेड हो रहा है। Okay, start fresh. I have the spike. Last player standing. Spike down A. भाई इतना ऑब्वियस क्यों खेल रहे हैं भाई? हेलो, हम भी मार खाए, ये आ गए, ये मार खाएंगे, भी चले जाएंगे, तो इन्हें पता नहीं चलेगा ये सब चीज। फिर भी यार तू ये आना फिर। कौन? मैं तो भी पिछली बार भी गया था। Reloading. You better run. Reloading. Don't miss me too much. Smile. The hunt begins. Seek them out. Healing over here. Spike planted. Here. All three seated. बहुत 140 वाइस 140। Hawk out. One enemy remaining. वाइस 140। I think that's it.
is without a drop. They messed up. Now we keep them down. Thank you. डॉग करना है इसका यहाँ पे। हटना यार। Reloading. Time to hunt. Scout destroyed. Dropping stalks. Be right back. Like I never left. You're done. Slowing them down. They found my. Gonna fall back here. My ultimate is ready. एक बैकशॉट आ रहा है। Planted. Last player standing. One enemy remaining. पता नहीं कहाँ। ऑब्वियस स्ट्रैटेजी भाई, जब आपको पता है हर राउंड वो लोग नेड और रिकॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे बॉडी ब्लॉक क्यों कर रहे हो मेरे को? I feel something over there. Can't place it. Like us, but different. They are so dead. Who will I spot first? Slow down. Be right back. Line them up. I'm going in. Heal up, squad. Reloading. Look out. Blinded. Hawk out. ये वाल चेक कर लेना। No peeking. Nowhere to run. There's that. Yep. दोनों पीछे Doing थे। a thing. I'm out. One enemy remaining. Reloading. The hunt's over. Oh, this reminds me of this one time where I फिर रानी तेरी कुछ किसी ना पाए। Need a drop. reloading. My ultimate is not ready. Sky buy कर दो। Thanks. I love this part. Gonna fall back here. Reloading. Hawk out. Slowing them down. God, you're fun. Reloading. My turn. हिल देना उसका। Right here. Hawk out. Blocking sight. Adapt or die. Spike planted. One down. Enemy spotted A. One enemy remaining. Enemy spotted A. It's the last of them. Reloading. Getting tired is optional. Keep the energy up.
Don't go with the Bailey. Doing a thing. Dropping smoke. Hitting the brakes. Behind side. Spike planted. Reloading. Don't be. Next. One enemy remaining. Got 3. Don't miss me too much. Flawless. Reloading. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. In we go. Reloading. सारे पड़े हुए ले सकता है. Hawk out. Hitting the brakes. Doing a thing. Blocking sight. Spike down A. I have the spike. Spike planted. 7 acre. One enemy remaining. That's 3. My ult is ready. Nice. Outrun me. These guns we use are okay, I'm gonna but I save will it, also Tom. bring my own. No offense. फैंटम देना अपनी देना है भैया. मुझे लगा फेंक दिया मैंने. क्यों तेरा स्मोक अभी हो गया है, मतलब 6 सेकंड का, कि अभी होना है अपडेट के बाद? 6 सेकंड का थोड़ी है भाई. अरे मरने के बाद For a draw. जो स्मोक देता है तो वो 6 सेकंड का हो गया ना. हाँ वो नहीं 18 तारीख को होगा. I got drop. उल्टा भाई इधर आ गया. Slow down. Fall back here. मेरे को ही कर दिया तूने. Hawk out. Your fault. One down. My ult's ready. Line him out. I'm going in. One enemy remaining. 78. Here, an appetite on that one. Last round in the half. दे दो भैया किलो If you're भैया not spending फैंटम your दे दो. cash, at least buy me something fancy. Gun here. Gun here. अच्छा. Here. What did I end the last round? रिजल्ट कर. They are so dead. Bonne chance, mes amis. The hunt begins. Spike drop. I have the spike. I Spike got drop. spike. On my mark. Back nice and slow down. Fire in the hole. You want? No charges left. Blinded. Here. Enemy A.
One enemy remaining. Heaven. Bye. Push one. कितना दिया उसको 140? नहीं मेरा कोई डैमेज नहीं है. Last player standing. Like I never left. Switching sides. पहला वाला तोड़ देगा पूरी दिन. We get a pick. We move on. पहला तूने जानबूझ के किया, उसमें तेरी गलती नहीं है ना किलो? और क्या? इंस्टेंट स्मोक देना किलो बॉक्स के ऊपर वन वे दे रहा हूं. इंस्टेंट जरा ऐसा देना मैं नीचे से उसमें बन जाऊं भाई, ऐसा नहीं कि दिखूं मैं. हाँ Get on with it. A girl out, would you? Jump in a spoon. Doing a thing. Too slow. अरे 121 रेस कैसे हो सकता है? 121 रेस. एक टीबी. 121 रेस है भाई. There they are. 121. One enemy remaining. गार्ड पड़ गई इसकी. Spike down B. Team Ace. शॉट भाई. लगी नहीं. किलो तूने कैसा स्मोक दिया यार? मैं उसमें बन नहीं रहा, बाहर दिख गया उनको यार. मैं Everyone good? Take a second. उसने मेरे को टैग कर दिया भाई उसमें. जाना जल्दी था तेरे को. चल. अरे मैं जल्दी ही गया था, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा उसके अंदर. मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? पीछे जा रहा हूँ. मैं जा भी रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा भाई. कि मैं बॉडी ब्लॉक हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा था. तब भी मैंने क्लोव को मारा और रेस को 121 है यार. क्या है मारा 121 में नहीं मरा वो. Oh shit! I lost my pet rock. थोड़ी बाहर को साइड देना, थोड़ी बाहर थोड़ी जगह हो उसमें. No peeking. अब तो पकड़ लेंगे. Be right back. I have them. मत दे भाई, उससे समझ गए वो. Blocking sight. 60 किलो है वैसे. Hawk out. और वेंचर तेरी है क्या ये? शॉट में एक बैक साइड. हाँ जज तो मेरी है. सिटी. One enemy remaining. Pushing CT. Spike down B. ये बढ़िया. शॉट गन है. नाइस. मेरी ही शॉट गन है वो, मेरी ही शॉट गन है भैया. गुड बॉय. Take a minute. Focus on your breathing. Helps with your aim. कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू स्मोक में. मेरे से पहले वो कैसे आ जा रहा है? मैं वहीं बैठा हूँ, वो पहले आ जा रहे हैं स्मोक में. अब तो पता ही है वैसा ना. हाँ अब तो कह जाऊंगा ही नहीं. लेकिन भाई मैं वैसे ही जाता हूँ यार ऊपर. जब भी जाता पता मैं नीचे से जाके ऊपर बैठने का ट्राई कर रहा था वो फर्स्ट राउंड में, पर वो हुआ ही नहीं. I'm here to stay. आ गए. Slowing them down. No peeking. ऐसा हाथ बुरा मारा यार मेरे को तो.
planted. I don't think so. Last एक player नीचे ही है standing. सैम, इधर कूदा एक नीचे तेरे जस्ट नीचे. So close. My ult is ready. Teleport's ready. बोला ना, मैंने बोला नीचे मार्क लगाया ना, कूदा था इसके ऊपर चढ़ा हुआ था वो, देख यहाँ पे, और नीचे कूदा उसके साउंड आया था. काट गया बेंच. मैं ना सहता भाई. भाई क्या नो वो तुम रिवील तोड़ो मैं और हर बार बस एक ही एंगल क्यों ऑफ एंगल पकड़ो. भाई जज है, रिवील मेरी जिम्मेदारी तोड़ने की है भाई. मैं यहाँ मुड़ूँ या मैं क्लोज में बैठा हूँ तो मैं उधर रिवील थोड़ी ना तोड़ूंगा, अपनी इन्फो थोड़ी ना बताऊंगा उन्हें. हमारे टीममेट नहीं तोड़ पा रहे यार, मैं क्या करूँ उसमें. और जज से ऑफ एंगल कैसा होता है यार. Back in a flash. Bye bye. Too bad. क्या कवर Don't दिया? miss me too much. फ्लैश देके मार दिया. No peeking. Spike planted. और मार दे. One enemy remaining. Last player standing. Teleport's ready. नाइस. बढ़िया लौंडे. जिम्मेदारी का नहीं होता है भाई. तुम प्रो प्ले नहीं खेले कॉम्प है, किसी की भी इतनी सिनर्जी नहीं है कि वो अपने आप समझ के रिवील तोड़े. बात तो सही कह रहा है, लेकिन तू समझ तो सही, मेरे को भी तो समझ एक बार कि मैं वहाँ बैठा क्लोज में बैठा हूँ, मैं जज लेके एक आध पिक निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, और मैं 2 ही राउंड मैंने किया है वैसा. पर मैं अगर वहाँ से अगर रिवील तोड़ूंगा तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि मैं वहाँ बैठा हूँ. ऑलरेडी वो ड्रोन कर रहा है. हाँ तो थर्ड टाइम बैठा था वहाँ, तू लगातार ऑफिस है. हाँ, बैठा भाई, थर्ड टाइम हो गया भाई, तो हो गया, क्या दिक्कत है. My ultimate is ready. हो जाता है भाई. लो आएगा, अल्ट करूँ, आजा अंदर. इको आऊंगा. क्या हुआ, राउंड मिल जाएगा. इधर इधर होगी खाली, ऐसे ऐसे पूरा आपका कवर भी नहीं हुआ. रोटेट किया. दिक्कत कुछ नहीं, बस रैंक अप नहीं होगा. ये शॉट देगी. अरे हो जाएगा भाई. रिवील में तोड़ देता हूँ, मेरे पावर कोई गन होती फैंटम तोड़ देता मैं. अरे समझ साइड के अंदर. और रिवील तो ठीक है, उसने फ्लैश भी किया था और फ्लैश लगाया भी था मेरे सामने. Be right back. Spike planted. Later. Enemy kill. Slowing them down. कर दूं अल्ट. Line them up. I'm going in. ये कुक्का है. Reloading. स्मोक में मेरे मार दे. Yeah. 3 सेकंड. Nowhere to run. One enemy remaining. कर दे डिफ कर दे. Come over like that. Think you're some kind of hot shot. बढ़िया रहा. Maybe let's kill them before they plant next time, okay? My ult is ready. Listen up, you lads. If I don't get back up, just give me a nudge. I might not be dead, just taking a wee Will you nap. drop them? अब अच्छा खेला, अब अच्छा खेला. रिजल्ट करेगा शायद अभी. The hunt begins. No peeking. Gonna fall back here.
like I never left. Later. Nice and slow now. Spike down A. Spike planted. Stomachs away. Look at that. You had your fun. My turn. Last player standing. I love this gun. बोला आठ लगता. Anti. These new friends of ours are not too friendly. I'm gonna save. I have extra money if anyone needs. Make me proud. Watch this. ये पर Nice. Spike down B. Enemy B. They found my trap. Hi. Bye. Enemy spotted B. Gonna fall back here. One enemy remaining. Thrifty. What the fuck? Make a sense. I'm kidding. Match point. This has gone on long enough, I think. Show yourself you can. One showers. Drop in a smoke. Be right back. Watching this. Nail. 90 on Vice. Spike planted. पीछे क्या जाएगा कोई? Really, there is a gun inside. Close. One enemy remaining. Choco. No fireworks today, I'm afraid. Defenders win. It has been a pleasure, my friend. Au revoir. अरे easy है भाई, easy. I am cowardly भाई, easy है भाई, easy है. एक दो गलती सब करते हैं भाई, कोई ना. One of my camera. ये आया था क्या पिछले मैच में? कर रहा हो हेलो भाई, कौन कौन दिख रहा है? हेलो लिख दो एक बार. ब्रेकिंग बैड देख रहे होगे तुम? Match found. हेलो हेलो, ब्रेकिंग बैड.
रोहित भाई कैसे हो? चैट करो यार, तुम लोग ऐसे सन्नाटे ऐसे क्यों दिखते हो भाई? एकदम सन्नाटा है चैट पे। भाई देखना, अभी हम जीते हैं ना, सामने एक असेंडेंट का बंदा आया था, हम जीते हैं, तो अभी फिर से इस बार क्या पता सारे डायमंड 3 एक असेंडेंट का बंदा आ जाए। I don't try. I do. यही है वैलोरेंट की मैचिंग। जो जीतता है उसको उसके प्लेयर गिराता है, उसकी रैंक गिराता है उन प्लेयरों की, और सामने वाले की बढ़ाता है। टिकटर ले सकते हो P1 P1 Match found. I don't try. I do. चादर कि तेरी यानी तेरी पागल। If you die today, I will remember you forever. It has been an honor. One shot, Evan. Time to jump. 900 on chamber. Idiot. Chamber 100. Cover going out. Last player standing.
We show up now, we live later. Reloading. Can't even remember the spike. Cutting through. I will rip the light from them. Bang, bang. Be right back. पेक मत करना यूरो क्रॉस में बैठा मैं बैठा हूँ मार्च लेके बैठा हूँ नाइस वन हेवन है ऊपर है किल करो भाई ना 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 One enemy remaining. That's a dumb way to die. शॉट्स वेले तो ये रेना को तो उड़ते हुए मारा भाई जंप पीक ले रहा था भाई उसमें उड़ते हुए मारा उसको तो हाँ वो देखा मैंने और रोहित भाई आपने वो शॉट देखा रेना वाला आ जाओ Time to jump. Lights out. Blinding. Slow down. Back in a flash. Don't be. Shadows traveling. जा वेले स्मोक में बैठ जा Reloading. One enemy remaining. जज ही है क्लोज मत जा सेज जज है उस कर्रेंसी क्या नाइस हां पीछे फैंटम बढ़िया है चैम्बर क्लिक मारा उसको तो मैंने One step closer. Shadows traveling. Cover going out. Time to jump. अबे फ्लैश फ्लैश मिल जाएंगे भाई टी चलो बैठ साथ में Spike down B. I have the spike. बाहर टिपी कर ले बाहर टिपी कर ले Last player standing. टाइमिंग बाहर टिपी करने को बोला तो सही मैंने बहुत जोश तो आ रहे मैं तुमसे One enemy remaining. अरे बहनचोद मुंह तो बंद कर लो लौड़ो मरने के बाद No one's gonna give you what you want. Work for it. बाय मांग ओमेन I need this. जाओ नहीं देता Thank you. ब्रा इधर पीक ले लो भाई कोई पीक लो यार मैं मर जाता हूँ यार पीक लेने में Cutting through. Gonna fall back here. Slow. Bye bye. अबे उन्हें सपोर्ट मिल रहा है भाई क्या कर रहे हो तुम नाइस अपन दोनों के अलावा कोई अंदर नहीं अब क्या करूं देख अरे तो ऐसे ऐसे करा दो भाई मैं नहीं जा रहा एंट्री हो गई एंट्री
करनी ही नहीं है, एंट्री आना ही नहीं है साथ में। Last player standing. Teleport's ready. I have the spike. एटलीस्ट ट्रेड तो ले लो यार, मेरे को उनको वो सपोर्ट दे रहे हैं। मैं रेना के पास गया, पीछे से मेरे को मार दिया किसी ने। आ रहा भाई, मैं आ रहा तेरे को सपोर्ट देने को। कहाँ है तू? एक तो इन्फो कुछ नहीं, पीक का कुछ पता नहीं चल रहा, फ्लैश भी नहीं आई, कैसे पीक ले हम? Show yourself, you can. अब एंट्री लो जब स्पाइक नहीं है, बहुत बढ़िया। Enemy B. Enemy B. Gonna fall back here. Too bad. Nice, entry है boss. Trap destroyed. I'm a good shot. Accept. Last player standing. 40 dink यार. Face your fear. I'll handle this. I'm back. Spike planted. अब तो मैंने सब सपोर्ट दिया है, अब क्या हो गया? Everyone having fun? If you're not, सेज यार आपकी वॉल कब यूज आएगी यार? हेलो करो ना एक साइड भाई, कहीं तो ब्लॉक कर दो कुछ। एटलीस्ट हम इन्फो नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ तो करो भाई, कुछ तो यहाँ करो। पर स्लो डाला कर और वॉल बना दिया कर ऐसे। पता नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। वो मेन पे ही खड़े रहते भाई, उन्हें पता है नहीं नहीं है, इन्फो के लिए कुछ है नहीं। फ्लैश करते हो मैंने। पता नहीं। doing his thing. Shadows traveling. Back off. Your duty is not over. Let go for a second. You're done. One enemy remaining. अरे ऐसे आओ ना सब भाई, कैसे नहीं होगी एंट्री? यही तो चाह रहा मैं जब से, यही कहना चाह रहा भाई। लेकिन मैं तो एंटर हुआ ही नहीं। तू वापस मिड में जा सकता है। ठीक है। हाँ तो एंटर नहीं हुआ, बहुत प्राउड की बात है यार, बहुत अच्छी बात है। वही तो क्रेजी हो गया। You want to play? Let's play. Safe है भाई। He's out of the tournament. I got the spike. Cutting through. अबे! Enemy spotted mid. Last player standing. Spike down mid. नाइस एंट्री। W को राउंड लग गया। If you are not कोई doing ना, well, मिड फिर से keep आ trying. सकते हैं। We must keep up appearances. मिड का कॉल तो मुझे दिया था ना। अरे तो कोई ना भाई, एंट्री मिड हम प्लांट मिड में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Does anyone have fun? जो मार्शल चिपकाया है ना भाई बेली ने, भाई क्या चिपकाया है भाई। 4 मार दिए, पता नहीं 3 मार दिए।
thing. You had your fun. Spike down mid. पीछे भागो. Next. Slowing them down. Line them up. I'm going in. Uh-huh. I have the spike. Last player अबे standing. Spike planted. Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. Does anyone have funds? Don't have the spike. ट्रैप नहीं है. बता भाई क्या करना है. The fun begins. I have the spike. Face your fear. Last player standing. Even with numbers, anything can still happen. Remember. Does anyone have funds? वो तो है ही ओमन भैया. एजेंट लॉक करते भाई टाइम कोई सोचना रिवील पड़ता तोड़ो है. ना उसका. रिवील तोड़ो ना. यहाँ का मेन का रिवील. Time to jump. Don't miss me too much. Enemy spotted A. Spike down A. Last player standing. Last round before the switch. If you're not spending your cash, at least buy me something fancy. Can't even remember the spike. Spike's here. Forward. Be right back. देना. Need Your healing. duty is not over. Need healing. Oh, carrier dead. I got the Spike down B. Backstab behind. Cutting through. Last Spike is player down. standing. Spike found my down trap. B. Excusez-moi. Teleport's ready. अरे लौड़ा 140 था वो बहनचोद में बॉडी शॉट क्यों नहीं मारा? Switching sides.
भाई इनिशिएटर के बिना डायमंड लोई में तो भाई जीजी तो है ही है। Stay focused. ऊपर से एम प्लस एजेंट वो उसको एजेंट तो ओपन भाई। में रिवाइव कर रहा है बिना स्मोक बिना किसी, वो दोनों को फुल डाइट में मारे, और क्या कवर मतलब। भी नहीं दिया, कवर दिया और खुद आ गया सामने भाई, उसके मर गया भाई स्प्रे में। इतना बड़ा चूतिया है वो, यहाँ मरा ओमेन उसकी गन उठा रहा है और उससे प्राउलर खा रहा है, अपनी गन से उसने प्राउलर भी नहीं तोड़ा, इतना बड़ा चूतिया है वो सेज भाई अगर चूतिया। आप ऑल्ट मिड आईडी से भी प्राउलर में खेल रहे हो उसकी ना गन अपनी, उठा रहा है। अगर आप ऑल्ट चलो आईडी ये से भी वाला खेल रहे हो राउंड ना निकालना है अपनी ट्राई सेज करते भाई, तो आप ब्रेंडेड मेन में भी हो और यहाँ पे भी हो, ठीक है। आप ऐसे ही खेलते होगे, उसमें भी कोई ना कोई कैरी करता होगा आपको पक्का। Enemy spotted A. ये चेंबर मिड से आ रहा होगा, केयर करना। Spike down A. Back in a flash. 55 लिंक चेंबर इजी। One enemy remaining. मिड पे 8 55 है भाई। Player standing. Cutting through. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. My ultimate is not ready. ये रू पता डायमंड 3 है ये, डायमंड 3 मतलब मेरा सपना है भाई डायमंड जाते 3 भाई, आना। हमारे इसमें भी एक ऐसे खेलता है सेम सेम। They get cocky. कुछ लोग बोलते हैं मॉडल We में भी get भाई better. ब्लेंडेड होते हैं भाई, पता नहीं कैसे होते होंगे, पता नहीं, तो जाके ही पता चलेगा। Enemy spotted A. Red. भाई उसने मेरे ऊपर विफी नहीं किया भाई, मतलब मेरे ऊपर विफी नहीं किया उसने, और सेज पे भाई विफ कर दिया, क्रेजी। प्लांटिंग इसी दिन के लिए तो भाई मैं बड़ा हुआ हूँ भाई, ये देखने के लिए तो। राइट साइड ही होगा। One enemy remaining. Shadows traveling. लाउडे For you. अरे दीवार में घुस क्या गया मैं। पीकता चैम्बर, ऑब्वियसली डायमंड 3 है भाई वो, डायमंड 2 1.25 की केडी के साथ है 98 लेवल पे भाई। मेरा 98 लेवल मेरी अल्ट आईडी में होने वाली है, प्लेट नहीं हो पाया मैं, वो डायमंड 2 है, वो ले गई ना वो तो पीक ऐसी। My और ultimate हमारा is सेज not देखो ready. 1.17 की केडी है, मतलब अच्छा है, डायमंड 3 का प्लेयर है। और ले देख कैसा बाकी है, बाकी चला के बंड है मेरे भाई, से बंड, सिर्फ ले ले, बाय मत कर। बंड है ये, डिफरेंस तो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। Here. Gun here. 140 रे ना। हेल्प। अरे बड़वा, एक क्लोज है। भाई ओमेन। Spike planted. 101 क्लोव ओवरहील्ड होगी। One enemy remaining. और राउंड है। Wasn't worried for a second. I survived obliteration. I will survive them. बाकी जो मैंने रेना का वो शॉट मारा था जो वो फर्स्ट राउंड में, कैसा था वो सैरिफ से? Bonne chance, mes amis.
और डायमंड 3 का ओके, ना कोई कॉल ना कोई कॉन्स, कुछ भी नहीं। Wall raised. अरे एंटरिंग भी नहीं करेंगे वो एंट्री अब। नहीं होगा एंटर। ट्रैप है मेरा भी फिजिकल। एंटरिंग। Doing a thing. One enemy remaining. नाइस वन। लिंक पे हुआ, लिंक पे हुआ। Glitter. Slow down. I am not cleaning this up. Spike is A. My burden Does anyone have guns? Merci. विसिटी शॉट था वो। अच्छा हाँ भाई, ऐसे मैं मार देता हूँ ऐसे, हल्के पतले शॉट में मार देता हूँ। I need a drop. Again, Barrier created. help, help. I got mine. Spike down B. योरू मार रहा है हमारा। Spike planted. Enemy spotted B. Be right back. One enemy remaining. अरे किल तो मत छोड़ा यार मेरे। My turn. अरे मारने तो एम तो करने देता है, अब स्टन दे के बाद एम तो करने दे। अरे तो क्या खेलू ही नहीं क्या राउंड में, पागल है। अरे तूने मार दिया, अब कितना मारेगा, 18 तो मार दिए। मैं इस लॉबी का You clean up whatever's left. तू प्रो है भाई, कैरी कर रहा है। लक नहीं था, मैं ऐसे मार देता हूँ। कोई ascendant 3 तो नहीं। My ultimate is not ready. ओमन भैया हमारे मॉडल पीक है भाई। नहीं कोई ascendant 3 करंट तो नहीं। नहीं भैया नहीं। You want to play? Let's play. Face your fear. कुछ है रानी तेरी एक झलक से मैं पागल। इधर है, इधर है, इधर है। भी हो सकता है, भी हो सकता है। ये मेन है भाई, ये और दे रहा है एक। Back in a flash. B. One enemy remaining. एक ट्रैप छोड़ा था। भाई क्या मारा इसने, oh my god। You all feeling good? पीछे से 140 मार पाया बस, 145। रोहित भाई तुमने ये देखा क्या हुआ, ये क्या फटका दिया उसने पीछे से मेरे को। Back at it. Mid देखना चाहिए। इको अंदर लगता है। मिड से भी आएंगे ऐसे। Spike planted. Here. Enemy spotted. Last player standing. I'm
back. सेव कर ले। डिस्टेंस था भाई इसलिए बच गया। Die. नहीं जी मेरे को खेलने दो जीतेगा। Pick something nice to kill them with. It's the least we can do. Does anyone have funds? I need a drop. Thanks. They are so dead. Jump them. वैसे तो बी होगा गाइस, ध्यान रखना। Again. 1 by 1. Line them up. I'm going in. Gonna fall back here. Stealing sight. Hey, elbow, close. Spike down A. Last player standing. Diga. Spike planted. I feel the strain. Block it out, Omen. I need a drop. Can someone get this? Make me proud. Again mid. अरे भाई मत कर। Sorry. Your duty is not over. अबे सब मेन पे आ गए लंड। There they are. पीछा जा। Nice and slow now. One less. Back in a flash. Enemy A. One enemy remaining. Spike down A. Okay, quick break. Reloading. Spike spotted A. Prepare yourselves. We fight once again. मैं भी खेल रहा। Hitting when they're not looking. The hunt begins. Hitting the brain. Face your fear! Nice one. Hold करना है क्या मेरे को? 140 चेंबर 140 Wait. 140 है चेंबर। One enemy remaining. Last player standing. Spike down A. Nice. Teleport's ready. Let us see what they have planned. चैम्प फैंटम दिए हुए। कोई मार तो रहे हैं मेरे बंदे, तगड़ा मारते हैं। फैंटम है क्या? Does anyone have funds? I need a drop. Thanks.
भाई स्मोक मत करना मेन। ठीक है सिविल तोड़ देना ओए रू। तू हट जा चल। करूँ से स्मोक करूँ तेरे पे स्मोक। इको है भाई उनका। चेम्बर मिड से आ सकते हैं देख। Be right back. Reloading. Enemies. भाग गए, इधर ही आ रहे हैं चैम्बर, ए पे ही आ रहे हैं, चैम्बर ए पे ही आ रहा है भाई, भाग गए वो। अरे बी होता लौड़े वो। हाँ सॉरी बी बोलना था यार, गलती हुई। Trap destroyed. Last player standing. Spike down B. Teleport's ready. Spike planted. Too slow. Thrifty. लैंड 110 मारा। Match भाई point. उनकी इकोनॉमी Time to डैमेज। stock back up. अरे हमारा एक बंदा मर जाता है भाई, दूसरे से होल्ड चढ़ जाते हो दूसरे के 5 एक के ऊपर। भाई यार क्या कर रहा है सेज? One enemy remaining. Spike down A. Even death cannot stop. Overtime. Switching sides. You know the drill. Gear up and get back out there. I don't want any sass about it. भाई साथ में घुसते हैं। I need a drop. Does anyone have funds? I need a drop. Does anyone have funds? एंट्री लेनी है क्या चैम्बर भाई? I need a drop. मिड में ही चलना है, बता दो जल्दी। लेते ना एंट्री डिप चेक बुया। स्पाइक तो लिया नहीं, चलो डब्ल्यू एंट्री। Focus now. Eyes open. Shadows traveling. Enemy B. Slow down. ना पड़ेगा देखो साथ। अरे Spike down B. I have the spike. नाइस डुएबल। Last player standing. एक और है, देना भी है बैक ऑफ साइड। मतलब उनके सारे ही बंदे हैं भाई यहीं पे, कोई बचा ही नहीं, सभी तो हैं। Matching sides. ये वॉल कर देना ब्रो, ये राइट साइड वॉल कर दे या तो। Take a minute. Focus on your breathing. Helps with your aim. क्या वॉल कर। हाँ वही ना, वॉल भी करता है और बंदे मार के चले भी जाते हैं भाई सेज को। बी 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 बी। Don't miss me too I got mine. एक लेफ्ट में बैठा है। अरे आदर। एक और साइड पे Spike down B. भाई थ्रो नहीं चल। One enemy remaining. Nice and slow down. मेन गया चिल। ADS मत खोल, सेज मरेगा। चूतिया ए में तेरा। Player standing.
Switching sides. Overtime. Please do not mistake my smile. I take this all very Never seriously. I need a drop. या तो तुम लोग बी पे होल्ड करो, मैं फेक करता हूँ ये पे। अरे सेज लो रैंक के अकाउंट से खेला कर भाई, दूसरे के मैच खराब ना होता कि। भाई इधर 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 हाइड हो जाओ, इधर हाइड हो जाओ, रिवील मत होना। I need a drop. Enemy A. मैंने फेक कर दिया वैसे। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। Don't miss me too much. Time to jump. Decoy. Slowing them down. Cover going out. You're done. Nice. China hold गई, China hold। Be right back. तो मेरी पोजीशन। CT होगा One अगर enemy क्या। remaining. CT है। फ्लैंक केयर। टैप नहीं था। नहीं मैं तो खाना लौड़े फ्लैंक से। नाइस गाइस। Matching sides. I need a drop. गाइस मैं ये पे ऑफ करता हूँ। Does anyone have funds? I need a drop. ड्रॉप दे दो बॉयज। Thanks. 40 का ही ड्रॉप मांग रहा है। ड्रॉप 40। Merci. As one. तेज मत वॉल करना ब्रो। अरे Doing a thing. Cutting. दो आ रहा है यहाँ से। One enemy remaining. नाइस। W थोड़ा मत कर। नाइस। Defenders win. तेज अपनी माँ चुदवा ले जाके कोठे पे बोल, ठीक है? माँ का चूत। अरे चल रंडी के बच्चे गांडू। भाई सेज ने पूरे मैच माइक नहीं खोला और गाली देने के लिए माइक खोल दिया यार, क्रेजी। अभी मैं डेथ मैच कर रहा था, ठीक है? हाँ 4 बंदे आए। एनीवन अवेलेबल करके भाई एक बंदे को लेके भाई पूरा लॉबी खाली होगी भाई ऐसे करके, तो भाई 5 बंदे एक साथ वो हुए। क्या हो बताओ जाती भाई। है डेथ मैच में, तो हो जाता है सब। चलो करो। रैंक अप है भैया, रैंक अप है मेरा। NT3 पे हूँ मैं। अब तू लॉबी देख जाके कैसी आती लॉबी। तू कहता है ना मेरा हमारा खराब, मेरा नहीं है। मैं थोड़ी बोल रहा, वो टाइमिंग का वो था ना, तो वो बोल रहा था मैं। असेंडेंट डायमंड 3 ऐसे बंदे आते हैं। अभी तू आएगा तो गोल्ड टू गोल्ड 3 ऐसे बंदे आएंगे। चलो लेट्स सी देखते हैं ना। तू खेलता भी है तब भी पता नहीं क्या दिक्कत है। कोई ना, मतलब अच्छे बंदे का तो Match बोल नहीं सकता, found. रैंक का बोल रहा हूँ बस मैं। हाँ रैंक ही मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ देखो टाइम नहीं आना चाहिए वैसे तो। हाँ डायमंड और प्लेट के बंदे ही है भाई। प्लेट मतलब मैं अकेला हूँ। तू अकेला नहीं है, 2 और है प्लेट के और 2 डायमंड के। तेरा ट्रैकर गलत बता रहा है क्या? I don't try. क्या I do. अरे ओ भाई अभी होगा कंपटीशन। ये 18 को आने वाला है शायद से ना। हाँ पता है क्या कुछ? हाँ 18 को आएगा। है अच्छा है, एजेंट अच्छा है, गेको की तरह है एकदम भाई। उसके हाथ वाथ गेको की तरह दिखते हैं। हाँ मैं तो भाई थंबनेल रेडी कर दूंगा पूरा, ऐसा आते ही खेलूंगा भाई। तो क्या मिल जाएगी क्या इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगी उसकी? हाँ नहीं खरीदना पड़ेगा ना।
या तो 2 लाख एक्सपी या तो 1000, पर अपने पे जुगाड़ है। तुम ट्राई तो करोगे ना एक बारी? हाँ करूँगा ना। तो कंट्रोलर है, पर तुम तो कंट्रोलर खेलते नहीं नहीं है। नहीं, एक बार तो करूँगा ना, देखूंगा तो क्या क्या है ट्राई उसमें। करने में क्या जा रहा है? हाँ हाँ ट्राई तो करूँगा, मेन थोड़ी ना करना है उसको। एग्जैक्ट। स्विफ्ट प्ले वगैरह खेल सकते हो उसमें। हाँ वही ऐसे खेलूंगा। वन पॉइंट 44 की मैं केडी तो के खेलना साथ चाहूँ कंट्रोलर तो तो खेल ले सकता है। लूंगा। उसका उसका तो 16 सेकंड स्मोक है उसका भाई। उसका पता नहीं क्या है भाई, उसका उसके यूटिलिटीज है तो ठीक। अल्ट थोड़ी सा समझ नहीं आया मेरे को, उसको मतलब मूवमेंट्स वो कर देता है उसकी, मतलब जो अगर कवर में जो बैठा हुआ है ना उसको हिला देता है। हाँ ब्रीच की हाँ तरह। ब्रीच की जैसा है ना वो। देखो मैं बोल रहा देखो, ब्रीच, वेले एंड फेड, ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर है वो अल्ट उसका। पर उसका रेडियस मतलब इतना ज्यादा वो, मतलब ऐसे थोड़ा अजीब का अभी वो पता नहीं नर्व या बफ हो सकता है, कुछ हो सकता होगा उसमें, कुछ छेड़छाड़। अभी कमियां हैं, कमियां और अच्छाइयां आएंगी उसमें। नर्फ नहीं हुआ ना। वे तो नहीं हुआ, वे तो में है क्या, कुछ है भी नहीं उसके पास। उसको लोग खेलते भी कम है। देख आईसो चढ़ा हुआ है भाई, नाइस रिकॉन। सॉरी Doing a thing. अबे स्मोक नहीं है यार। Last player जी standing. भाई, क्या स्मोक ही नहीं दिखे भाई मेरे को तो। यहाँ खुला पड़ा है, यहाँ खुला पड़ा है, ऊपर हेवन सब कुछ खुला पड़ा है, 10 एंगल देख खुले हैं। अबे वो ही उधर से ही मारा भाई मेरे को तो कॉमन ने। अबे यार स्मोक क्यों नहीं है यार? अरे अरे आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा, कर देगा उसमें बेचारा भाई। पर हुआ क्या था भाई, बताओ तो। हुआ क्या भाई, वही तो बताए। लो बोल दे उनको यार। नेशन वांट्स। मैं सोच रहा हूँ स्मोक नहीं है, स्मोक नहीं है यार। स्पाइक दे दो उनको, स्पाइक। अरे क्लोब भाई, 0 कॉम से क्लोब के पास एक तो देता कम से कम। इधर है रे बाजू में। नहीं हो, रुक जा। Go, go, go. नाइस। प्लांट उधर है। One enemy remaining. ओए 65 लास्ट वन फ्लावर्स। चला जा बी, चला जा सुबह वहीं क्यों, चला जा बी, चला जा। बहुत बढ़िया भाई। जा रहा हूँ बी जा रहा हूँ। ए रुको। इतना डरना क्यों भाई? अब देखना आधे दूर तक वो चला ही गया स्पाइक उड़ाने के लिए, आधा और चला जाता बी तक। एक आ जाना जल्दी बताओ। क्या? मेरे को एक स्मोक देना इधर, मैं इधर से घुसूंगा, ठीक है? लिंक से तुम लोग जल्दी से घुसो उधर, ठीक है? मेन से घुसो जल्दी से। ए वेले उसको बोल स्मोक किधर क्या? इधर देना है, टावर देना है और यहाँ चाहिए। अभी मत दे, इंस्टेंटली मत दे, थोड़ा वेट कर, उनको पहुंचने तो दे, वो करेंगे ना। Take flight. अरे Enemy tag. Scanning ahead. स्मोक में रह सकते हैं। This way. Gotta go. मैं लो गया, ठीक है? 31। तो पीछे रह, तो मैं ले, हम लोग लेते हैं फाइट। नहीं मेरे पे जज है ना, तो मैं थोड़ा घुसूंगा नहीं, ठीक है? One enemy remaining. ना कौन? बैकस्टैब तो लगा ही है अपना। No peeking. क्या क्या? ये कर रहा है। Be right back. किधर है भाई?
तरह से ओए ए पे खड़ा है एसके क्या वो? हाँ ओ चलो आउटरो लिया ठीक है मैंने। Please stay alive. Go, go, go. उनका वैसे शील्ड तो 2 बंदों में नहीं है वैसे। Watching here. अरे मार्शल थोड़ा पिक्स पे खेलते ये लो कोरोना में मार्शल जन नहीं है ना अपने पे। कोई बाइक Salamat. भाई ओरा भाई बनता है कितनी बढ़िया थी लॉन्च हुई। आउटरो चला गया। हाँ लो निकालो पिक्स निकालो ठीक है। Go, go, go. Fuckers. Off we go. अच्छा भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा Deploying drone. मेरी तरफ आना। देख There. ये देखो Scanning ahead. Enemy spotted B. Back, slowing them down. Here we go. ओ 69 दो अरे हाथ प्लांट में पीछे क्यों रखते हो? ओए दो है वो 69 है वो बाकी तो एक एफके। One enemy remaining. हां चलो जाओ एफके रुक जा सुबह मैं जाता ए हूँ। जाओ जाओ रुक जा मैं जाता हूँ सुबह रुक जा। चल सो जा आगे। देख लिया मैंने। आगा Gonna have to teach their own that there's nothing brave about hiding in the shadows. अबे मैंने गड़ पे ही मारा था इसने मेरे पहले से मारा। मैं तेरे पीछे था और मैंने जल्दी हट दिया और वो देखता है क्या भाई। I'm out of here. क्या वो थ्रो कर रहा है क्या? यार एफके भाई हो सकता है यार घर का काम थ्रो। पापा उड़ गया कुछ भी हो सकता है यार। पापा का उड़ गया रहेगा उसे। बिना फुट से पे जा सकते हो भाई। इनिशिएटर तो है ही नहीं। तुम लोग उधर से जब घुसोगे ना मैं इधर से 8 से कौन कह रहा है इनिशिएटर नहीं है सोबा क्या है और हम पे ये। अरे उन पे अब बात कर रहा हूँ। Revealing area. Dropping smokes. Take flight. बाजू में। Spike down A. I have the spike. Don't miss me too much. अरे बहन साल देख के जज भाई कैसे। One enemy remaining. My ultimate is ready. क्लोज मत जाओ उस पे गन ही ये नहीं 40 अभी तो गन ले लेगा वो। अब गन भाई है ही नहीं भाई उस पे उधर सारे शॉटगन पड़े उधर सारे के सारे। अबे मेरी गन है ना। तेरा लेने नाइस रे वेल्ले खत्म हो गया। ओ वेल्ले एक नंबर वेल्ले भाई। ओ वेल्ले भाई। Normally I'd give a whole pep talk here, but honestly, गेम्स प्ले सोलो रैंडम के साथ कॉम्पी के लिए कुछ टिप्स और गाइड। Go, go, go. भाई सोलो के लिए क्या टिप्स है यार। ओ इधर कर वाली गन है। Need a drop. Gun here. Thanks. कर वाली गन है। I'm out of here. मेरे को तेरा सवाल ही समझ में नहीं आया। सोलो रैंडम के साथ कॉम्पी के लिए कुछ टिप्स और गाइड। इधर पे आ सकता है इधर पे चेंबर आता है ठीक है। आपकी रैंक क्या है भाई गेम्स प्ले भाई आपकी रैंक क्या है? Reloading. उस हिसाब से टिप्स बता दो। जल्दी चलो जल्दी लेफ्ट साइड टीपी क्या होगा? अरे भेड़ की मेन से कोई नहीं जा रहा भाई मेरे को क्यों ये बताओ भाई मेरे को क्यों नहीं जा कोई? Last player standing. रैंक क्या है भाई? नहीं जा रहा भाई मेन से जाना चाहिए था। तुम सब जा रहे हैं भाई। अरे मैं तो हर राउंड जाता हूं। ब्रॉन्ज बताया तुमको तुम लोग इधर क्यों आ गए इस बारी? किल चाहिए थे क्या भाई? अरे अभी जाएंगे मेन से जाएंगे जाना पड़ेगा मेन से। अरे जाना पड़ेगा नहीं तब जा रहे थे तब से तो जीत रहे थे भाई। भाई कुछ नहीं है भाई खेलते रहो बस डीएम खेलते रहो क्या है? पता नहीं भाई। एक अच्छा सा डुओ ढूंढ लो। सोलो क्या सोलो कॉम्पी खेलता है क्या तू? मैं तो हर बार अभी जाना पड़ेगा। अभी जाते जाना तो पड़ेगा ही। तो भाई तो ना खेलते रहो बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ खेलते रहो बस खेलते रहो। Let us hunt. अपने आप ठीक टिप्स यही है भाई और क्या है? हाँ जाओ मैंने खेला ही है भाई। स्पाइक पे किसको चाहिए तेरे को? I have the spike. बस खेलते रहो भाई बस खेलते रहो।
ड्रोन दे चल ड्रोन दे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ड्रोन दे वो वेले को भी भेज रहा है आगे क्या आधा Line them up! I'm going in! Doing a thing. टिप्स ऐसे कुछ खास टिप्स हैं नहीं। Nice slow now. ओए बैक स्टेप देखना, बैक स्टेप आ सकता है। It's you and me. Yep. बैक स्टेप। Enemy spotted A. तुम ये मैं खुद ही बताओ ना, मैं अब कोई अगर मैं टिप्स मांगूं तो मैं क्या मांगूंगा किसी से? जैसे अब तुम सोचो सामने ऐसे कोई इमॉर्टल है और मैं उससे टिप्स मांगूं, मैं डायमंड हूं, ठीक है? अब मैं उससे टिप्स मांगूं, भाई मुझे टिप्स दो कोई अच्छी, वो क्या टिप्स देगा? वो बोलेगा बस खेलते रहो बस, अपने आप एम ठीक हो जाएगा तुम्हारा, अपने आप तुम सब सीख जाओगे। अरे लगाने की बात भी नहीं है, वो अट गया भाई। वही है, तुम सब ट्राई करते रहो भाई, जो तुम्हें पसंद आए वैसा खेलो। और बाकी एक चीज टिप्स दे सकता हूँ, हाँ डीएम की टिप्स दे सकता हूँ मैं। डेथ मैच में तो मतलब हेड पे एम कर सकता है, ओनली हेड। तेरे को और कहीं एम नहीं करना है, ओनली हेड। तू चाहे कितनी भी बार मर जाए, चाहे 50 बार मर जाए, चाहे 100 बार मर जाए, पर तेरे को मारना हेड ही है सामने वाले को डीएम में। तेरा एम बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, तेरा एम ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, तेरे को इम्प्रूवमेंट दिखेगा। दे शॉट पड़ा मेरे को। Enemy mark. Be right back. Nice and slow now. इधर लेफ्ट में Go. अबे फ्लावर है के One enemy remaining. देख के बैक स्टेप नहीं पता, बैक स्टेप आ सकता है, देख रहा हूं देख। हाँ ये सबसे बढ़िया टिप्स जो मैंने दी वो यही टिप्स है, और बाकी खेलते रहो भाई, सीख जाओगे। लो गन लो। ए गन लो कोई तो। ए दे गन। आज डम्बी बनूंगा भाई। तेरे को पता मैं मतलब मैंने मार्च से स्टार्ट किया था गेम खेलना, मार्च 2025, और मैं तब से लेके आज तक 9-10 घंटे गेम खेल रहा हूँ, 9-10 घंटे ये वाला गेम वैलोरेंट। तब थोड़ी मैं सीख पाया, मैंने टिप्स किसी से नहीं दी, इसमें कुछ टिप्स नहीं है। खेलते रहो सीखते रहो, अपने आप सीख जाते हैं। चल डम्बी। Gonna fall back here. चबी डम्बी। Spike down B. पता है क्या दिक्कत? रिवील नहीं आया बस। मैं दे रहा था, बहुत जल्दी घुस गए। तेरी वजह से पता है नियॉन भाई, तेरी वजह से हम लोग सबको घुसना पड़ता है, रुकता ही नहीं है तू थोड़ी सा। अरे घुसो यार, अरे बोला तो आज स्ट्रीम में। Last player standing. भाई इन्फो के बिना कैसे घुससे भाई, तू कैसे घुस जाता है बिना इन्फो के, मुझे बता। Exactly भाई, मैं वही तो बोलता हूँ हमेशा। क्या बोलते है तू? वो यही तो बोलता हूँ। अरे रिवील के लिए रुको। एंटी अरे कोई बात नहीं भाई, बहुत जल्दी घुस गया भाई, माय बैड। मतलब तू उड़ने वाला एजेंट लेगा तो क्या उड़ के पहुंच जाएगा जल्दी से? पहले दे रहे। लूट लो भाई, थैंक्स। मुझे लूट लो भाई सब। अरे नहीं लूट लो, और क्या 400 बचे बस। अरे मेन से भी जाओ। एक काम करो, वेले जाओ उधर से, ठीक है? मैं इधर जा रहा हूँ, इधर से। चल सब लोग उधर से जाओ। और बताओ भाई कैसे हो? टीम डिक का यो क्या चल रहा है? ड्रोन करियो। इधर रहता है इधर। हाँ ड्रोन करना, मैं कवर दूंगा इधर। तुम लोग 8 से घुसोगे तो फिर वो करूंगा। रुक जा Gonna fall back here. Slow down. नूब है तो मेरे सामने आ गया ना, खुद ने मार रहा, मेरे को मारने नहीं दिया। मेरे को किधर से मारा? अबे तू मेरे पीछे खेल रहा है मेरे भाई, उल्टा तू आगे जाना चाहिए। 27 ISO।
One enemy remaining. होल्ड कर बढ़िया बढ़िया बुल्ला बुल्ला बस बढ़िया तुम बुल्ला बुल्ला मेरा भी बढ़िया है। क्लब देना जल्दी। एक गाजर दो उसको। अपना ए हो रहा है तो अपन को बी क्यों जाना है वैसे ये बताओ। तो यही चलना। लास्ट टाइम रिवील नहीं हुआ था इसलिए वो नहीं। उठा बेटा उठा। ओ भाई तब से भाई जब से खेल रहा है बस और कुछ। मैं मिड से आता हूं ठीक है फिर से। मतलब स्लो कर सकते हैं। ये चेंबर है तो पीक में दे, ड्राई पीक में दे चेंबर फुट दोगे तो चूदोगे। अरे दोनों स्मोक दे दिए भाई उसने। मिड में दोनों स्मोक दे दिए, जा सकते हो अंदर। चलो फिर आ जाओ। उस पे स्मोक ही नहीं है, दोनों स्मोक दे दिए मिड में। Back in a flash. अरे बेंचो चेंबर आ रहे हैं। Spike down A. Last player standing. लंबी चेंबर शॉट का आ रहे हैं जी। तुम किधर मर गए गीगा भाई? मैं तो मेन पे ही आया, मैं आ ही नहीं पाया। Last round in the half. मत जाओ भाई तुम पे फट रही है तो फिर मत जाओ ना, फिर तुम मेन से घुसो फिर मैं जाता हूं उधर से। किसकी फट रही है भाई? तो मैं आ ही नहीं पाया भाई। मैं सुन आ ही नहीं पाया वाह भाई। सुन तो सही हुआ क्या? ये हुआ कि मैंने तेरे को बताया कि मिड में दोनों स्मोक दे दिया और मिड से मेन पे आने में टाइम लगता है ना। अरे तो भाई वो पता है मेरे को, पर यार मैं जा सकता हूँ ना भाई, ऐसे मोमेंट देके घुस जाता हूँ मैं, कोई कुछ काट नहीं पाता फिर मेरे को ये बात इधर क्या कोई पहले अच्छा उनको लगता रहेगा बी। कवर दे यार मेरे को, मैं ड्रोन कर। Take flight. इधर फ्लावर्स के Dropping smoke. Don't miss me too much. Hitting the brakes. अरे वाह लैंड करो। इधर देखना मेरा कनेक्टर देखना बैक स्टेप देखो बैक स्टेप होगा भाई, स्मोक करके बैक स्टेप भी होगा। हां तो इधर कनेक्टर है। Enemy spotted A. Silent. इजी One enemy remaining. 1840। नो लास्ट राउंडर तेरा अल्ट है। नाइस रे। नाइस। अच्छा लास्ट राउंड था क्या? फक कब हो रहा है इतना जल्दी कैसे? Switching sides. बहुत फास्ट पेस चल रहा है। I'm out of here. पहले मेन का ये देता हुआ। एक काम करो वेटो, शॉट की ओटी पकड़ लो ठीक है, और इधर पे खड़े होके एक मार के टीपी कर लो फिर, अगर हो सके कर पाओगे तो। टीपी नहीं कर सकता, टीपी है ही नहीं, पैसे नहीं है भाई। अरे तो भाई शॉट की पकड़ो ना फिर आगे ना पैसे, इधर से रिप पकड़ोगे तो कहां से आएगी? चल ठीक है। हां मैं दूंगा कवर दूंगा ठीक है दूर से। मेन का ये उधर देख लो इधर खेल लो, मिड डोर्स खेल लो, दोनों तरफ स्मोक दे पाओगे फिर। अबे इधर से आएगा ना रेंज तुम्हारा, ठीक है इधर बैठो ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा उनको, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं जा। इधर ए पे जा जल्दी चल जल्दी चल। भाग। अरे भेंचोद 110 है ओमेन 110 planted. Reloading. One enemy remaining. Nice shot. Last player standing. Slow. नाइस। गेम्स भाई बताओ कैसे शॉट थे? बढ़िया शॉट थे ना? एंटी नियॉन। क्या हेलो I'm out of here. जो आइस और दोनों डुलिस्ट को जो निपटाया है मैंने। Collect yourself. Scattered minds make simple mistakes. सेम चीज अब बाकी हट गया बाकी भाई सेम चीज करेंगे वेटो बोल। अभी खरीद लिया मैंने, खरीद के डाल भी दिया गन, पहले ही बोल देता मेरे को यार। अरे कोई बात नहीं, जो भी गन है ठीक है, चल ठीक है कोई बात नहीं, बात ये नहीं है मेरे पे, क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, हां कोई बात नहीं छोड़, अरे छोड़ कोई बात नहीं, कोई बात। चैम्बर को भी मार ही देता, लेकिन थोड़ी सा पता नहीं भाई सेकंड राउंड कौन खरीदता है?
सेकंड राउंड खरीदना नहीं रहता क्या? वो लोग होल्ड करेंगे, उनको पता है अपन बैक स्टेप जाएंगे। ठीक है, इधर देख लो, हमें उधर हेल्प कर लो। अरे वो 8 दो लोग जाना, दो लोग जा किलो जा 8 देख। अबे 8 में देख रहा भाई, उसको हेल्प दे जल्दी। ए इधर से नाइस। अब पता है लिंक एक बंडल है उसमें, बंडल है उस। हाँ पता है, तू दे दिया, वो पता था मेरे को, इसलिए नहीं खरीदना। आर्ट्स पे वैंडलिटी प्लांटिंग। थोड़ा वेट कर लो। Slowing them down. One enemy remaining. नाइस। Last player आ गया standing. Take this. Go, go, go. 30 seconds left. नाइस रे नियॉन। ले भाई भाई वैंडल कौन लेता है भैया जी? अरे क्या रे, वही ना भाई, पागल है भाई। अगर लो भाई, अगर तुम में कूदा है तो लो ना भाई। तुम भाई नीचे बैठे हो और वैंडल ले रहे हो। अरे मैं मार सकता था, मालूम है क्या? मैं मार सकता था। अरे भाई वो सबको लगता है वैसे, ठीक है। मैंने मारा एक को, मैंने एक देखो एक को मारना नहीं है ना भाई, राउंड जीतने की बात है। अब कर सकते हो ना, इधर बक्की वक्की पकड़ लो भाई, इधर जा। अब सेव क्या कर रहे हो? देख रहे हो, गरीबी देख रहे हो? अबे खरीदो अच्छे से खरीदो, जज वज लेके इधर बैठो, मैं दे दूंगा तुमको डिस्ट्रैक्ट। टीपी तो लगा। टीपी नहीं है ब्रो। बी पे है क्या? तोड़ दिया मेरा। बी है क्या? तोड़ दिया मेरा। बी तो नहीं है भाई अभी फिलहाल के लिए। कार्ड्स वाला ये कर रहा हूं। Back in a flash. Slow down. घुस गए ना। Shock dart. Spike planted. I'm out of here. Enemy One enemy remaining. अरे उधर ही है, मेन पे ही है, मेन का। Last player standing. नाइस। बहुत बढ़िया। ये जो कितना It is over. वैंडल का 40 होता है ना? हाँ 40 होता है। मतलब 40 into 4 कितना हुआ भाई? 160 तो हुआ। One downside to being immortal. कोई वॉल बैक भी नहीं था। Can't play dead. तो 160 लगा है, उसको दिख रहा है। 120 दिखा रहा है भाई। 40 किधर पता नहीं भाई, दिखा रहा है 4 बुलेट पर, दिखा रहा है 3 शॉट लगे, मतलब ऐसे 120 का दिखा रहा है, मतलब ऐसा डैमेज। कर भाई वेटो। करो आ जा जज पकड़ ले, बेटर रहेगा। ये मत पकड़। सोवा भैया छोड़ो भैया। फुल शील्ड। हां चल। क्या बोल रहा है? मेरे को वैंडल चाहिए। जा आराम से होल्ड कर, मैं वो कर दूंगा। अरे सुना नहीं मैंने, इनकी आवाज में सुना। इधर आर्ट्स के इधर। छोड़ दे क्लोव, छोड़ दे, उधर लगा है तो छोड़ दे उसको। हेल्प कर, मैं इधर देख लूंगा, कोई बात नहीं। मेन देखते रहो, बी मेन देखते रहो। बी मेन साउंड है। नहीं बी मेन साउंड नहीं है। Bye bye. Enemy. ओहो फक, 2 निकाल दिया मैंने अपना। ठीक है, मेरा गन ले। कनेक्टर देख क्या? ओए वाह, चलो कोई बात नहीं। 4v3 ठीक है, वरना नहीं कोई। मत कर लाला, मत कर। नाइस शॉट। इधर स्कैटर हुआ। अपना स्पॉन देख के ब्रो, ऊपर लगा ले टीपी, सही रहेगा। बस होल्ड करा, इजी। $30 seconds left. One enemy remaining. नाइस वन लॉल। Spike down B. इधर आ जाओ सारे। ओए इधर है, नीचे तेरा क्लोव। Be right back. नाइस भाई साहब, कैसे भाई बंदे भाई। Go. ऑफ कर रहा हूं मैं, मेरे को बाय दे सकते हो क्या? कर ए बाय दो यार, भाई को भाई। Salamat, thanks.
यू भाई, थैंक यू। अरे ये भाई उन पे ब्लाइंड तो नहीं है, अरे यार उसका कॉन्डो में मतलब वही सीन कर देगा मेरे को। पर हाँ गेम्स भाई, जल्दी सीखने के लिए तुम अपनी गलती से सीखोगे ना, मतलब एक एंगल से अगर तुम मर गए तो ये सोचना कि कैसे मरे और क्यों मरे, फिर दोबारा वो गलती मत करना। ऐसे तुम्हारा गेम सेंस इंप्रूव हो जाएगा जल्दी। मैं आज छोड़ रहा हुआ। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या, कहाँ खड़े होना है, क्या करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ पीक करना है, ये सब सीख जाते हैं। One enemy remaining. Spike down B. Look, I'm out. स्टन हो गया। Spike B. No peeking. हाँ Match point. Go. They look tired. Finish it. बाकी मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी भी। ऐसे करना, 3 डीएम खेलना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना रेंज में, और फिर 3 डेथ मैच खेलना है, एक सेरेफ से, एक फैंटम से और एक वैंडल से। मैं जाता हूँ आगे, मैं जाता हूँ। अबे यार एक सेकंड, वो मेरे को पहला सेरेफ से, फिर फैंटम से, फिर वैंडल से। You want to play? Let's play. पीछे खेलो। It's you and me. बाकी दिया ना, ओह नाइस। One by one. Face your fear. Gonna fall back here. Spike down A. Nice and slow now. अब आगे में वो लोग इधर ही है, सब इधर ही है। मैं 8 देख रहा हूँ, ठीक है। One enemy remaining. नाइस, इधर ही है, मेन पे ही हो। जल्दी पकड़ा। नाइस रे नाइस। जी। वीटो पावर यूज कर दिया। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अबे आगे गोल था भाई, ये तो अभी देखा भाई, वो टॉप था पर। लेट्स गो, रैंक अप हो गया भाई। रैंक अप हो गया फाइनली। क्या बात? हाँ वो तो हो गई। ओह मेरा देखा भाई तो भाई 3 दिन से ऐसा हो रहा है। 2 मैच जीत के फिर 2 मैच माइनस कर रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ गुड नाइट गाइस, खेलते बाद में, आज के लिए इतना ही, ऐसे करके जा रहा हूँ फिर मैं। इसलिए तेरा हो नहीं रहा, कोई ना। अबे जितना प्लस कर रहा हूँ उतना माइनस हो जा रहा है, होगा क्या? क्योंकि तू फिल करता है ना, इसलिए। फील तो कर लेता हूँ अच्छे से। और हाँ गेम्स भाई, Match मतलब found. एक एजेंट ऐसा पकड़ के चल रहा है अपना, जो तेरे को अच्छा लगता है, उसको ही खेलना आगे तक बढ़िया रहेगा। फिर तेरा जो फोकस होगा वो सिर्फ एम से होगा, एम पे फोकस होगा तेरा, एजेंट पे नहीं होगा। I don't try. I do. क्योंकि जैसे मान लो कोई स्मोक ले रहा है, कोई इनिशिएटर ले रहा है, मान लो तेरे को डुलिस्ट खेलना है, 3 डुलिस्ट, 2 डुलिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी टीम में। योरू लेते फिर तो अगर तू स्मोक ले रहा है, फिर अगले मैच में इनिशिएटर ले रहा है, फिर तेरे को मतलब टीम के हिसाब से तेरे को ढलना पड़ेगा। क्या लो बताओ? कुछ भी ले लो जो तेरे को आता है। नियोन ही लेना वापस। अरे क्या दिक्कत है भाई, वापस एक एजेंट से थक जाता हूँ, पता नहीं, बोरियत हो जाती है भाई एक एजेंट से बार बार। मैं तो नहीं होता हूँ भाई बोर यार। आई एम यूनिवर्सल यार। मैं भी कभी कभी फिल कर लेता हूँ, मतलब कि कोई एजेंट जैसे लॉक कर दिया, 2 डुलिस्ट हो चुके ऑलरेडी, तो मैं इनिशिएटर खेलता हूँ, ओनली सोवा खेलता हूँ। 2 हैं मेरे, मतलब वेले खेलता हूँ ज़्यादातर, और जब लॉक हो जाता है, इंस्टा लॉक आते हैं, इंस्टा लॉकर आते हैं, मेरे से पहले कोई लॉक कर देता है, तो फिर मैं सोवा खेलता हूँ।
क्योंकि फिर मैं मेरे को बाजा वही भाई। आता है इनिशिएटर। Match found. अच्छा तुमने GTA का थंबनेल बना दिया? अभी नहीं बनाया भाई, वो बन जाएगा, ओए इजी है। गुप्ता जी, गुप्ता जी पता है ना कौन है? और एक एसेंडेंट का बंदा आ गया भाई, लेट्स गो डब्ल्यू टीम भाई। ये तो डब्ल्यू टीम हो गया भाई। तो होगा ही ना वो तो। गुप्ता जी पता है ना कौन है गोल्ड का बंदा जो है? हाँ वो सामने आया था वही ना। हाँ वो बढ़िया मार रहा था भाई वो तो। उसकी टीम में वही एकलौता मार रहा था। और आगे एसेंडेंट भी एक देखो। I don't try. I do. तुम रहने दो भैया, आप तुम ब्रिम ले लो। कौन मैं? हाँ तुम तो फिल करते हो, वैसे भी फिल कर लो, क्या है। मैं तो भाई ब्रिम नहीं खेलता इसमें। मैं इसमें नियॉन और डेडलॉक खेलता हूँ। तो डेडलॉक तो देखो ऑप आती है, तो चैम्बर क्यों नहीं खेलते? हाँ खेलेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ पर इसमें खेलता नहीं ना भाई, मैं इसमें डेडलॉक ही प्रेफर करता हूँ। चल डेडलॉक ले ले फिर, ठीक है, होल्ड हो जाता है डेडलॉक से। लेकिन डेडलॉक या फिर नियॉन या फिर स्मोक खेलना ही है तो फिर भाई मैं वो खेल सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रा खेल सकता है उसमें। चलो वो ले रहा है, वो लॉग इन कर लिया भाई। ले 2 डुएलिस्ट हो गए, स्मोक्स हो गए, इनिशिएटर चाहिए ना। इनिशिएटर में ये ले सकते भाई, एक अच्छा सा सेंटी ले लोगे तो भाई लेट्स गो। चलो बढ़िया कॉम्बो वॉम्बो हो जाएगा। रानी तेरी मैं पागल, ये रानी तेरी एक झलक से मैं पागल, समेटो तेरी खुशबू जो भाई आगे 2 असेंडेंट है भाई। येलो के चादर। साला ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई। आगे 2 असेंडेंट आ गया भाई। वो भी 1.17 की केडी के साथ। मैच मेकिंग देख रहे हो? गोल्ड के बाद आता है प्लैट, प्लैट के बाद डायमंड, फिर जाके असेंडेंट। to survive. असेंडेंट के साथ गोल्ड है क्या बताओ? One more day. 2-3 रैंक नीचे आ रहे भाई बंदे, क्या बताओ भाई। विजन भैया अपनी घोस्ट दे दो यार। बाकी कोई सवाल है तो पूछ सकता है तू गेम्स भाई। चलो चलता हूँ, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भाई, गुड नाइट। घोस्ट दो भाई, अपनी घोस्ट दो, घोस्ट। बैकस्टैप I need a drop. Gracias. ठीक है ना भाई, नियॉन है और बैकस्टैप भी नियॉन पे। करो फिर बैकस्टेप, क्या है, दौड़ो पीछे से उनके। रानी तेरी एक झलक से मैं पागल, समेटो टीपी करना, टीपी करना, टीपी चादर। टीपी आ जाओ, करे करे टीपी करते हैं, आ जाओ। करूं? टीपी करते ना, आ जाओ। हां हां भाई ए पे तो एक, अरे वाह गए भाई, गए सारे गए। प्लांटिंग प्लांट हो रहा है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। Spike planted. Bueno. साइट है, साइट हो सकता। One enemy remaining. देखो उसका। ए विंडो। नाइस। I can play by the code from time to time. कॉम्बो करते आ जाओ डिलो। The symphony of नहीं वो थर्ड राउंड करेंगे। नहीं अभी थर्ड राउंड करते ना, 5 राउंड में करेंगे उनके। ओके। अच्छा एक 1v हो सकता है इधर। स्टार्ट होते ही 1v करो, थोड़ा ऊपर करके करना, ठीक है? मतलब ऐसे ऊपर, मतलब थोड़ा पीछे करके करना। मैं वो डब्बे के ऊपर चढ़ूंगा। समेटो तेरी खुशबू जो। अरे एक डुएलिस्ट उसके पास हो जाओ। अरे इधर ही आएंगे भैया, ये पे ही आएंगे। Cover going out. Nice one. वो रहना लॉन्ग हो सकता है ना। Spike नियॉन मेरे पास down था, A. नियॉन मेरे पास। अरे इधर है यार, मेरे देख के इधर है। फ्लैश करके दे देगा, देख। शावर भी थे ना बंदे, तो वो हाँ, इधर से नियॉन घूम था। के भी आ सकता है, ठीक है? देखो इधर से घूम के भी आ सकता है। हाँ देखो पता ही था, One enemy remaining. पता ही था भाई। Your life won't go to waste.
हाँ अब ये मेरे को डेडलॉक को छोड़ दो इधर ये पे। बोनस खेल रहे हो क्या? फिर खरीद रहे हो? बोनस ही खेल रहा हूँ मैं तो। बोनस खेलना है, क्या करना है बोलो? बोनस ही खेलना है भाई, बोनस ही खेलो। बाय करना बोलो, बोनस करते हैं ठीक है। अरे ऑपरेटर मतलब गुप्ता जी रहना, तेरे पे शील्ड नहीं है ब्रो। तेरे को मेरा कहाँ पे? राइट पे ठीक है भाई। फुटस्टेप सुन के करना, ठीक है? करे। अरे हो गया भाई, खत्म 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 खत्म। ब्लाइंड में There's that. वॉल कर ली। मैं जा रहा हूँ उधर। जा। ए पर ही आएंगे वो। कॉल देते ना, मैं टीवी कर। ठीक है। वो आगे, इधर आगे। रोटेट। One enemy remaining. Spike down B. देखे भाग रहा था साला। साइड पे। रुक जा उसको आने दे। हाँ रुका हूँ भाई, रुका हूँ। टीपी क्या? कहाँ पे? अरे इसकी माँ की। ये करेगा ये बकचोदी। अब क्या? ये भाई वो भाई ओपीएम वुमन बन रहा है। 30 seconds left. प्लांट का साउंड आया ना? हाँ आया। Spike planted. Last player standing. भाई मेरा गोली कहाँ गया? पीछे गया वो। भाई डैमेज था यार वो। लैम्सी आया होगा। आई थिंक लैम्सी, हाँ। ऊपर खेल रहा है भाई शायद से। हाँ ऊपर क्या? ऊपर क्यों खेलेगा? प्लांट ही नहीं है ऊपर का, कहाँ से खेलेगा ऊपर? भाई प्लांट है भाई। प्लांट है तो इधर का है, इधर दिया था शायद उसने, देखा नहीं भाई। मुझे नहीं समझ आया, मेरा गोली के थ्रू स्लाइड करके निकल गया। मैं तो वो लग ही रहा था यार, फक कर दिया भाई। हो गया भाई सीन। वो जब टीपी कह रहा, एक सेकंड के लिए लगा कि टीपी कर दिया, फिर याद आया अचानक से कि भाई ये भी तो हो सकता। रहना मांग ले ब्रो मेरे से। ये रानी तेरी कुछ लग से उनका बैक से नहीं, अपन लर्क करना चालू कर देंगे, ठीक है? अगर नहीं होगा कोई। ओ भाई ये घुस गया। Enemy spotted A. No surprises. मैं ब्लाइंड। बात है शायद, एक और बात होगा। सुनने तो सुन। राइट साइड है वो, मैं राइट साइड था वो। ओके, एक सावर पे योर स्पॉट हुआ। You will not kill my ally. रुको। एक और बात। One enemy remaining. बात Spike करना। down A. पीछे आ रहा भाई। Be right back. घेर रखा हूं, ठीक है? घेर रखे। सैचुरेट है तेरे पे। फाइट मत लेना बस। Slowing them down. नहीं करेगा प्लान, चिल करो। Launching missile. Ammunition. पीछे की तरफ गया। 30 seconds left. Last player standing. क्या यार जजेस पे यार, फक। Spike planted. Clutch. There's no need for the enemy to suffer. 2 राउंड सिली मिस्टेक में हुआ भाई पूरा। पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे टीममेट आगे जाके मर जाते हैं भाई। मैं पीछे होल्ड कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ भाई। अब यार उस पे जज था यार। अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, तू थोड़ी ना आगे जाके मरा। अरे वो यार वो क्या कर सकते भाई, प्लान फेक हुआ। I need पीछे ही रहता more मेरा। from us. Shadows traveling. एक जन मेरे पास।
वो इधर बी पे Back in a चलो flash. बढ़िया स्मोक दिया भाई, अंदर कवर हो गया। बी पे 2-3 फुट है भाई, ठीक है। ये स्मोक सेम स्मोक करना एक और बारी, सेम स्मोक एक और बारी जल्दी करो, मैं मर जाऊंगा। ओहो सेम। रुक जाओ यार, पकड़ा रुको तो नहीं सही यार। रुक जाओ ओमेन, क्यों नहीं सुन रहा है? तो रुक जा यार, रुक जा। ठीक है निकल गया। लॉन्ग है स्मोक करके इजी डिफ्यूज। एक एल्बो था वैसे योरू। लॉन्ग लेफ्ट। ये क्या स्मोक था? Hitting the brakes. Last player standing. अरे तुम स्पाइक पे डालो ना भाई, ये क्या स्मोक किए? जो अपने टीम में होते भाई, अपने टीम में भग रहे हैं भाई, ऑपरेट में भाई मार रहे हैं भाई। बताओ भाई क्या बोलूं? वापस से कॉम्बो करने का डेडलॉक। कर लो। ओमन उसके पास चले जाओ। बी Oh yeah! Monster on the अरे अब loose! ये क्या? Reloading. तुमने हगा है, ठीक है? इधर पे गिरा तुम्हारा, पता है क्या? है? और क्या देखा मैंने मैप? Sensor tripped. Reloading. I'm blind. डैमेज हुआ? Spike down A. Dead. अपना राउंड चाहिए कुछ भी। बात देख। एक शॉट है। ओमन भाई वो फेक टीपी कर सकते हो क्या तुम? हाँ प्लांट हो रहा है अभी, वो फेक टीपी करो। Spike planted. कुछ भी नहीं आता यार। ओमन अल्ट मार के इन्फो निकाल। Gonna fall back here. अरे हगा भाई पूरा भाई, ये तो लिटरली क्या? एक एल्बो। One enemy remaining. लास्ट एल्बो। डिफ्यूज बेटर बढ़े, उसको कवर दे। ब्रो नो वे भाई। नो वे भाई, 2 बार आगे भाई ये राउंड में। राउंड में 2 बार आगे भाई। Wasn't worried for a second. आराम से करो। ये वो गेको मरता पता है ना तुमको? पूरा मरता भाई वो। डैमेज क्या है वो? 65। अटकता तो मरता कंफर्म। भाई एनिमी सीज्ड एक था मेरा पहला वाले में। नहीं वो तो अलग इधर वाले बंदे को होगा, समझ रहे हो? थोड़ी अंदर घुसा के फेंका करना, अंदर की तरफ गिरे ताकि यहाँ पे। हाँ अरे हाँ ना भाई, अरे इधर पे भी गिर जाएगा ना, इधर पे भी गिर जाएगा। बहुत एनफ है भाई। मैंने तेरी एक झलक से मैं पागल। साउंड नहीं है। ड्रोन कर रहा, रुको। Be right back. अरे मत फेंको ना भाई, साउंड नहीं है तो। नाइस वन। मत करना, ज्यादा कमिट मत करो रेना। मैं बात पुश कर रहा हूँ, पोजीशन ले रहा हूँ। इतना मत करो भाई। फ्लैंक है मेरा, फ्लैंक है। रहना वो मत। One enemy remaining. Spike down. 44. ट्रैप हो गया भाई। नाइस पुश। Getting tired is optional. Keep the मैं energy up. बाकी इधर अल्ट करने वाला हूँ, ठीक है? अभी ऐसे करके अल्ट करूंगा, ठीक है? एक कभी बनाऊंगा इधर पे छोटा सा गैप, उसके अंदर डालूंगा अपना मॉली। तो यार इनको ब्लॉक कर दो बस। एक बंदा चाहिए जो पुश कर सके, जैसे कि वेल ले। ओमन एंड रेना भी खेल भाई, अच्छे से फेंक, ठीक है? इधर से देख इधर पे ऐसे करके इधर ग्राउंड में फेंक तो जल्दी गिरेगा, ठीक है? अल्ट करने के बाद पुश करना, ठीक है? Doing a thing. नहीं है, नहीं फेंक रहा हूँ। ड्रोन कर रहा इधर ही है। क्या तो स्मोक दे दे यार, कौन स्मोक दे रहा है भाई? अरे हाँ एग्जैक्टली। एक शक्ति भी करेंगे, रुकना।
Spike planted. रुक जाओ, मैं स्मोक टू कांट हेल्प यू। अबे यार ये वाल्ड है वेंचर। रहने दे सेव कर, डैमेज दे। फंस गया भाई मैं तो। अब नियॉन घेर। Last player standing. लंड भाई थोड़ा सा बात मान लो यार रेना भाई, इतना हड़बड़ी मत करो। ए माँ की चूत गेम भाई, माँ की चूत। ये बैलेंस करेंगे रंडी के बच्चे लोग इस Take a गन को। minute. Focus on your breathing. Helps with your aim. बैलेंस मत बोल भाई। अब भाई 7 से 8 के पास 7 से 5 किया भाई। पैसे है किसी पे, पैसे नहीं है। करो सेफ मॉली। इस बार अगर नहीं है मतलब वो करे ना तो फिर जान जाना, ये वो उनको पता है। और Back in a flash. ओ इधर पे भाई, उधर घुस गया ऑलरेडी। शॉट एक है शायद, देखो। कॉल भी नहीं दे रहा यार रेना भाई, थोड़ा माइक कर लो भाई। इसमें माइक नहीं है ब्रो, और ठीक है भाई, तो मुझे रुको। Spike planted. और जब प्लान हो गया साइड ही खा लिया भाई। ये what the fuck is this? So low. Reloading. Don't miss me too. Pull them to their grave. Last player standing. One enemy remaining. Got 3. Blow down. वो तो इनकी दे इनकी। आराम से करते हैं, तो रैंडमली मार दिया। My city needs me. I can't be away for long. अरे डेड लोग ऐसे ही होते हैं यार। रैंडमली मार दिया भाई। और क्या मार दिया रैंडमली भाई, कुछ भी। मैं सुन, मैं इधर ये लगा के बी जा रहा हूँ, ठीक है? मैं सेंसर पे चल रहा हूँ। तेरी किसे मैं पागल। This is how it ends. ये हो रहा है क्या? हाँ ये घुस गया। नहीं है अरे वाह, 70 ब्रो, तू इसको डैमेज नहीं दिया। Spike planted. सेव करो लोग मारो, एग्जिट लो। Insane. Last player standing. वैसे भाई ये कॉमन स्पॉट है, ये पीछे देख के टीपी करेंगे, ठीक है? Saint killed. One enemy remaining. छत से ही निकालता भाई, छत से ही निकालता। Their death demands our attention. सब 6-6 करो भाई। मैं पुश करूँ क्या? 6-6 क्या भाई, 0 कोऑर्डिनेशन है टीम में, क्या 6-6 करो। तेरे को मार के मेरे सामने नियॉन भागता हुआ है, पता तेरे को? हाँ वही तो बोल रहा भाई। ओमेन तो राइट साइड में। पर मैं वो वॉल में था ना, पता नहीं कहाँ जा रहा था भाई, वो तेरे पास चला गया, आ रहा था मेरे पास, चला गया तेरे पास। Gonna fall back here. अपन वो भी तो कर सकते थे। जा रहा हूँ भाई। Bro, just how? अपना तुम्हारा Too slow. Spike planted. Go side इधर। अरे मैं Spotted defender spawn.
तेरे पे गन क्या था? जज इस पे होगा ना यूरो पे देख। सब जज खेल रहा है बेंचो। चलेगा हमारा डिफेंडिंग देख रहा है। One enemy remaining. Target spotted A. Ultimate ready. मैं हाफ अच्छा मैं कर रहा हूं। गन लगे थे वो। एक शावर पे पड़ा होगा। Returning to post. Last round before the switch. बीच रास्ता खड़ा होके वो कर रहा था। भाई ये पे ही जाओ मेरे को और वेले को तो रहने दो इधर। आ जाओ तुम गीगा में मेरे साथ आओ गीगा में रुको। बाय करना भाई इधर ये जगह पे वो कर देना ठीक है। मैं अपना मॉडी डाल दूंगा। क्या स्टन करना है वहाँ पे? नहीं अल्ट का डायरेक्ट अल्ट। अच्छा अल्ट। मैं मेरे को ड्रोन करने दो फिर करना ठीक है। मैं एरिया पे तो नहीं हूँ ना। नहीं तू नहीं आ। Locating targets. वो दूर है रेंज हट जाएगा। पास आने दो Hi! I'm pissed! Shadows traveling. साइड गोस Spike planted. Ay, कैसे? Sentate. Line them up! I'm doing a thing. Monster on the loose. Last player standing. One enemy remaining. मिनट पे लॉन्ग था ना। नाइस वन ब्रो। Magnition. Switching sides. अब देखना थोड़ी सा अटैक में ये जज ही करने वाले हैं भाई डिफेंस में बता The सब कुछ। battlefield changes with every play. फुल आर्मर पे ना वन शॉट नहीं होना चाहिए यार शॉटगन। अपनी घोस्ट देना यार। Reloading. I need a drop. नहीं भाई वेरी चीज बेंचो। रेंज तो होना ही चाहिए। एकदम पॉइंट ब्लैंक ठीक है बट लाइक 5 मीटर के ऊपर। भावना समझ। Vamos. इधर सवाल किया है भाई एकदम सामने। Grenade is live. Cover going out. Reloading. Inside. Reloading. Be right back. Reloading. लॉन्ग है क्या? One down. That's three. मारो नहीं। Last player standing. One enemy remaining. Okay. Clutch. I know how to fend for myself. मतलब लोग इतने बिजी हो जाते हैं राइट क्लिक में कि वो एम ही नहीं करते भाई। ये सेज जैसे छूती है लोग कुछ आते हैं ना Those shits are trying to kill us. भाई मैं एम प्रैक्टिस करता हूँ भाई हेड की। और ये देख राइट क्लिक कहाँ से चल रहा है इसका सेज का। और लग जाता तुक्का तो मर जाता भाई डेडलॉक। ये देख डेडलॉक हमारे जैसे भाई अच्छे प्रो प्लेयर है भाई। इसी डेडलॉक अच्छा खेलता है मेरी तरह एकदम। तेजो तो है भाई तो मेरे से कम है वो थोड़ी। Gonna fall back here. Shadows traveling. भाई बात हो सकता है उनको। क्लियर है भाई क्लियर है इधर। बात वाल है। One मेरे को enemy राइट क्लिक मारा remaining. था इनका सेज बेंचो। Flawless. राइट क्लिक मारा था ना ऐसे ही है भाई। वो एम ही नहीं करना चाहता वो सोचता है सब तुक्के से मर जाएं। Stay alive. I want किसी को ये their बकी life, चाहिए not क्या? yours. बकी मेरे पास है एक है ऑलरेडी। मेरे को बकी चलाना आता नहीं है। दूर में क्या मारना पड़ता है? राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक? हाँ राइट क्लिक
40-60 मीटर्स के अंदर तुम राइट क्लिक कर सकते हो, सिंगल शॉट जाएगा उसका। अच्छा, और सामने होने से लेफ्ट क्लिक तो? हाँ हाँ। Cutting their vision. Don't miss me too much. Slow down. साइड के पीछे राइट। मैं ब्लाइंड जाना ते हो क्या कर रहा है? Stealing sight. Over there. Meet the Smith. टीपी कर ले नहीं, डेडलॉक टीपी कर, डेडलॉक Player टीपी कर। standing. Sound sensor up. रुक जा। Sensor tripped. One enemy Alt kick, remaining. Hear alt, you? alt. I catch you. Ultimate ready. वो बच्चा फेंकेगा, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं। नहीं अब नहीं फेंक पाया, अब वो खुद ही करेगा डिफ्यूज। इजी है। Pull them to their grave. Nothing. भाई 3 में से एक भी अल्ट में आया ही नहीं भैया, अभी तो डेडलॉक की एक भी अल्ट में नहीं आया। 3 बार। देख मैं अल्ट करूंगा वो हट जाएगा, ये मैं तो मुझको पता है। जाओ उसके सामने। अरे वो वेट करो ना भाई, 10 सेकंड रहता है भाई, वो पुश कर रहा था, उसको मार देते बस। Everyone having fun? If you're not, you're in the wrong line of work. अबे नहीं आता यार डेडलॉक इसको यार, किसको पकड़ा दिया यार। इसने पता है पहली बार भाई मैंने देखा कि डेडलॉक ये ओमन तूने सर ओमन में क्यों टीपी किया आगे उसका? 3 में से किसी भाई इसने 3 अल्ट किए थे डिफेंस में, एक भी नहीं आया। चौथा अल्ट अभी किया, फिर एक भी नहीं आया। एक्टिवेट किया और कुछ भी मार दिया, तो ऐसा नहीं करना, होल्ड करो थोड़ा। और वो दीवार है ना, वो साइड पे लगाने से चल लैंप पे लगाने। I have the spike. Cutting their vision. मैं ब्लाइंड। Enemy spotted. Hey, nice and slow now. Enemy spotted. चले। हाँ। आ जाओ मेरे साथ ऊपर। होगा फॉरवर्ड करो, वेट कर, उधर ही वेट करो। कट करो। सुनो ये क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्लियर कर रहा हूँ, चलो। Gonna fall back here. Blocking movement. One enemy remaining. ये बी प्लेयर। Not so fancy now. वीरान तेरे एक झलक से मैं पागल। I know I give you guys a hard time, but you're better off with me in your butt than those assholes shooting at you. जिसने भी 3 किल लिया, वेले। क्या हुआ? Need a drop. मोटी चैन है, मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग। इसको वॉल इधर इंप्रेस हो रहा है, ठीक है, वो वॉल नहीं करेगा अभी पाथ पे, हर बार टैकल करता रहा उसको, तो वो पिक करेगा, ठीक है। तो ओमन भाई मरना नहीं, स्मोक को तुम। तो उन पे पैसे नहीं है, रुको। क्लोज एंगल्स। लीडिंग टारगेट। Reloading. बी चलो। बी चलो, फक इट। अरे ये खाली है भाई, क्या बे यार। पीतर। ये नशेड़ी बी बोल रहे हैं भाई, ये तो ए पे प्लांट हो जाना चाहिए था इजी। Spike drop. I have the spike. मैं स्पाइक लो। हां मैं पोर्टलैंड खेलना ना अल्टे मेरे पे। पर मारे को क्यों तोड़ा भाई? मेरे को तो भरोसा नहीं है भाई, वो मेरे को क्यों तोड़ा? तीनों को मार देगा भाई। ये साइट में बैठा है, व्हाट इज दिस? Blinding. मरेगा ना तू के भाई। उसने हाफ ऑलरेडी कर दिया था, देख। अरे तुम मरने के बाद डेड लो भाई, इतना साउंड ही नहीं है कि डिफ्यूज कर रहा है नहीं। और बी जाओ, जरूरत नहीं है, तुम ए भी जा सकते हो क्योंकि वैसे बी पे रोटेट करेंगे ना, पकड़ो। पता नहीं क्या है, बी जाओ ब्रो, बी के चक्कर में मरवा दिया भाई तुम लोगों ने। तो बी जाएगा तब तक मैं मर जाऊंगा ना, अगर मैं मर गया बी क्लियर था, बी पे बच जाएंगे।
क्लियर था तो फिर कैसे डेडलॉक में मर गया? That is अगर the मैं मर गया वो बी ले लिए Energy's तुम good. लोग बी पहुंचे नहीं तब फिर लौड़े लगे तुमको क्योंकि ए पे फाइट मिलेगा Stealing sight. Hitting the brakes. Over there. ये क्लियर करना Back in a flash. भाई इस स्मोक में तुम लोग क्या क्लियर करके My गए ultimate रे? is ready. मैं कहाँ से क्लियर करूँगा भाई? खेलने दो मैं कौन होता हूँ क्लियर करने वाला? चुप हो जा Last player standing. एक heaven एक Spike short, दो down heaven एक A. short. स्मोक में है तो कॉल दो भाई ड्रोन कर देते हो भाई, इस बार नहीं किया, इस बार वो आ गए क्लोज में। ऐसा कुछ हो गया तो पोजीशन बोल ले बस सबका फोकस ब्रेक होता है सुनो सुनो मेरी बात सुनो, वो जो स्मोक दे रहे हो ना वो सही है तब जब भाई सब इधर से जाए शॉट से, ठीक है? एक बंदा उधर से बात से आ रहा है भाई तो हेवन मांगता है भाई स्मोक। बराबर है एक भाई हेवन दो, एक हेवन दो और एक इधर दो, बस इधर और कुछ नहीं। ये माँ की चूत जाओ ही मत मैं तो बोलता हूँ। ए और रोना मत बिलोंग करो चलो चिल में खेलो बस इनको चलो फिर क्या तुमने क्लियर नहीं किया ये सब मत बोलो अपन बी जा रहे हैं वैसे ओमन। नाइस ओमन Be right back. अरे माँ की चूत दो बैक साइड भाई दो आदमी इधर है ब्रो। हाँ ये जा हाँ हाँ ये चलो Drone going out. One enemy remaining. नाइस Last player standing. Spike down B. राइट साइड बैक साइड भी हो बैक साइड आ गया। Missiles away. माँ चुरा अल्ट कर दो। Live munition. नीचे आ गया था, जंप के नीचे आया था, साउंड आ गया था नीचे। कैरो एल्बो तो घूम के नहीं आ रहा 30 seconds left. एल्बो से राइट साइड पे हाँ बॉम्ब उठा I got the गया। spike. यू हैव टाइम ये सामने लगाना पड़ेगा। 10 seconds left. Spike planted. जो उनका भाई 2v1 है ना भाई, 1v2 है अभी। तेरे पे अल्ट है वैसा। पता है भाई पर 1v2 है ना भाई। 1v2 कहाँ है, 1v1 है भाई, क्या बोल रहा है? अरे वो विंगमैन वो नहीं करेगा, उसको इन्फो ही नहीं पता तेरी। This is how it ends. मार्ड्रिला अरे तू ऐसा क्यों चिल्ला रहा है डेड लोग यार दो बंदे हैं भाई इधर ऐसा क्यों बोल रहा है तू Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. अभी तू शॉक क्यों हो रहा है ब्रो तेरे को इन्फो देना चाहिए अरे मेरे को बोलने दो तू शॉक मत हो तू इन्फो दे चाहे स्मोक में हो कुछ भी हो ऐसे ना बंदों को बुरा लग जाता है भाई और मतलब फोकस ब्रेक हो जाता है घबरा जाते हैं सब नहीं तो बंदे चिल में खेल के राउंड भी निकाल सकते हैं मैं वही तो बोल रहा वो तो भाई याद है तुमको नियॉन वाला उसको मार दिया एक 3v3 था यहाँ पे अरे तुमने स्मोक चेक नहीं किया फिर ये वेले जवाब भी दे रहा है उसको फालतू बातें हो रही है मत करो ये सब अरे क्या जवाब दिया मैंने भाई? मैंने बोला तेहो ड्रोन करता है ना हर बार, वही चेक करता है, बस यही बोला। दो बंदे इधर नहीं बात पे Target spotted A. You're nothing. One suppressed. भाई One मेरा और enemy डेडलॉक का तो remaining. भाईचारा है भाई, मैंने कुछ नहीं बोला उसको। जवाब देना पड़ा ना प्लान करो और पीछे करो, ठीक है? उधर से लेना मेरे को Doing a thing. नहीं
दोनों बेंच चौथे बेंच चले गए। अगर कोई मरा ना भाई गे तू लेस्बियन हो भाई तुम गे तो छोड़ो। पनौती है ये तो। जवाब देना पड़ा ना वेले कि अरे मैंने तो ऐसा किया था वैसा किया था। Match खेलने की point. जगह तक वो बोलना पड़ रहा है। वो मैं बोल रहा हूँ। अरे इतना नहीं सोचता भाई मैं। तू मर गया फिर वो बोलते बोलते ब्रो। छोड़ो भाई, होगा। छोड़ो भाई छोड़ो, अब मैंने छोड़ दिया भाई उस बात को। खराब आदतें मत डालो भाई। अगर चिल में खेलना है तो बातें करो, लेकिन तुम खुद ही ट्राई हार्ड कर रहे हो। हाँ बोलो बोलो भाई। लिटरली भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है रेना बात कर रहा है स्टार्टिंग में बात क्यों नहीं कर रहा है। मैं तो तुमने मांगा माइक तो लगा लिया ब्रो तुम्हारे लिए। लेट्स गो भाई लेट्स गो। Back in a flash. उनके पैसे नहीं है। वो जब से खेल Who's next? No escape. My ultimate is ready. Nothing there. Dead. I'm pissed. One enemy remaining. डेडलॉक तेरे अल्ट में आज तक कोई आता भी है? मर गया। Oh, he fought. Well done. जी जी जी। भाई डेडलॉक के अल्ट में 5 अल्ट किए इसने पूरे मैच में, एक भी किसी भी अल्ट में नहीं आया भाई। ये पता नहीं कैसा हवा में करता है, ऊपर करता है, क्या करता है। उसका अल्ट 0 है पर माइक 100% पे भाई 200% पे उसका तो कितना वॉल्यूम है भाई। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार। मतलब डेडलॉक कितना इजी अल्ट है यार, सीधा कर दो इजी है, हो जाता है। अरे भाई बात वो नहीं है ना भाई, पेशेंस भी होना चाहिए ना भाई। इसे अल्ट करके फटाक से फेंक दे रहा है भाई। हाँ फेंक दे रहा है वो, और पता है वो हवा में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा उससे। वो ऐसे मार रहा है जैसे कि भाई उसका एचपी का तेरी यार रेना अच्छा था। भाई रेना ऐसा समझा रहा था जैसे हमारी और डेडलॉक की एकदम हाथापाई हो गई हो। वही ना भाई, हमने तो कुछ इतना सोचा भी नहीं है जितना उसने सोच लिया। अरे भाई वाह। कोई ना, तुम क्या खेलते हो और इसमें? मैं यूरू ले लेता पर छोड़ो, अब क्या है, तुम तो खेलना है उधर तो मैं ये ले लूंगा फिर। क्या बोलते हैं उसको भाई, और कुछ ले लो, मैं ये एक्स्ट्रा ले ले रहा हूं। बॉट भाई बॉट। हेलो भाई। हाँ देख रहा हूँ कौन सा सेंटी लो। फ्लैश हो जाता तो अच्छा रहता भाई। कोई भाई बट दो स्टोर है अपने पास। नाइस, ये हुई ना बात। चलो भाई I don't try. लेट्स गो। I do. अल्लाह अकबर बोलो भाई, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर जय भाई। श्री जीसस क्राइस्ट भाई। अल्लाह अकबर भाई। जय श्री राम बोलो भाई। उसमें क्या है भाई अल्लाह अकबर में? कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है? See if I can hack into that brimstone's bracelet. अल्लाह अकबर It's भाई। like our हेलो हेलो, brimstone. कौन बोल रहा था He ये? won't know how to fix it. भाई जी ये है ना इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम, हल्ला रबीब। तभी तो देंगे चूत, नहीं तो अल्लाह की माँ की भोसड़ी। ये तो कहीं कहीं ये तो कहीं कहीं पहुंच गया भाई। हेलीकॉप्टर जिसने नहीं दी चूत अल्लाह की माँ का भोसड़ी। अल्लाह की माँ का भोसड़ी क्या? हाँ भाई डेफिनेटली भाई। तुम लोगों को पता है नहीं, तुम लोगों को पता है भाई, अल्लाह वाज बोर्न बाय भाई क्या हो रहा है? रुक जा रुको, सब शांत रहो, गेम पे फोकस करो। रुको कुछ अलग मुद्दे से भटक रहे हैं हम अपने। कन देना बताओ। मेरी गांड में आ रही है। नियॉन के पिछवाड़े पे दे भाई। नोक दो बेबी। Gonna fall back here. वो खड़ी है। 30 नियॉन। नियॉन बैक। तो लगा है ना, चलो ठीक है। सेशन मार के ना जाए बस। अरे नहीं आने का उस चूते में इतना दिमाग ही नहीं है फर्स्ट राउंड में। मैं यूट्यूब पे खेल रहा हूं स्टार्स सिटी 1 तेरी झलक से मैं पागल। मैंने डिस्ट्रैक्ट किया तो ट्रिप ही लगा दे। हेवन। अरे एम करना अस्त्रा भैया, क्या कर रहा है तू? अरे मैं तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि तेरा एम नहीं लग रहा? क्या कर रहा है? अरे मैं तो फायर कर रहा हूं। One enemy remaining.
अरे काटने जा रहा था मैं। ब्रीच हमारा हैकर है। क्या है हैकर? अभी देगी इसकी मां चुदेगी बॉटम पे देख। ब्रीच हमारा हैकर है भाई, क्योंकि इसको पता था कि ब्रिम आएगा और पता स्पाइक का टाइम पूरा निकल गया और ब्रिम आ भी गया भाई उसके पास। अरे मैं कॉल्स दे रहा हूँ उसे पार्टी में भाई। भाई ये भोसड़ी का डिस्कॉर्ड पे अपनी माँ चुदवा रहा है, मैं सुट्टा फूक रहा हूँ आराम से बैठ के। ये रंडी की औलाद है ये। नहीं नहीं करते पीके में टार वार लग जाएगा। अस्रा भैया ये मैच जीजी हो गया भाई। नहीं है भाई, नो लाइफर मार के। अस्रा भैया ये मैच जीजी हो गया भाई, बता दिया मैंने। भाई अगर दूसरा अकाउंट में इमो 3 पीके तो फिर क्या ही बोले बहनचोद। हो गया भाई ये गेम। यार ये रंडी के कभी जा नहीं पाएंगे भाई लाइफर भाई। अकाउंट से मैंने किया वो बढ़वे गया। इनको म्यूट कर दो क्या? बहुत कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई। कर लो यार पार्टी में बात कर लो। उससे बात नहीं करता मैं। अबे काश रेज 110 है। हैंडल लो मेरी। Doing a thing. Watch out. Go, go. Reloading. One enemy remaining. हैंडल ले भाई, हैंडल ले। बच्चों रंडी के भाई ये पार्टी में ही होके भाई एक दूसरे को गाली दे रहे हैं भाई, वो टीम में। Reloading. तो चुदाई के समझ क्यों बुला लेता उसको? Gotta go. क्या? Tack, tack. ओए उन पे 2 बंदों पे नहीं है भाई, ठीक है? 2 गरीब है और 3 अमीर है। मिडिल भाई तुम सब कोई खेल रहे हो ना? कोई खेल रहे हो तुम सब भाई। गरीब बोल रहे हैं भाई। मिडिल हां मेरे लास्ट राउंड का है। इधर आता है फिनिक्स, ठीक है? फोटो दोगे तो वो फ्लैश करे। Enemy A. Too slow. आ जाओ ब्रिज। नियॉन आया कनेक्टर। Spike down A. निकल पीछे से उधर। स्पाइक लेके निकल जल्दी। दो आए वाटर्स 200 किल कर, मैं मारता हूँ 1-2 बंदे। चल झूठा मैं नहीं मारता। Last player standing. भाई ये नियॉन सब ये बकचोदी करते हैं क्या? जज ले लिया और बस भागते रहते हैं पूरे इलाके में। मेरा दूसरा अकाउंट है, मैं कभी भी थ्रो कर सकता हूँ तुम्हारी रैंक। मेरा मेन अकाउंट है, मैं तभी थ्रो कर सकता हूँ। चल लो तुम सारे थ्रो हो। तुम सबसे बड़े थ्रो हो गए गेम के। फिर तो बता दो तू मेरा नहीं देखा 2023 में इमॉर्टल करके छोड़ दिया मैंने। जैसे चुटकी को दिया सिल्वर से ऊपर अकाउंट नहीं उठ रहा था। इस चूते को दिया था तूने। ये मैंने पता है क्या करा, मैंने इमॉर्टल करा। इस रंडी के ने मेरे को कहा जो ये खेल रहा है साथ में कि भाई मेरे को इमॉर्टल लॉबीज खेलने देना भाई, मैंने कभी नहीं खेली। इस मादरचोद ने एक ब्रीच हुआ, नियॉन हुआ और ये वो साइफर, तीनों को म्यूट। मेरा ने तेरी कुछ लिख सुना। I got spike. Spike drop. There. Be right back. There. Concealment. Reloading. 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 Hitting the brakes. Last player standing. Spike down B. भाई यार ये पिछले 15 मैचों से ओनली जज चलेगा क्या भाई? ये क्या कर रहे हैं भाई सबके सब? अरे नियॉन से जज ही होता है भाई। अरे नियॉन का 100 बार रेस सब जज चला रहे हैं उनके। They will scurry. मैं ये चलाऊंगा अब। नॉर्मल सी मूवमेंट देता है उनका नियॉन। यार तूने असरा ले लिया यार, गलत किया तूने। Go, go, go. Reloading. Reloading. Go, go, go. Reloading. Reloading. I'm out of here. Push forward, Charlie. मैं टर्न कर दूंगा, ठीक है? उस डगआउट पे तो तुम मार। I'm out of here. Let's go. Concealment.
Be right back. You're dead. Slowing them down. Prepare for hellfire. Spike down A. Last player standing. ये सब गांड मार के चले जा रहे भाई, बस अपने बंदे ही मार दे रहे भाई। ये ब्रीच और नियोन ही जानबूझ के कर रहे भाई, नया आईडी है। Fight till the end, no matter what. Reloading. Go, go, go. तुम बात करो ना। Gotta go. अरे तू अभी तक सुन रहा है क्या? Go, go, go. I'm out of here. Yep. Nice try. Gotta go. Obscuring vision. Back in a flash. Someone is B. Blocking vision. Enemy spotted. Spike's down. Spike down B. Last player standing. No worries, Charlie. No worries. Gotta go. ये तो बहुत बुरा हो रहा है भाई। अरे बात बहुत कर रहे हैं भाई, अगर शांत होके खेले ना, बात इतना कर रहे हैं भाई, शांत होके खेले तो भाई कब का जीतते हैं अपन। मेरे पे ब्लाइंड नहीं है। क्या चाहिए? Let's start. चल 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 दे रहा हूँ, यहाँ से दे रहा हूँ। Right there. Flash out. जाना मदरचोद। रंडी की औलाद दे दिया फ्लैश, गांड मरा तू बहन के लोड़े ये ले तू। Back in a flash. कहाँ मर गए फ्लैश? We're good. Cage 3. मैं थ्रो कर रहा हूँ भाई पे जाके। Last player standing. Spike down. थ्रो कर भाई, सरेंडर करते हैं, थ्रो कर दे। कर दे नहीं सरेंडर। नहीं जा रीमेक जा कर दे सरेंडर कर देना। विजन भाई कर दियो जल्दी। कर मार दे भाई थ्रो कर दे विजन भाई। चूतिया जब से बोले जा रहा है बजे जा रहा है भाई। इसकी माँ मर जाए बहन के लोड़े ब्रीच की भाई, इसकी माँ की चूत। अरे करना सरेंडर। कर दिया भाई, चूतिया होंगे मैं कर दिया भाई। तेरे पार्टी में भाई वो। अरे माँ चुता की पार्टी इसकी, माँ चुता की पार्टी भाई ऐसी। Breathe in, breathe out. भाई सुबह 5 बज रहे हैं। तेरा रेंज वेट ना हो। गुड भाई यार। Spike drop. Trevor. I have the spike. My cover is destroyed. Shocking. Concealment. Flash Blocking out. vision. Line them out. Gonna fall back in. Knocking them. Last player standing. Spike down B. मेरे को फांटा भी चला नहीं। They're usually distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. कौन चिपका है वो? कुत्ते का बच्चा। चढ़ा दे भाई, जो भी गाड़ी चढ़ानी है तो से। क्या लगता है कौन होगा भाई? मैं तो राउंड मैच के स्टार्ट में बोल दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, थ्रो कर दे। कौन है देखो क्या। मैं भी तो ये बता रहा हूँ इसको। Make me proud. भाई फर्क तो हमें नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम क्लिप के लिए खेलते हैं, हमें क्लिप मिल चुकी है, अब तुम जो करना है कर दो भाई। गेम डिलीट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। Don't miss me too much. क्लिप चाहिए थी, मिल गई भाई। इजी। बैक बॉल पकड़ उसको। Slow down. They're dead. Planted. That's 3. One enemy remaining. I'm out of here. वीरान तेरी कुछ किसे मैं पागल। My ult ready. हाँ साचल करके आ सकता है ना, मैंने वो ट्रिप थोड़ा गड़बड़ डाला।
नॉर्मल तो हो जाता है बट ज्यादा ऊपर लगा दी साची कर रहा अरे तुम पे 0 पे है ना Reloading. मैं लगाता हूँ नेक्स्ट मैच। साइबर बंडल की स्किन ही भाई मेरे को अंदर से घुटन हो रही है भाई, ये मैच कब खत्म होगा, कब दूसरा खेलूंगा मैं। भाई हर मैच कैसे हो जाता है मेरे को ये बताओ भाई। क्या कल भी ऐसे ही हुआ था भाई। ये बढ़िया लगती थी मेरे को स्किन, बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम। फिर भाई थर्ड मैच चल गया फिर में आई है। आज भी वैसा हो रहा है, परसों भी वैसा ही हुआ। क्या फिर छोड़ के चली गई? लेके आगे आता है, फ्लैश करता है वो, और इधर पे ये डब्बे पे आएगा वो, ठीक है, ये डब्बे पे आएगा। Enemy A. Concealment. तू बचते आ रहा भाई। Joke's over. You're dead. अबे तू थोड़ी सा वैसा सा कैसा है तू यार विजन भाई, फुट्स देता हुआ आ रहा है, एकदम भागता हुआ पायल बजाते हुआ आ रहा है भाई। मैं शिपवॉक कर रहा हूँ 120 यार। मेन क्या मेन भाई पता नहीं था वॉल्ट करेगा यार करके। ट्रैप है तेरे पे। Cage triggered. हील होगा रंडे और अच्छा तू गोट है, तू ले लेगा ये और निकल लेगा। Cage triggered. I have retrieved the spike. ना होता तो भी भाग जाता। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। कैम चेक कर लेना। मार चो दो इसकी, मार चो दो। हाँ सही कह रहा है भाई। बीच में चेक करता रहे भाई कैम किधर पे है वो। चेक कर रुक ना। सही कह रहा है, चेक कर। 30 seconds हो left. जाएगा फिर अब इतना लेट। छोड़ ना फ्लैंक है वो रंडी का, तू फ्लैंक भी नहीं है भाई वो। फ्लैंक भी नहीं है भाई वो, बॉट है ये तो भाई। मैं तो भी भाग जाता। एक नहीं कर रहा भाई, गंदा प्लेयर है साइबर। Trust me. आई एग्री भाई। Reloading. बढ़िया 3 किल लिए मैंने। Gotta go. मैंने भी 2 तो पता भाई जो भी देख रहा है पता, ये तीनों के 3 पार्टी में भाई, और टीम में बोले आ रहा है कंटिन्यूअसली 3 टीम में बोले आ रहे हैं भाई। अरे मैंने फिनिक्स को मारा है बट उसके क्या? मारा है तो किल नहीं काउंट हुआ फिर। फिर भी तेरे 3 नहीं बन रहा भोसड़ी I'm के। out of here. अरे चुप करना यार, तू अपनी मां चुदवा ना कैलकुलेटर बहन के लोड़े। झूठ मत बोल। Go, go. Doing a thing. Trick shots. My ultimate is ready. Obscuring vision. Slow. मैंने नहीं किया। One enemy remaining. Later. तुम टेंशन मत लो भाई, मैं तो डिफेंस में सबको छोड़ डालूंगा। Last round in the half. तब में हम लोग भी तो If you're not spending your cash, नहीं नहीं तुम्हें कुछ at least buy me something fancy. भाई अपनी टीम की बात कर रहा है बस। अपने बंदे भाई। मैं तो ऑफ करने वाला हूँ भाई डिफेंस इस बार आज। I'm out of here. Right there. Don't miss me too much. Blinding. शो साइबर बीच में क्यों तू? Clearing out. Slowing them down. अबे क्लोज है जज लगता है। क्यों पुश कर रहे हो भाई? अटैकिंग है। हाय 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 क्या देखा मैंने? होता है भाई कभी कभी। कैसे हो रहे हो? 140 समझिए वन। Hi! I'm pissed. Last player standing. Flawless. Nowhere to run. Switching sides. I'm out of here. आता हूँ अभी इस साइड आ रहा हूँ, इस बार आ रहा हूँ, पानी वाली। अबे इस राउंड के साइड जाना। हाँ, इस देख आ राउंड रहा के साइड जाना भाई। आज पुश हो गया, D3 कर ले। D3 ऐसा भाई सुनो मेरी बात। अरे नहीं हो पाएगा ये, चूतिया प्लेयर में लगे भाई। टीममेट पता नहीं कैसे है, बजे जा रहा है भाई 3 के 3 पार्टी में, और बस बजे जा रहा है कंटिन्यूअसली। ये मैं आती कॉल दे स्टन देता हूं। दिमाग खराब करती है। 2 मैच अच्छे जाते हैं, तीसरे में ऐसे लोग आते हैं।
हिंदू मुसलमान कर रहा है भाई। अरे म्यूट कर तो दूंगा, म्यूट ही रखा था मैंने अभी, पर हमारा जो अस्त्र है ना वो बराबर उससे बात ही किया जा रहा है, तो फिर मैंने खोल दिया। अरे बात तो करूंगा ही भाई। क्या बात करनी है उनसे भाई, वो क्या कुछ काम की बात कर रहा है क्या? Spike planted. Go, go, go. Shot. Next. One enemy remaining. I'm out of here. Cage triggered. Reloading. Gotta go. Reloading. They think they're better than us. I can tell. Gotta go. Let's have some fun. They found my wire. Goodbye. Wiped. Enemy mid. अरे क्लासिक की टर्न पे स्मोक कर दे दिया यार। बैकस्टेप जा रहा हूँ मैं। One enemy remaining. Spike down A. Gun here. नहीं इनको किधर है ये? मेन पे था। Spike is A. हाँ लेट हिम प्लांट भाई। हाँ एक साइड पे भाई दूर में। 30 seconds left. Team Ace. नाइस नाइस। Put him in, Taki. पता नहीं ये कहाँ से पूरा घूम गया ये। Charge and shoot. आर्ट सब Easy जगह से। enough. I'm out of here. Where to set up shop? You're done. Go, go, go. देख पुश कर रहे हैं, बिना मतलब पुश कर रहे हैं सबके सब, देख रहा है तू? Last player standing. क्या जरूरत थी भाई? Need that back. Spike planted. Right इधर there. गया भाई वो। क्या सब Gun पी पे गए? here. फिनिक्स 60 था। Need that back. Recovering it.
तुम लोग ये फालतू एक Remember, पुश करके मार bullets hurt. साइफर बिना फालतू में गन उठा रहा था और पड़ी उसको भाई मैं यहाँ से और क्या उठाने गए थे भाई मेरे को बताना भाई। इस पे वेंडर उठाई और था इस पे बकी ये थी। जो जगह था ना इधर, ये जज का जगह है वो, तो वैंडल क्यों उठाने जा रहे हो फिर? यहाँ से पड़ी मिड टॉप से उसको। Rise and bring glory. Doing a thing. Spike down B. Enemy spotted B. Joke's over! You're dead! Enemy spotted B. Flash out! Blasting them. Cage glitch. Concealment. Last player standing. 142 और 204, ये क्या है ये? ये AFK है। 30 seconds left. I'm out of here. 142 to anyone. I'm out of here. Spike planted. अरे भाई सेकंड आइडिया ना भाई, तो भाई अपना नहीं है ना कुछ। Ineka, don't get stabbed. Bad way to go. मेरी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग का बोल रहा हूँ। हाँ मैं सेकंड आइडिया में यही बोलता हूँ भाई बंदों को। मैं तो सेकंड में भी सीरियस खेलता हूँ ताकि लोगों का मैच खराब ना हो, वो आते खेलने के लिए। Gonna fall back here. Concealment. Obscuring vision. Heads up. They found my wire. Guys are down. Last player standing. Spike planted. Where will they go this time? Gotta go. साइफर ए पे लगा देना भाई, मेन ट्रैप डाल दे और एक आउट स्क्वाड दे। पूरा मूड ऐसी तैसी हो जाता है, फिर नेक्स्ट मैच में भाई ऐसे ही हो रहा है। फिर भाई पता है क्या, अपन नहीं खेल पाते अगर नेक्स्ट मैच भी अच्छे बंदे आते फिर। आर्ट्स का ट्रिप अरे इन जैसे लोगों की वजह से तो गेम खराब हो रखा है पूरा। Be right back. Gotta go. Slow down. Enemy spotted A. Spike down A. Spike A. One enemy remaining. My ultimate is ready. Flawless. We crushed it. Should we celebrate or something? Fine. Fight's not over, you know. Go, go, go.
Astra plant, Astra क्या? वो अपना plant पे हेल्प करती है। अच्छा 2 स्टार आगे डालना भाई प्लीज, यहाँ पे डालना पोलो स्टन कंकस में। तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं पुश कर रहा हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ इसलिए। नहीं मत करो ना। अरे पुश चलो ठीक करेंगे, है, जा करो। आगे स्टार डालना। Joke's over! You're Don't dead! miss me too much. साइड छोड़ दो, साइड मत जाना, 5 आइटम रीटेक कर लेंगे। एक बंदा फ्लैंक जाओ, वेले तू फ्लैंक जाओ। अरे लैंड हो गया भाई मेरा तो। देख के वेले तुम्हारे पीछे। Spike planted. और तो फ्लैंक चल वेले, ब्रिम को मारेंगे। अरे मूजली का सिटी शॉटगन में घुसा हुआ है। हल्ट कर दे अगर चाहिए तो। चाकू नहीं पकड़ना होता भाई, कुछ भी लौड़े पूरा लग रहा होता तो मर गया होता ना वो। अल्ट है वेले, अल्ट मार दे, हार्ड से Nice and slow. Last player standing. वेस्ट करवा दी चूतिया हाइट। Match point. दोनों मार दिया भाई लिटरली। चलो वो तो मार दे, वो थ्रो कर रहा है भाई, तुम कैसे मार दिया भाई इतने लो में? किसको? मेरे पास ट्रिप्स नहीं है। अरे अल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अरे क्या करना है भाई बचा के? खत्म है तो खत्म करने की सोच रहा हूँ ये मैच। मेरा तो हो गया ना दिमाग खराब पहले ही। मैं तो चुपचाप हूँ भाई, अब किसी से कुछ नहीं। नहीं दिलाइए मेरे को। उधर पुश कर लो भाई। ईमान भाई दियो। मेरा तो हो ही गया वैसे भी। Back in a flash. Hitting the brakes. Pissed! I punish you. चल। Reloading. करो पुश भाई। Camera taken out. Spike planted. Enemy down. कलर था एक। हाँ आगे साइड कलर। डिफ्यूज कर। Prepare for hellfire! मौली भी आ गई। कहाँ पे तेरे पे साइड पर? आने वाली मौली। Last player standing. Clutch. My ultimate is ready. You copies are nothing. नहीं था। Give me a हाँ moment. पुश जिंदा था बहन के रोड़ा, मैं मरा हूँ। रानी तेरी I'm out of here. ब्रीच मेरे से मांग ले। Gotta go. नहीं आ रही आउटसाइड पे भी भाई। बुलडॉग की गाड़ी मांग ले। नियॉन ये ले, जेट से लग रहा ना। Be right back. भी ही है सब। फिर भी कितना भागता हुआ आ रहा है नियॉन, साइफर छूती है दोनों के दोनों जबरदस्ती का। मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो तूने ही मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया है, मैं देख रहा था रेस के ऊपर, पीछे देख गया भाई मैं। तू ब्रेन डेड लोड़े, कुछ भी बात कर रहा था भाई। ऐसे तो किल नहीं हो रहा है भाई। Spike planted. Eagle eye. Where is everyone hiding? Enemy spotted. Last player standing. Attackers win. हाँ भाई एक डेथ मैच। भाई मैच खराब जाए भाई, लेकिन ऐसे ना जाए भाई। ये बंदे क्या करते हैं कि भाई मेरे को स्टन करता अगर मैं इंस्टॉल कर देता, इसलिए मैं इंस्टॉल करता। तू सही करता है, तू बढ़िया करता है, तू बढ़िया करता है। फिर हम एंट्री को तरस जाते हैं, तू बढ़िया करता है, बहुत बढ़िया करता है तू। वही तो बोल रहा भाई, बंदों का नियत ही खराब होता है भाई। फिर हम एंट्री को तरसते हैं भाई कि एंट्री नहीं हो रही, हम तरसते ही रहते हैं एंट्री को, कोई ना।
फिल ही कर तू। चल मैं तो घुसता हूँ कम से कम। भाई बंदों का नियत ही खराब था भाई, नियत ही खराब था भाई पूरा। कर दो। जीरो फैंग लगाऊं? चल लगाता हूँ जीरो फैंग। काले काले कलर में लगाऊं, ब्लैक वाइट हाँ कैसा? किसी में भी लगा दो, पिंक लगा दो पिंक। मतलब यार वैसे वैलोरेंट हरा नहीं पाता है तो ऐसे टीममेट देता है भाई, ले खेलो भाई इनके साथ। उसका बात सुना, बोल रहा है कि अरे ये कौन देखता है भाई, ये रैंक पुश आज के जमाने में कौन देखता है भाई, ऐसे बोल के भाई। Match found. रैंक पुश नहीं देखता है फिर क्या देखता है भाई कि डेथ मैच? मेरा एम चला गया भाई, रीसेट करना पड़ेगा थोड़ी सा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे 4-5 मैच के बाद एक खेलना चाहिए भाई, रैंक सही रहता है। Warm up. अच्छा मैं हमको क्यों बोल रहा है? Tarana, clock's ticking. कौन है ये पीनट? Fight. डायमंड 1 का है। Break's over. जानता है भाई शायद से, वो दोनों अपन दोनों की बोला उसने। Drop. Bye, monsieur. Bye-bye. Alice. Back off. हम फ्री फायर मार रहा है भाई। Got one.
monsieur. Kill. That's 3. 4 down. Nice try. Smart move. What? Go away. Bye, monsieur. Ten kills remaining. Alice. Smart move. अरे भाई उधर से इधर से तो वेले बढ़िया मार रहा है भाई। सभी बढ़िया मार रहे हैं, 20 के ऊपर वाले सब बढ़िया मार रहे हैं। वो तो पीरियड AFK हो गया। Five kills remaining. Kill. Get lost. Found the spy. Back off. One kill remaining. Not the worst. रानी तेरी झलक से अरे हाँ तुमने GTA का थंबनेल बना दिया था क्या? नहीं बनाया भैया, नहीं बनाया। अच्छा ये देखना कैसा लग रहा है। WhatsApp पे भेजो। भेज रहा हूँ। हाँ देखो भेजा मैंने। तो बनाए एक हॉरिजॉन्टल एंड ये वैसे इसमें पीसी में खुल नहीं रहा, वैसे टाइप में भेजो, फोटो फोन में भेजो। देख लो। फोन में तो वेबकैम है मेरा फोन भैया, अरे हाँ डायरेक्ट फोटो भेजो ऐसी। हाँ सही। तुमने तो वैसे बनाया है भाई। ये GTA का थोड़ी ना, ये तो वैल्यू का ही है।
नहीं वैलो के, अरे वो माइक्स का। ओ जीटीए का तो मेरा अलग है भाई, वो बना के रखा हूँ पहले से। ठीक है, पूरा एआई का है ना एआई। नहीं पूरा नहीं है वो, नीचे वाला एआई के नहीं है, ऊपर वाला है। बट वो हॉरिजॉन्टल वाला एआई के नहीं है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल वाला एआई के है, नीचे वाला नहीं है। ये टेक्स्ट वेक्स्ट सब एआई है ना। अरे ऊपर का बोल रहा हूँ, ऊपर का पूरा एआई है, ठीक है। और वो दिख रहा है, वो तो साफ दिख रहा है। हाँ नीचे का नहीं है। बढ़िया है। Match found. अरे सिल्वर बुलेट भाई। हेलो सिल्वर बुलेट, हेलो। सब प्लेट है भाई, मैं अकेला डायमंड 2। आई एम अ वैम्पायर। अब आएगी डायमंड, देखना डॉज होता है फिर डायमंड आता है। क्या बता। बढ़िया तो हुआ है भाई। और तुम क्या बोल रहे हो कि भाई गोल्ड आ जाते तो वो हो जाता है। क्या गोल्ड आ जाते तो क्या? कम माइनस क्या कम प्लस होता है। हाँ होता है ना, माइनस बराबर लगता है लेकिन प्लस कब होता है? हाँ पर इधर 18 प्लस हुए ना इधर बाइंड वाले में। तूने खेला होगा ना, क्या खेला होगा? मतलब खेला होगा तो देख 19-15 पे है। नहीं नहीं मैं वो नहीं बोल बोल रहा रहा हूँ कि जो नॉर्मली भी खेलते हैं ना, मतलब जैसे मैं डायमंड लॉबी में खेलता हूँ तो नॉर्मली भी खेलता हूँ 10 किल 12 किल ऐसे, तब भी मेरा हो जाता है 19-20 प्लस। ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता तब भी हो जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ। पूरी एल्गोरिथम है भाई इसके पीछे। Match found. बहुत लेट लेट आ रहे भाई, मतलब सुबह लेट का आ रहे टाइम है लोग ना, अब अपडेट सब को। बस इस लास्ट मैच है, इसके बाद जा लेट रहा आ हूँ मैं। रहे भाई। हाँ हाँ सेम सेम मैं भी जा रहा हूँ। I don't try. I do. चौधी होने वाली है लेकिन रैंडम आ जाएगा उसके पास, अभी चला गया वो। आ गया रैंडम बोला था। सुबह के टाइम बकचोदी तो होती है भाई। डॉज करना है तो बताओ भाई।
स्मोक्स नहीं अपने पे कर देते हैं भाई, हारना तो है ही है वरना। Don't worry, everyone. I won't tell them what scares you. मैं हिल नहीं रहा, ठीक है, रीमेक करते हैं। ऑटो पे है ना माइक? हाँ ऑटो पे ही है। ठीक है। I'm out of here. सुबह के टाइम तो यही सब होने वाला है। या एंड कर दे इधर ही, क्या करना है? हाँ एक्चुअली करना चाहिए भाई, जब भी ऐसा होता है ना एंड कर देना चाहिए। अपने को तो भाई 2 मैच खेल के एंड दे रहा है। करना चाहिए, चलो एंड करते हैं अभी इसी के साथ। Enemy A. Enemy A. Yoru's down. You blinked. नूब आए क्या? नूब तो नहीं आए? Enemy spotted. नहीं नहीं आए। नूब आया तो खेल ले भाई अपन। मार रहा, शॉट्स मार रहे भाई। ये फेड ऐसे जॉर्ज कर रहा है भाई। हाँ फेड भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। हिल जाऊँ क्या? एक सेकंड, तुम्हारा भाई ऐसा मत करना फिर भाई, तुम भी हिल जाओ वो भी हिल जाए फिर। नहीं मैं हिल नहीं रहा ना। Last player standing. आए? है? Getting tired is optional. Keep the energy up. अबे ये क्या हो गया? अबे तूने हाथ लगाया था क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, अभी वैसे ही जैसे खड़ा हुआ जैसे पहले खड़ा था। ब्रो नो वे ब्रो। Go go go. अबे कैसे यार? अरे फेड का क्यों नहीं हुआ? और Eyes on Yoru. तुम्हारा कैसे नहीं हुआ पर? हाँ भाई मैं तो रीमेक कर रहा था यार, हुआ नहीं। Doing a thing. Taken out. Try again. Spike planted. I'm low, okay, I'm low. One enemy remaining. Tet, you should know better. देखो उनका I belong here. We all belong here. Reloading. My ultimate is not ready. मेरे से ज़्यादा नहीं है किसी का भाई, 32 that। हाँ योरू का भी है, ठीक है भाई, इतना भी क्या सोचना। बोल रहा हूँ बस मैं। I'm out of here. Find a way through them. Reloading. Gotta go. Destabilized. Don't miss me too much. Making cover. Got him. Enemy A. R2. Pilot killer. Enemy A. अरे बहुत है, ओवर बहुत है। Slowing them down. ना ब्रो, पिस्टल से मार दोगे उसको, टीपी के। 87 ठीक है, ओमन 87। पिस्टल निकाल देनी चाहिए थी मेरे को। ओमन 87। अभी ये सेकंड राउंड हो, क्या थर्ड राउंड हो? Spike planted. What the fuck? किसी भी बाय नहीं है। बैक स्टेप देख लो भाई। Next.
player standing. One enemy remaining. ये 87 क्लासिक से मार दोगे, रिस्क मत लो. Be right back. Thrifty. ये गधा ओप पकड़ा है भाई और साइड में उधर वो खेल रहा है भाई, बताओ. Do not let my double shoot you. You will die. Go, go, go. भाई अटैक में कौन चेंबर लेता है मेरे को ये बताओ भाई. तुमने इसलिए उसका चेंबर ले लिया ये बकचोदी करने के लिए. अरे होते हैं भाई, सुबह का टाइम है भाई, भंड भंड लोग आते हैं. ऑर्बिटर ले ली भाई बिना सोचे भाई. बोनस राउंड में ऑर्बिटर कौन लेता है? Back in a flash. One enemy remaining. My ult is ready. Nice and slow now. Hey, we all see you. गिराने तेरी Chamber. किस्म पागल. I marked them. out of here. You shoot them. ऐसा भाई ले ले ऑपरेटर ले. तेरा शील्ड है ना? तो शील्ड से क्या है भाई उसके? I'm out of here. तो ये उससे तो अच्छा है भाई. एक शॉट लगेगा तो भाई वापस पिक बैक करना. ये शील्ड टूट गया तो फिर शील्ड है तो पिक कर. मिड पे पिक कर, मिड पे पिक कर. Go, go, go. अरे साला उसने फेक ही दिया भाई बाहर. Where are they? Reloading. उसने फेक ही दिया क्या? Gotta go. Bring them down. Shortcut. Don't miss me too much. Show me a target. No Slow distraction. down. Reloading. Go, go, go. Take hold. स्मोक होता है सीटी. स्मोक ही नहीं है. Spike planted. Destabilizing. Enemy spotted A. Bring them down. Over there. We found one. उसके बाद मारो. बैक स्टेप देख लो. बैक स्टेप किधर लगा है? One enemy remaining. Flawless. Now this pleases me. Instinct only goes so Go, go, far. go. Tail covers. नहीं सही है, वो उसने अपने लिए लगाया ना, अपन ही जा रहे हैं, ये तो क्लियर ही है. ठीक है, मिड में वो खड़ा ही है, यहाँ आ ही नहीं सकते ना. वो सही लगाया उसने 20 तो फिर ठीक है. अच्छा ट्रिप तो सही लगाई थी उसने. ये तो हेवन वाला गेम हो गया. 20 वाला गेम प्ले हो गया. मुझे वैसे क्या जाने वाली थी. Every choice matters. Go, go, go. पर्ल तो अभी आया है भाई, कैसे चला जाएगा? पर्ल व स्प्लिट तो अभी आया ना. Bring them down. I'll find you. Doing a thing. Last player standing. Flawless. भाई जज ही होने वाला है भाई. वैसे भी जरूर फेंक लगा लिए, लेगा क्या? अपने तो फैंटम पे यार. कोई ना भाई, अपन ए बी खेल रहे हैं, उन्हें पता है भाई. वो फिर जज लेके ए पे खड़े हो जाएंगे, उसमें क्या है, नॉर्मल ही है वो तो. अरे अभी थोड़ा धीरे खेलते हैं. Show yourself you can. अभी रुको, मैं जज नहीं पकड़ा ना भाई. Stopping fire. Gonna fall back here. Over there. Enemy mid. Face your fear. One enemy remaining. नाइस चैम्बर, नाइस. Nothing perfect, but उड़ता हुआ मारा भाई रेस को. रेस पर नहीं, जेट को. Fun? If you're not, you're in the wrong line of work.
न्यून घुस मत अभी, क्योंकि वो जज लेके खड़े रहते हैं थोड़ी सा। There. थोड़ा पीछे रहो, रिवील के बाद जाएंगे तो बिना फुट के जाएंगे, पीछे आ जाओ सारे। पुश कर। उसने हाँ कोई बात नहीं, अनएक्सपेक्टेड रहेगा ना, निकलेंगे। हाँ चलो अभी बिना फुट के चलो। ऐसा फट से घुसेंगे, ठीक है? Gonna fall back here. चलो Hitting the brakes. Gotta go. I'll find you. Link. I'm out of here. Spike planted. Last player standing. They're blind with fear. अरे नो वे ब्रो क्या कुछ भी इतना लकी कैसे हो सकते बंदे? तो फुट्स देता हुआ जाता है, बताता हुआ जाता है भाई, पता नहीं कैसा है। नहीं भाई, वो देख नहीं रहा था भाई, वो भाई तूने उसके एक प्लेयर को मारा यहाँ पे, उसको इन्फो नहीं मिलेगी और तू टॉप फ्रैगर है भाई, वो उनका फेवरेट। हाँ अच्छा हाथ पे करने, ठीक है? देखो ऐसे मारा भाई वो। पीरो है भाई, पीरो। गार्डियन अरे गार्डियन से तो लगता है इजी, मैं भी मारता हूँ गार्डियन से। गार्डियन से ऐसे तो नहीं लगता ना भाई वो। I have this fight. Ready. वैसे करके मारा, कुत्ते हुए। अबे जंप करके भाई ये मार रहे हैं। अरे भाई लिटरली। Here. अरे तुम Stand aside. Bring them down. Who else? Where are you? One enemy remaining. लो हो, ठीक है? Spike planted. आराम से खेलो। तू 12 किल पे कब पहुंच गया भाई, इतना मारा तूने? मैं हर राउंड 2 नहीं मर रहा हूँ बस। तुम घुसो ना भाई साहब। मैं घुस ही कहाँ पा रहा भाई, एंट्री पे वो आ जा रहा है खुद ही इधर ही। I'll go in first. Then I'll throw number. उसने मोटिवेट Go, go, go. अच्छा फैंटम देना अपनी। ठीक है, वो मोटिवेट कर दिया, फिर मैं भाई घुस रहा हूँ। उसने बोला कि देख रहा है ऐसे On my mark. ऐसे बोला मेरे को। हाँ मोटिवेट तो किया था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो घुस रहा हूँ। इनिशिएट तो हो ढंग से। करो ये करेंगे, ठीक है? इधर अल्ट करेंगे इधर, ठीक है? और भाई थोड़ा पीछे रहो अभी, वो करने दो उसको, बच्चों दियो उनको। You want to play? Let's play. Face your fear. Heaven. One heaven. But I'm out of here. One heaven. One link. Destabilizing. One city. भाई कोई इन्फो तक नहीं दे रहा मेरे को यार, हेवन पे है। मैं तो बोल रहा हूँ। पता था मेरे को भाई, लेकिन कोई इन्फो तो दे कम से कम। Last player standing. भाई उनका लग रहा है, मेरा कैसे नहीं लग रहा? मेरा तो फैंटम पकड़ा हूँ मैं। अरे भाई ये मत करिए भाई उसने मेरे को ऊपर से गिर के मारा भाई, गिर के ऊपर से। Is a trap. मत करिए। एंट्री भाई कर अपने साथ भाई। अब हर राउंड ऐसे एंट्री दिला रहे हैं, फिर भाई डिफेंड नहीं हो रही। इधर पे वो कर रहा है। Go, go. Reloading. चूतिया है इसको। तेरी इतना एम लेके फिरता हूँ मैं, पता तेरे को। एटलीस्ट लॉक करके बजाता तो नहीं हूँ। Bring them down. Slow down. Enemy तेरे spotted. से एंट्री एक हो नहीं रही। Be right back. Destabilizing. My ult's ready. Stopping fire. Spike planted. There. I got
One enemy remaining. That's 3. ये मार भाई देख छूतिया है सब So much for their elite agents. देखा भाई चिंबर गन पकड़ा करो भाई Last round before the switch. Don't look back. कोई दिक्कत नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं है करो Gotta go. I need a gun. Thank you. I'm out of here. Reloading. अब तो लास्ट राउंड है एक्स्ट्रा गन खरीद लो Reloading. मेरे लिए एक्स्ट्रा गन डाल लो इधर Reloading. There. Reloading. अरे एक्स्ट्रा गन खरीद से फेंको गीगा भाई फेंको ना क्या एक्स्ट्रा गन Go, go. पड़ी तो है वो पड़ी तो है Breaking them. No, we're good. Back in a flash. Nice and slow down. Left. Oh, shocked one. We'll get to them. One enemy remaining. Flawless. That was clean. Keep it up. Switching sides. Trust me. भाई उसके मुंह पे आ गए बता मैं एकदम से और तूने स्टन दे दिया तो फिर तो और भाई उसका गेम खेल के फ्रस्ट्रेशन कम होने की जगह मेरा खून खोल जाता है वही सेम यार बंदों की वजह से भाई पिछले मैच में जो आया ना तुम देखते 3 बंदे भाई स्पीकर देखो तुम 3 डुलिस्ट के साथ खेल रहे हैं बिना इनिशिएटर के सॉरी बिना स्मोक के खेल रहे हैं इतना आगे यार निकल तो सकता है दिया Spike down B. टीम अच्छी आई है नो डाउट लेकिन One enemy remaining. खड़ा रहे वो मैं खड़ा रहे ब्रेकिंग बैड भाई टीम तो अच्छी मिली है लेकिन हम बिना स्मोक के खेल रहे हैं फिर भी मैं तो नूबड़ा ही हूँ खैर Surely they can do better. Let's send him packing. क्या नहीं वेले नहीं था भाई Marked one. एक ही था मर गया मिड में था वो मर गया I'm out of here. Yep. One enemy remaining. Spike down B. Flawless. Absolutely demolished. मारे आ रहे हैं भाई ये लोग तो तगड़े I know I give you guys a hard time, but you're better off with me in your butt than those assholes shooting at you. Gotta go. I'm out of here. देखो एक उनका गरीब है ठीक है और एक अमीर है और सॉरी 3 अमीर है और एक मिडिल क्लास है बस फिर भाई क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता वॉच ए गए ना भाई स्मोकी तो नहीं है I'm out of here. कुछ अलग लेवल का बंदा था वो कुछ अलग लेवल का बंदा था वो Too slow. Spike down A. One enemy remaining. लेफ्ट साइड I'm out of here. ब्रेकिंग बैड भाई वो कुछ अलग लेवल का बंदा था Gun here. Didn't bring a I'm snack. out of here. Did anyone bring a snack? Gotta go. वो कुछ अलग लेवल का बंदा था भाई ओए आना ना इधर आना छोड़ो
Watch me. हमारा नियॉन भाई, नियॉन तगड़ा खेलता है, पता ना नियॉन खेलता क्यों नहीं लेकिन। पर मैप में नहीं खेलता ना मैं। अरे वो क्या दिख रहा है भाई, देखो बता। मिड क्यों खा रही है भाई? हेलो तेरी सेंसे कितनी है नियॉन? One enemy remaining. मैं ही पूछ, एक्सक्लेमेशन कह रहा है भाई, सेंसे पूछ रहा हूँ। Flawless. Lola, I know you'd be proud. I'm ready. Thank you so much for subscribing. Gotta go. हाँ सेंसी था भाई, मेरा 2000 DPI पे भाई 0.537। ओह और भाई ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई मैं पोलिंग रेट पता है तुमको? पोलिंग रेट रेट Go, go. हाँ नहीं। Let's go. मारो ना। अरे I'm out of here. Don't miss it, you butt. अरे यही तो बकचोदी हो जाती है। Gotta go. No distraction. Bring them down. फालतू हो जा रहा है। भाई आइसो हमारा कुछ अलग मार रहा है यार, Making cover. मतलब कुछ मार रहा है भाई, कुछ भी। Watching here. Destabilize. Spike planted. भाई मेरे को पीछे रहना पड़ेगा, ठीक है? तुम जाओ घुस के डैश मारो। मैं कैसे घुसूं? ब्रांड कर रहा है ओपन उनका सामने। Last player standing. घुसो कुछ भी फेंक दो और पीछे आ जाओ, मैं पीछे रहता हूँ, घुसता हूँ, ठीक है? तुम्हारे उस पे। भाई ये क्या कर रहा है? छोड़ो भाई, क्या ही करेगा वो? करवा दे। जीतते। Okay, Go, go, go. it's going to be good time. अरे अपने प्रीलोड दो यार, हो गया। फैंटम दो, सॉरी फैंटम दो। हमें दो 0 दो। I'm out of here. Gotta go. पूरा अल्ट कब आएगा भाई? तब से मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा अल्ट। 2 बार आ चुका है मेरा अल्ट। मैं किल ही नहीं कर रहा हूँ तो अल्ट कैसे आएगा? भाई मैं चाह रहा हूँ तब से तुम वो करोगे, मैं अल्ट करके जाऊंगा। मर जा रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर। आओगे मेरे साथ? Bye-bye. Enemy down. Face your fear. One enemy remaining. Spike down B. Spike B. Don't miss me too much. लॉर्ड चोद लो भाई, इसको चोद लो भाई, ये मेरे से ले लेना चिप। Match point. उसके मुंह पे स्टन दे दिया भाई मैंने। Come on, let's win. इसी ने खेला तो पैसों का मैच लिख ओ भाई पैसों का मैच लिख रहा है भाई वो। ना हेलिक्स भाई उसके मुंह पे स्टन दे के आया हूँ मैं, इनको पता। सुनो क्या काम करो, जंप करके, ठीक है? इधर पे फेंकना, ठीक है? इनको आने दो, वैसे भी अपने पे स्मोक्स नहीं है। जंप करके, नहीं उधर से पीछे रहो, पीछे ही खेलो, जंप करके फेंकना, मैं मारूंगा और पीछे आ जाऊंगा फिर। आ रहे वैसे, ठीक है? आगे उसने मिड ओमन मिड। भाई तू पीछे भी तो देख। कैसे निकाल दो यार। ना ऐसे नहीं। Last player standing. इसको अकेले छोड़ दे। Spike planted. ब्रो हेडर से निकाल दे, इसको फेंक दे, उन पे पैसे नहीं है वैसे, ठीक है? नहीं लेंगे भाई, वो ऑफ लिया राउंड उनका खत्म, उनसे वैसे तो हो नहीं रहा है। वो भी ठीक है, ये भी सही बात है भाई। Not your best. फ्लैश है वैसे। You know the drill. Gear up and get back out there. I don't want any sass about it. अब 4 राउंड है मेरे अल्ट के लिए। चिपर ये राउंड खेल लो, फिर इधर अल्ट कर देना, ठीक है? आए तो हां थोड़ा सा भी फूट है ना भाई, सीधा फेस योर फियर्स। ओके
भाई 10 किल पे फेड ही पहुंच गया भाई, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आ गया हो। अच्छा हाँ रिवील ठीक है। Who's next? Be right back. Spike down mid. One enemy remaining. Here we go. Down. Defenders win. डाल दे लिंक डाल दे। रानी तेरी मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसको विजन गेमिंग पीपीसी कर दूं, ताकि मैं भी अर्धरेट जब डालूं तो मेरा भी ऐसे हाईलाइट हो गया है। चलो कोई नहीं। विजन पीपीसी अच्छा है भाई, शॉर्ट फॉर्म। विजन भी अगर तू विजन भी लिखेगा ना, ओनली विजन, तब भी अच्छा है। तुमको पता तो है ना मेरा। अरे पीको भाई वेलकम टू स्ट्रीम। माय फकिंग लक, वाईफाई का जस्ट रिचार्ज कर दिया और लाइट गई अभी 3 दिन का। अरे भाई शिट भाई मेरे को वो देखना है एक बार, जब मैंने उसको स्टन दिया था ना ओमेन को। बेचारा दुपक के बैठा था, वो ऑलरेडी स्टन था, तूने स्टन दिया शायद उसको वहां पे। मेरा तो स्टन दिया था भाई। हाँ वो ऑलरेडी स्टन था, और फिर मैंने स्टन के ऊपर एक और स्टन दिया उसको। और मैं वापस भी चले गए ना भाई, वो उसके लिए और इरिटेट था। हाँ फाइट भी नहीं ना, वापस चला गया साला। फिर तो और कोई मारेगा। किसी ने मारा था सही उसको, किसने मारा था? यार भाई बंदे आ जाए भाई, स्ट्रीम पे आ जाए। मैं तो भाई गाली दे मेरे को थोड़ा। सुनने में मजा आएगा। Spike down B. हाँ फेड ने मारा था भाई, फेड ने। देख तो सही, वो जाके देख। तभी मेरे को लगा कि भाई उधर ऊपर होगा। Last player standing. Spike down B. साले ने हट करके काट मार दिया। भाई ओ भाई भाई ओमेन का देखो भाई, ओमेन का पीओवी, इसका क्लिप बनाता हूँ मैं इसकी, ओमेन की। जिंदगी में एक बार भी नहीं करेगा वो। उसकी कोई गलती नहीं है, वो अच्छा डिसीजन था, पर उसके बंदे बन गए। पता है क्या, उसके बंदे नहीं मरते ना, ये भाई बढ़िया रहता। फिर उस पे प्रॉलर आ रहा है, उस टर्न आ रहा है, Last player standing. इसे क्लिप बना के डालना चाहिए और गाना लगाना चाहिए, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। भाई साहब Match point. देखा तूने, वो देखा? हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस मैच, हाँ मेरा ये नहीं लग रहा था भाई। अब ड्यूलिस्ट कैसे करते हैं एंट्री बताओ भाई। 3 ड्यूलिस्ट भाई, चलो हो गया भाई। वो अच्छा मारा था, आइसो भी अच्छा खेल रहा था भाई अपना। हाँ इसे तो तगड़ा मार रहा था, मैं तो मार ही रहा था। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई कि भाई ऐसे मैप के हिसाब से रखो। तुम इस मैप में भाई सोवा बढ़िया खेलते हो भाई, फर्स्ट मिले थे अपन इस मैप में ही सोवा के साथ तुम्हारे, तो भाई मैप के हिसाब से रखो भाई। नहीं मैप के हिसाब से ठीक है, मैं जब लॉक कर देते लोग तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम अड़ के रहता हूँ, ले लेता हूँ मैं। भाई पिछले के वो शॉट्स देखना भाई। एसेंट में मैं गेस करो क्या खेलता हूँ मैं एसेंट पे। एसेंट में नियॉन ही खेलते हो क्या, और क्या? ना तो क्या खेलता हूँ भाई। और भाई लिटरली मेरे को लीडर बनाना, लीडर। बना दिया। अब तो जा रहे हैं ना? हाँ जाना है, अब तो जाना ही है। जाना है ना, तो फिर ठीक है रुको। एसेंट चीट्स ऑन, ठीक है। अरे इधर आओ अटैकर में आओ। क्या स्टैंडर्ड लगा दिया? हाँ अरे टेस्ट करने के लिए चीट्स ऑन है। कर लो कुछ भी। This is the end. बाय कर लो सब, ठीक है। और ए साइड पुश करो, ठीक है। Let's go. World's not saving itself. Go, go, go.
Really? स्पाइक नहीं No ली one मैंने, got ठीक the है। spike? हाँ कोई बात नहीं, वो तो दिखा मतलब बंदे नॉर्मली क्या करते हैं Gotta go. ऑब्वियसली। तेरे पास लाइनअप होगा और क्या कुछ होगा? वही तो भाई एक चीज नहीं है भाई, तुमको पता है ना वो मॉली फिलिक्स फ्लैश लाइनअप। हाँ वो पता है ना मेरे को, होता है ये तो इसमें, बेसिक है, ये तो बेसिक है, करते हैं ठीक है? लोग। ये तो बेसिक है भाई, तुमको पता तो है ना। फिर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है? फिर मेरे को लगा नहीं पता होगा भाई। पता है भाई, हाँ देखो देखो खिड़की इधर से, घोस्ट खिड़की मोड से कर लो, फेंकता है भाई। घोस्ट मोड कर लो। आऊं? खिड़की से नहीं भाई, आऊं? नहीं नहीं, मैं घोस्ट मोड कर लो ना, इधर ए पे आओ। अबे बी पे हूँ। हाँ वो तो पता है ना, ए का तो पता है। ओ माय गॉड। हाँ तो हर जगह पता है भाई मेरे को। अरे तुमको ये स्पैम स्पॉट पता है क्या? इधर पे, ये जगह पे, ये जगह पे तो पता है क्या तुमको ये स्पैम स्पॉट? नहीं 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 पता स्पैम का। क्या विजिट देख रहे हो फिर भाई? अरे यहाँ से कहाँ इधर स्पैम खड़े होता हो, है? पता नहीं क्या तुमको? इधर खड़े हो इधर पे। अरे एसेंट चला गया था भाई, उसके बाद से चालू किया मैंने देखना। अरे रुको मेरे ये My ult's ready. अरे ओडिन गार्डियन इधर से होता है भाई, देख रहे हो? ओ भाई इधर से भी होता है। नाइस। इधर आओ, घोस्ट मोड करके इधर आओ। I'm out of here. घोस्ट मोड कैसे ऑन करना है भाई? ओ अरे कोई भी असाइन कर लो भाई, की बाइंड ऊपर। हाँ इधर पे आओ, इधर पे। हाँ इधर मेरे पास आओ पूरा, ठीक है? इधर मेरे पास आओ, ऊपर आओ। हाँ दिख रहा है ना, नीचे का दिख रहा है ना सब? हाँ दिख रहा ठीक है। है, अब देखो ये भी है मेरे पास, ठीक है? इधर स्विच के पास जो भाई कितने किल्स ले आऊं मैं इधर इसमें बस। और हाँ और एक ये यहाँ का है और वाला, यहाँ और लेते और हैं। इधर का रुको, इधर ये एक्चुअली ऐसा करना है, ऐसे करके, ठीक है? तो सारे फ्लैश होने के बाद सारे कवर पे जाएंगे ना बंदे, ऐसे करके Watch out. हाँ जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे भाई। ओ भाई ये क्या हो रहा है? पूरे ऊपर वो आसमान में चला गया। Take this. और भाई पता है क्या, वो जो साउंड सर्कल का बात बोल रहा था ना तुमको, हाँ ठीक है? देखो मेरे पे लाइनअप नहीं है, पर मैं देखो इधर पे एग्जैक्ट जिधर डिफॉल्ट होता है ना, जिधर डिफॉल्ट होता है, जिधर स्पाइक गिरता है, हाँ हाँ पता है। ठीक है? उधर पे डालूंगा, देखो। हाँ गिरा है, गिरा है, गिरा गिरा गिरा। हाँ तो भाई ये कैसे किधर भी कर सकता हूँ भाई। देखो अभी सपोज अभी मिड पे आओ, मिड पे आओ, ठीक है? मिड पे आओ, सपोज अभी मेरे को इधर पे डालना है, ठीक है? कहाँ गया भाई? अच्छा यहाँ पे। इधर पे डालना है, ये जो मिड कोर्टयार्ड जो है ना, हाँ ये जो जगह है, ये हाँ जगह है, ठीक है? तो भाई बस तुमको साउंड सर्कल फॉलो करना है, ठीक है? साउंड सर्कल फॉलो करना है, साउंड सर्कल पे वो जिधर भी देखेगा तुमको जंप। तो ऐसे में तो कोई मार ही देना, अगर मिड में कोई होगा तो मार नहीं देगा वो। वेले पकड़ो ना तुम, वेले पकड़ो। ये तो छोड़ो, मैं एग्जांपल दिया तुमको, वेले से स्विच कर लो पहले। कर लिया? रुको 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 रुको, आ गया। अबे ऑप्शन नहीं आ रहा वेले का इसमें। डब्ल्यू नीचे होता है भाई पूरा। ओ हाँ हाँ रुको, स्विच कर। 30. No one's gonna give you what you want. Work for it. हाँ अभी देखो इधर पे जैसे कि ये वाला स्पॉट है, ठीक है? इधर पे आओ, मेरे पास आओ। सपोज मेरे टीम, रुको तुम्हारी टीम में आता मैं। हाँ देखो ये जो स्पॉट है, ठीक है? सपोज अभी तुमको उधर अरे घोस्ट मोड से उतरो। हाँ ठीक है। तो अभी सपोज तुमको इधर पे डालना है, ठीक है? मॉली, मैं बोलूंगा ऐसे मैच में कि इधर पे मॉली डालो, तो तुम कैसे डालोगे मेरे को ये बताओ। क्या उस साइड, बाहर की साइड? नहीं बाहर के नहीं, इधर पे, इधर पे देखो, एग्जैक्टली इधर। अरे उधर उस साइड से खड़े हो, कहाँ से? यहाँ से फेंकना है कि उस साइड से, अंदर से? हाँ इधर से ही फेंक सकते हो भाई, पता है तुमको कैसे फेंकते हैं? अरे नॉर्मली फेंक दो ना ऐसी। फेंक के देखो फिर। अबे क्या बता रहा है भाई? तुम अरे उस साइड से रिस्क नहीं है भाई, तुम ऐसे बंदे एक्सपोज होके तुम ऐसे इधर से फेंकोगे, रिस्क नहीं है क्या वो? और वो तो एक्सपेक्टेड। यहाँ फेंकना है ना, यहाँ पे, यहाँ फेंकना है ना? नहीं भाई तुम मार्क नहीं देख रहे क्या मैप पे? ओ हाँ हाँ, और क्या? वहाँ जंप करके भागता हुआ आएगा और क्या, यहाँ से फेंकेगा।
फेंको फिर अगर पता है तुमको। यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ तक आएगा तो देखो बताऊँ, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, बस यहाँ तक आएगा तो भागता हुआ। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, देख के तो देखो। अरे देखो फिनिक्स एंड वेले का सेम है, ठीक है मॉली, ये याद रखना, मतलब प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम है फेंकने का। Nice and slow now. भाग दिए। Nice and slow now. शायद Slowing them down. Slow down. Slowing them down. हाँ ये गए। Hitting the brakes. Hitting the brakes. अरे हटो भाई, हटो भाई, हटो हटो। देखो ये अभी Careful now. देख रहे हो किधर गिरा, देख रहे हो देखो किधर गिरा, देखो। अच्छा अभी 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 साइड में आओ, सपोज अभी प्लांट हो गया, ठीक है स्पाइक। रुकना मैं मारू, रुकना एक सेकंड। Slow down. हाँ आप गिरा ना, आप गिरा। चल सपोज अभी देखो इधर स्मोक हो गया, ठीक है, इधर पे स्मोक हो गया और इधर पे स्मोक हो गया, और बंदे अपना वो क्या बोलते हैं उसको, अपना प्लांट हो गया इधर, ठीक है, इधर पे प्लांट हो गया अपना साइड पे। हाँ मॉली फेंकना है, कैसे फेंकोगे बताओ? तुमको बंदे को स्लो करना है, ठीक है, मतलब इधर से फेंकोगे फिर डैश मार के तो जाओगे ना तुम, समझ रहे हो? हाँ इधर से ऐसे फेंकोगे और डैश मार के जाओगे, फिर मार के वापस आ जाओगे। सपोज प्लांट हो रहा है उधर, ठीक है, प्लांट का साउंड आया, Hitting the brakes. बस एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली परफेक्ट। अरे इजी है यार, इजी है, तो बस वैसे ही करके करना है बस, ठीक है। आने दो एसेंट को भाई, एसेंट में भी अपन पकड़ बनाएंगे अच्छी। Nice and slow now. फुल भाई, मैं तो ये Don't miss me too. वो बताओ, सुनो अभी देखो, एक फास्ट एजेंट हो गया वेले, ठीक है, और एक मतलब फ्लैशिंग एजेंट और भाई स्लो एजेंट भी हो गया, ठीक है, फिनिक्स। अपन अभी कर सकते हैं क्या, पता है क्या? इधर ये वाला मॉली देखो, मेन पे जाओ। इधर ये एक मॉली है, जब बंदे उधर से आते हैं ना, राउंड स्टार्ट होते ही अटैकर वाले, हाँ लाइन अप होगा ना और वाला। कैसे, ठीक है, और वाले के इधर पे खड़े हो ना भाई, इधर पे खड़े हो। हाँ देखो ये ऐसे फेंकूंगा और ऐसे, ठीक है, देखो मॉली किधर गिरा था, ठीक है, इधर जो भी होगा ना, मतलब जो भी ऐसे कवर तो लगा ना, ऐसे करके कवर लेगा तो गया, फिर फिनिश हो। और एक और है ये वाला, देखो इधर वाला, इधर पे जो होता है, तो भाई ये बहुत सारे किल लिया भाई, पूरा एक एस ही ले लेता हूँ मैं पूरा। तो इसमें क्या है कि भाई अपन कॉम्बो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी ए साइड पे आओ, ये तो फिनिक्स वाला पता है ना तुमको, ये तो कॉमन है पूरा ए साइड का, तो पूरा कॉमन है, तुमको पता है ना? हाँ देखो इधर पे ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे करके इधर ऐसे फेंकना होता है, ठीक है, उधर मॉली गिरा। तो सेम चीज में जो ये लाइनअप यूज कर रहा हूँ ना, तुम वो कर सकते हो, समझ रहे हो? कर रहा हूँ, वो तो देखने दो अपना सर्किल जो होता है। नहीं लाइनअप बना दो भाई, ये लाइनअप बना दो, इधर पे देखो, इधर आओ, Hitting the brakes. इधर आओ, नहीं इधर आओ, Slow down. नहीं हो गया लाइनअप बनाना पड़ेगा भाई अभी। अरे वो नहीं चाहिए, अब लाइनअप बनाना पड़ेगा तुमको। तो क्या होगा कि भाई वो ऐसे वो होगा, रुको मैं बना के बोलता हूँ, रुको तुमको। हाँ ये है देखो, हाँ बस ये है, Slowing them down. कॉर्नर पे टकी लो, मैं बता रहा हूँ तुमको लाइनअप। अरे इजी यार, तू देख तो सही जहाँ मैंने फेंका। अरे सुनो तो भाई, बता रहा भाई तुमको। Slow down. इधर पे एम करो। अरे इजी है भाई। Nice and slow now. हाँ बस, तो एक सेकंड। Slowing them down. नहीं हो रहा, ये गलत है भाई। Hitting the brakes. अब वापस से सेम वापस से। Nice and slow now. हाँ हो रहा है। ये Slowing them down. ये जो फेंके ना अभी, Hitting the brakes. फेंकते रहो। अरे ये थोड़ा गलत हो गया, तुम चेंज क्यों कर रहे हो? चेंज क्यों कर रहा हूँ? लेफ्ट करना है कि राइट करना है, कहाँ लेके जाना है अब? मतलब अंदर लेके जाना है ना कि बाहर? हाँ तुम फेंको ना, एक फेंको अभी, मैं बताऊँ। Slow down. चेंज मत करो, ठीक है, फेंकने के बाद। ये गलत है, और थोड़ा अंदर। Slow down.
नहीं ये और Slowing them down. ये तो और बाहर आ रहा है भाई पूरा। बाहर कहाँ? बाहर मेरे को बताया बाहर कहाँ? बाहर मतलब इधर की तरफ आ रहा है, देखो इधर पे मैं जिधर खड़ा हूँ इधर की तरफ आ रहा है और ओह इधर पे और समझ गया समझ गया। Nice and slow now. अब ये चेंज मत करो फेंको और Nice and slow now. सेम फेंको। हाँ रुको Hitting the brakes. से फेंक ठीक है हाँ फेंक दो Slow. Nice. Hitting the brakes. Slowing them down. बाप रे। ठीक है बस यही है ठीक है। अब क्या करना है अपने को ठीक है। अभी ऐसे मेरे को देखो अभी याद है ना वो याद रख ना। तो अब ऐसे मैं खड़ा होऊंगा ठीक है। इधर पे मेरा वो एक साइड देख लो एक बार देख लो कहाँ था वो। Slowing them down. हाँ याद है। वापस Hitting the brakes. हाँ बहुत सही है बस अभी अपने को क्या करना है ऐसे Nice and slow now. हेलो विजन को बुलाना यार कहाँ गया वो? फाइट दे उसको मेरा तो हो गया। हेलो काजा इनवाइट भेजा रहा था। ओ अच्छा अपन तो जा रहे हैं ना अभी। हाँ जा रहे हैं। अरे मैं ये बोल रहा कि हाँ अभी कोऑर्डिनेट ऐसे करना है कि भाई 3 2 1 फेंको ठीक है। 3 2 1 Slow down. एक्चुअली तुम्हारा पहले गिनना चाहिए समझ रहे हो। तुम्हारा पहले गिनना मांगता है। अरे जब मैं जब हाँ 2 पे फेंको मैं 3 पे फेंकूंगा। रुकना एक सेकंड रुकना। हाँ अब बोल। करो 3 2 Slow down. बस ऐसा ये परफेक्ट है भाई। ये परफेक्ट है ना भाई एग्जैक्टली। हाँ हेलो काजा हाँ बताओ कर क्या रहे हो? अपन ऐसे ही कस्टम में वो जाने वाले थे तो इसलिए चलो लीव करते वाले नहीं है भाई उसमें भाई बकचोदी कर रहे हैं अपन। चलो बाहर आ जाए। नहीं अपन तो जा रहे हैं अभी भाई। जा रहे हो? हाँ यार कब से खेल रहे हो तुम लोग? रात से वीसीडी देके फिर हाँ वीसीडी 2 बजे से खेल रहे हैं 2 बजे से खेल रहे हैं। एक नंबर भाई वीसीडी देखा या नहीं? नया एजेंट आ गया और क्या भाई देखा नहीं क्या? नहीं भाई मैं ये मतलब गेम में नहीं आया गेम में 18 को आएगा। कॉम्प पे सर्च करना खेल ले क्या एक और? खेल सकते हैं वैसे खेलना है तो कोई दिक्कत नहीं। लाइट का भाई कोई लाइट ना चलिए बस लाइट गई तो फिर सब कुछ बंद। कहाँ से हो तुम? मैं तो भाई एमपी से हूँ। बारिश हो रही है? नहीं बारिश नहीं लाइट जाती सिर्फ 5 मिनट के लिए है 5 मिनट से भी कम। पर मेरा वाईफाई जो है वो यूपीएस की जो पावर सप्लाई है वो नहीं लेता। कोई ऐसे होते हैं ना वाईफाई नहीं ले पाते। लगा लो भाई लगा लो। अरे वाईफाई के लिए छोटा सा यूपीएस आता है छोटा सा 1000 रुपए का आता है 1000 रुपए का। अरे वो इन्वर्टर बोलते हैं उसको। 1000 रुपए का इन्वर्टर आता है। नहीं वो वाईफाई का इन्वर्टर बोलते हैं उसको यूपीएस अबे यूपीएस इन्वर्टर एक ही चीज होती है भाई। इतने लोग कंप्यूटर के यूपीएस को इन्वर्टर बोलते हैं। ये 20 लेवल का बंदा है हैदराबादी बिरयानी। काजा आता है तो फिर थोड़ी ठीक लॉबी आती है यार। अच्छे आते डायमंड 3 डायमंड 2 डायमंड 3 ऐसे बंदे आते हैं। चलो कोई और एजेंट खेलता हूँ ठीक है। नियॉन भाई अगर तुम्हें नियॉन खेलना है तो मैं कोई और खेल सकता हूँ। ना मैं डेडलॉक खेल रहा हूँ। तेरी मानी पुतनी यार मैं सब एजेंट खेल सकता हूँ ना भाई समझ रहे हो? अरे मैं भी सब खेल सकता हूँ भैया। तुम्हें क्या खिलाना है मैं खेल सकता हूँ पर किल पे इफेक्ट पड़ेगा याद रख। किल इफेक्ट पड़ेगा भाई। चलो ब्रिम खेलो। अरे ये मत खिलाओ ब्रिम मत खिलाओ। ओमेन खिलो वैसे खिलाओ भाई। ओमेन खेल सकता हूँ। नहीं छोड़ो खेलो भाई मैं कर रहा हूँ ना भाई। चंदू के चाचा ना चंदू के चाचा ब्रीच है भाई काजा ने ब्रीच नहीं लिया ना भाई। ब्रीच लेता वो। चलो भाई इनको खेलने दो रेना को खेलने दो थोड़ी
अब अपन रिलैक्स करते हैं, बहुत एंट्री दिला दी हमने। ये तो हमेशा अच्छा अपने चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांद दे रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तेहो बहुत सपोर्ट करेगा, सोबा नहीं करेगा, तेहो करेगा। एक्चुअली हां लाइन से हां भाई तेहो ही लो भाई। New सुनो एक लाइन है प्लानिंग प्लॉटिंग के वक्त ही भाई ऐसा चीज होता है भाई। देखो मेरी यूटिल्स का कुछ वो नहीं है, अगर एंट्री हो गई तो, अगर यूटिल्स बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो मैं एंट्री में ही यूज कर लूंगा भैया। देखो हाँ हाँ ऐसा थोड़ा ना यार तुमको लॉज क्यों हुआ, गेम बता रहा है कि मत खेल माइनस होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेडिक्शन है मेरा, ये मेरा प्रेडिक्शन है भाई। अब पनो भाई की आज बोलो या आज जो का बोलो। स्कोर सुन, आज का स्कोर मेज पंकी बक्की, ओवरड्राइव शेरिफ, ओनी वैंडल और बबलगम फैंटम। मेज पंग ऑपरेटर आई है मेरे में। नाइट मार्केट मैं बताता हूं सुनो मेरा चलेगी भाई, कलेक्शन बताता हूं। मैं कलेक्शन नहीं क्या हो रहा है भाई? पोलन एलर्जी, जुकाम हुआ है किसी को? पोलन एलर्जी। एलन सोले, अबे पोलन एलर्जी। अरे मैं हाँ हुआ बट सुन लिया भाई। अच्छा 10 बार क्या बोल रहे हो? अबे ओवरड्राइव की शेरिफ है बे, क्लासिक नहीं है। तो क्रेजी लग रही है। क्लासिक कहाँ होती है ओवरड्राइव की? ओ कहाँ लग रही है? Match found. प्लीज यार डॉज कर दूंगा मैं। फिर तो भाई जा रहा मैं। अरे बढ़िया भाई सुनो काजा, यस अगर तुम ब्रीच लोगे तो मैं नियॉन लूंगा, वरना नहीं लूंगा, सीधी बात। 2 असेंडेंट भाई, क्रेजी। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए टीम। सेंटी हो गया, देख सेंटी हो गया। ये सेज इंस्टॉल होकर भाई अच्छा खेलेगा। अच्छी की बात नहीं है भाई। अब तुम क्या बोल रहे हो, मतलब इमो एसएनएल लॉबी में ब्रांडेड बंदे नहीं होते? ये नहीं बोला मैंने। भाई ले लो ना भाई, वो वेले ले लेगा, बस हो गया फिर। क्या ब्रीच यार? फिर ना फिर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है यार। कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा भाई, तुमको आता तो है ना भाई ब्रीच, फिर दिक्कत क्या है फिर? चल फिर स्मोक केगा क्या? अबे वो साइफर खेलेगा तो चारों स्मोक लिखेगा क्या? तू स्प्लिट में ब्रिम नहीं खेलता क्या? ब्रिम नहीं खेलता है क्या? हां खेलता हूं। खेलेगा ब्रिम? चलो फिर ले लो भाई, ले लो, चेंज कर लो तुम्हारी ये। साइफर क्यों डबल सेंटी क्यों लेना है? लेकिन फ्लैश लो ना, प्ले प्लेयर 4 रेना खेलो, रेना। एक सेकंड रुक जा। रेना खेलो, रेना। सही है भाई, साइफर की जरूरत है। अरे बहुत बढ़िया टीम है भाई। हां एक जरूरत है ब्रो, बैकस्टैप। अरे फ्लैश नहीं है यार विजन भाई, फ्लैश नहीं है हम पे। अरे तू रेना खेलता है? क्लाउ ले लेता ना। Stand in my way. ये भी ठीक है। I dare you. ये लौड़ा इंस्टा लॉकर भाई, मैं क्या बताऊं मैं। सही बताओ भाई, उन पे तो चलो बैकस्टैप भाई, चलो अपना गेम है वैसे, उन पे 2 फ्लैश है भाई। हमारा विजन भाई अपनी बात पे नहीं रहता भाई, पता नहीं कैसा है। Racer has access to the Kingdom mainframe, yeah? Just asking for a हां ले friend. लूं मैं। पलटू है ये, पलटू है। विजन भाई गोश्त देना अपनी। I need a drop. बी पे वॉल करके स्टोर से रुका देना बी पे। स्लो वॉल का साउंड है। अरे अभी तो वॉल है तो स्टोर होगा। अच्छा हेवन अगले राउंड से मिड वॉल। लोग में हेवन छोड़ दे, मैं हेवन खेलता हूं। हेवन छूटा हुआ है, मैं वेंट्स पे हूं। एक एक्स्ट्रा क्लासिक ले सकते हो मेरे लिए? भाई सुनो, मैं वेंट्स पे हूं, हेवन छूटा हुआ है। वो घोस्ट फेंक दो और एक क्लासिक पकड़ लो। ये बुड्ढा बहुत खतरनाक है भाई, सब गाली देते होंगे इसको। हां रे, ये कैसा पहले कुछ जाता है। हाँ मारो ट्रिपल किया यार, मैं रीलोड के चक्कर में स्टन हुआ वैसे वो इधर साइड है विले साइड। One enemy remaining. Spike down A.
Reloading. They think we wouldn't fight back. एजेंट में क्या है भाई? अरे कुछ इतना खास नहीं है, हाइप मत बनाओ भाई। ने क्या मारा है देख पहले फटाक करके। हाइप मत बनाओ विजन भाई, कुछ है नहीं उसमें इतना खास। इतना एग्रेसिव है क्या? वो क्या है? नया है इसलिए खास है, वो 2 दिन पुराना हो जाएगा, कोई खास नहीं उसमें कुछ। अरे नया वो नया है क्या? इनिशिएटर है, डुएलिस्ट है, क्या है? स्मोकर कंट्रोलर है। कंट्रोलर कितने बार बोलूं भाई मैं? दो कितने क्या होता है भाई? 2 ही होता है ऑब्वियस। रिम पे 3 आता है भाई। एक दूसरे भाई भयंकर। अरे भाई मैं 2 निकाले यार, मैं स्मोक। हाँ ठीक है भाई, ठीक है निकल जाएगा। One enemy remaining. They were not good enough. They're going to scatter my stuff. Super easy to pick off. जल्दबाजी में भाई इधर स्मोक इधर आ गया, अभी हो गया। चलाएगा? अबे तू पहले दोनों पार्टी में बंद कर, तो मेरे कान में ऐसा एको आता, समझ ही नहीं आता कहाँ। तूने ए बोला, हमको ए सुनाई दिया। अच्छा है, मैंने वही लूंगा। मैंने मतलब समझाने में। मिड साउंड। इधर बी मेन भी है। तू रुका है नहीं पे, मैं जा रहा। Oh my god. Oh my god. One on 5 hit. अरे मौका वेट करना था ना बैठ। 3 उधर है, 2 तो मैंने देखे, तीसरा भी उधर ही होगा। Stim beacon down. साइबर फ्लैग कर, रुक जा। Spike planted. Last player standing. स्पेक्टर से इसको खोल के कौन मारता है? Molly. Molly. No one beats my firepower. I got this. गिगा भाई जब वो एंट्री करने वाले ना, मैं स्मोक तो कर रहा हूँ, तुम इधर स्टन करो और भाई फायर करो अंधा। स्टन दिया था मैंने, उस तुमने स्मोक दिया ना, फिर वो कोई दिखा नहीं मेरे को। 2 स्टन हुए थे। वही तो भाई प्लान है। अब भाई स्टन करोगे 4 को और चारों को अगर पिक करोगे तो बाय कर ले, बाय कर ले। मार दूंगा भाई चारों को मैं। नहीं वो नहीं बोल रहा मैं भाई, मैं बोल रहा कि भाई स्टन करो और स्प्रे मारो अंधा। स्प्रे ही मारा भाई, वेले मुंह पे घुस गया मेरे। मिड वेंट आ रहा है। वो हमेशा क्या करते हैं कि वो और वो करते हैं, तो तुम मत स्मोक्ड ऑफ हूं मैं, स्मोक्ड ऑफ। वेंट आ। मैं भी स्मोक नहीं देता भाई। बी पे अगर कोई ए देगा तो मैं भी स्मोक दूंगा। बी वॉल हुआ। एंटर। भाई क्रेजी एंट्री कर रहे हैं भाई। नहीं रे, वो एक्चुअली वॉल तोड़ दो। हक कर रहा है। Message spike planted. Off your feet. Enemy spotted B. Out of charges. Last player standing. 95. छोड़ दे। बाप रे। मैं जज ढूंढ रहा था, मेरे को जज पास में ड्रॉप करिए, मैं उससे निकाल। I'm saving. I'm saving. अरे ब्रीच मेरे पास आओ, जल्दी ब्रीच मेरे पास जल्दी आओ ब्रीच। अबे भाई तू ना वेंट से मिड खेलना, जरा स्मोक ही नहीं पहुंचते। अरे तो भाई इधर एक छोड़ दे रहे ना भाई। सुनो इधर राउंड स्टार्ट होते ही इधर स्टन मारो, ठीक है? राउंड स्टार्ट होते ही। अरे इन्फो तो मिले कुछ कि नहीं? हां फुट है तो इंस्टेंट स्टन करो। मैं शॉटगन लेके घुसता हूं, फिर खींच के करो पूरा। बी साउंड। Joke's over. You're dead. मिड है। एक हेवन है। एक निकालते हैं, ठीक है? 2 बंदे मिड है।
हेवन के नीचे वेले, हेवन के नीचे, हेवन के नीचे। एक और था। अरे बेटा तू साला गन्नी है मैप में देख रहा था। ये शील्ड है क्या? For you. Satchel out. सीटी है शायद। एक हेवन आ रहा है ऊपर से। One enemy remaining. Last player standing. लेफ्ट रैप अप कर रहा है वो, लेफ्ट। एंटी नाइस भाई यार मैं मैप में देख रहा Talk to each other out there. We communicate, we win. बॉडी को इधर पलट गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। कैसे भाई तुम साइबर भाई मैंने नहीं गिराया, इसने गिराया। इसीलिए बोलता हूँ भाई कोई काम नहीं आते भाई, डबल सेंटी क्या काम आते, कुछ काम नहीं हो रहा, डिफेंस हो नहीं रहा। भाई साइड छोड़ो मत, ठीक है? अरे ट्रिप भी गधे की तरह लगा रहे भाई ट्रिप को। नहीं ट्रिप अच्छी है, गधों की तरह ट्रिप लगा रहे हैं भाई वो। यहाँ की है ट्रिप उसकी सारी। ये आ रहा है। एक ऊपर आगे कोई नहीं। एक ऊपर है, एक ऊपर है। ये साइड के अंदर है। You will not kill my ally. दो हेवन, आई थिंक तीसरा भी हेवन हो सकता है। Got you. दोनों है, दो उससे। पीछे देख, सेज राइट में देख, सेज राइट में देख। One enemy remaining. My ultimate is ready. Bro, don't take risk. Revive कर दे। खेलने दे उसे, खेलने दे। बॉडी का है। नहीं मत करो, रुको, सारे ओपन में, सारे ओपन। खेलने दे। Last player standing. तू बहुत बोल रहा है। नाइस। उसको सुनाई नहीं दिया तो क्या बोल रहा है? मैं तो भाई You're not being shot at, you're doing something wrong. I need this. भाई है क्या? डी रहो। अरे अब उनको पता है रे मैं एक्चुअली तेरे को वेंट्स खेलना है, पता है? तेरे स्मोक से नहीं पहुंचना है वहां पे। अरे वेंट्स ही खेल रहा हूं भाई, अगर देखो वेंट्स खेल रहा हूं ना, अभी बी में बंदे आएंगे, साइफर खाली छोड़ के भाग जाएगा उधर। तेरे स्पाइक पहुंचते हैं क्या बी पे? साइफर सुन ना, अगर बी आएंगे ना तो कॉल के पहले रोटेट कर पा। सिल्वर फेंकना से ठीक है ऊपर से। ए मिड भी है, बी है। दो है यहाँ पे। ओमेन का स्पाइक तो इधर है। Spike down A. ये रहा। One enemy remaining. Spike spotted A. मेन है, ठीक है? ओमन मेन है। स्पाइक ऊपर बैठो। ऊपर कोई नहीं, ब्रीच है तो ऊपर गया है? नहीं बैठ के वो कुछ नहीं होगा, बैठ इससे वो Blinding. My ult's ready. बैठो ना, इधर 3 बंदे चाहिए भाई बैठने के लिए। स्क्रीन से ना जाए, ठीक है? मैं स्क्रीन देखता हूँ। ठीक। वॉल टूट गया। ये रावण एचपी में। Enemy spotted A. रुकना, मेरे को वेट करना। रुक जा, मैं पे हील है। दे सकता है मेरे से? Still here, amigo. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. अब मैं एयर भी जाता हूँ। I need this. मेरे को अबे सुनो, एक काम करो, सुनो। सेज और साइपर दोनों सेंटी तुम ये बी हेवन और ये बी साइड पे खेलो। सुनो एक बार, ठीक है? ब्रीच मेरे को ब्रिम को अरे मेरे को ड्रॉप तो दो। दे रहा हूँ भाई, मांगना। I need this. दोनों वही खेलो, ब्रीच इधर आ जाओ। वो दो सेंटी खेल रहे हैं ना, उनको होल्ड कर लेना। नहीं कर पाएंगे, मेरे को ब्लाइंड देना पड़ेगा भाई, घुस जाते हैं। फिर ए पे ना हेवन स्पॉन देख लो। Healer kick. Off your feet. Of course. One enemy remaining. Flash out. भाई इतना गंदा ब्लाइंड है ये। फ्लैश दे रहा हूँ, ठीक है? Blinding.
मेन पे था। Not one left. अब मैं ए जाऊंगा। ठीक है। Once more into battle. I'm not tired. Are you? उनको लग रहा हाथ में है फैंटम कौन सी है भाई? ज्यादा निकाल दो, ठीक है, ज्यादा निकाल दो भाई हाथ में फैंटम कौन सी है? इकोनॉमी का है। ज्यादा राउंड निकाल दो भाई, ताकि वो डिफेंडिंग में ओडिन ना कर पाए भाई। फिर देखा फिर पीआरएक्स वर्सेस एनएक्स मैं तो हमको थोड़ा इशू आएगा, ये इनको नहीं मिलेगी ना हमको। मिड है। स्मोक Flash out! Joke's over! You're dead! One dead. ऑन 3 जा रहा हूं। Blinding! हीले ले भी। Healing. Remove. Here. टीपी कर रहा हूं मैं, टीपी कर रहा हूं। Trevor! Blasting! राइट और कमेंट। राइट चला गया, मैं राइट चला गया, राइट में। क्या कर रहा हूँ मैं? Enemy remaining. Satchel out. Spike down B. मैंने बोला राइट चला गया, सिटी चला उधर चला। बात मानो ना भाई, मैं जब बोल रहा हूँ कि प्लान करने दो, जरूरत ही नहीं है। अरे जरूरत ही नहीं है। ब्लिंक एंड मेरे पे बोल रहा हूँ। अरे प्लांट उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तेरी यूटिल बच भी गई। भाई साहब ब्रिम भाई साहब, हम डिफेंड कर रहे हैं भाई साहब, हम अरे यार प्लांट क्यों करने दें? प्लांट क्यों करने दें हम? ब्रो नहीं होगा ना भाई, मैं हाँ मैं समझ गया तू क्या कह रहा है, मैं समझ गया तू क्या कह रहा है, बट बंदा पुश करेगा मेरे पे, मेरे सामने होगा तो मैं फिर भी नहीं मारूंगा, तो फिर तो मैं बेवकूफ हुआ ना। नहीं भाई, मैं मैप देख रहा था, तुम पुश करके नॉमी नहीं होगा। कहां मैं ब्लाइंड हो गया था भाई, ब्लाइंड तो नहीं दिख रहा होगा। ए फ्लैश करेगा, रेस ज्यादा बी पे ओमन है। ब्रीच। अरे 100 नाइस। तो पूरा स्प्लिट है, ठीक है, मिड देखते रहना। देख मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम उधर देख लो। Spike down A. 40 टैग है। ओए इधर क्लोज है भाई। एक 75 एक 40 ब्रीच आइटम आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। रुक जा प्लांट ले इसको, अल्ट पे निकालना फिर। One enemy remaining. अल्ट मारेगा वो, अल्ट मारेगा वो। बढ़िया भाई, अल्ट भी वेस्ट हो गया। whole lot easier. जॉड पे जॉड। लेकिन एक बात है, मेरा एम तो जा चुका है भैया, देखो ब्रिम भैया 1 टैप जा चुके हैं मेरे। ओए ये भाई को फैंटम देना ही वाली। ब्रेक बाय मार। स्प्रे चालू हो गया मेरा, अब फैंटम देना। देना मेरे को। अरे ब्रिम पे चली गई भैया, ब्रिम पे चली गई। ये वाली दे ब्रेक बाय मार। I need a drop. इसको Tac, tac. बताओ क्या बोल रहे थे तुम लोग? इधर खेलो ना, ब्रीच और रेस, थोड़ा प्लान करके इधर अल्ट पे खेलो, क्या दिक्कत है? उसकी अल्ट रीटेक के लायक है ना, बी पे एंट्री कर। ठीक है, वो भी सही है। बी और मेरे वो पे बाय नहीं है। स्मोक Blinding. मैं यहीं पे रुका हूं। Cussing. आ जाओ। Clearing out. वर्ल्ड ऑफ कर है। Amateur. ब्रीच। Flash out. वर्ल्ड ऑफ कर है आप। ब्रिम। कर दे मां का बोकरा। Enemy down. One enemy remaining. ये नाइस। मिड है। नाइस वाटर ब्रीच। भाई क्या होल्ड किया आपने ब्रीच ने भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू। Last round in the half. अरे ब्रीच ने भाई ब्रीच ने सबको डैमेज दिया भाई मैंने, सबको। ओए सुन ना, अबे मेरे को फैंटम में स्किन देना। ब्रीच इधर आएगा जरा। कहां अलग ट्रिप लगाऊंगा इसका। भाई 9-3 मत करो यार, 9-3 से डर लगता है मेरे को। अबे 9-3 में खतरा है भाई, ये खतरा होता है। भाई सुनो, बंदे फुट्स आते ही, ठीक है, सीधा। हां मैं तो
right here. Forever. Stim beacon down. Blasting. Volley. Blinding. Flash out. For you. Reloading. Spike down A. ये बहुत लो है. One enemy remaining. Reloading. भाई साहब क्या मार रहा हूँ मैं. Reloading. किधर है ये? यही पे. अरे जी मारो. Bingo. Fully smoked. Switching sides. चार्ज फेंकी वो बंदे को मार दिया. किसने मारा फिनिक्स को? मैंने मारा मैंने. How's that for a plan? कोई घोष दे दो ना. भाई वेले अंदर आ गया था. हेवन आ गया था. क्लासिक खेलो. क्लासिक स्किन है. अल्ट नहीं था मेरे पास. नहीं लास्ट राउंड चला गया. यूज कर लिया था मैंने. लास्ट सेकंड राउंड यूज कर लिया था. हाँ वो रोगी नहीं थी साइड से. मैंने बोला था ना वो वहाँ पे होल्ड कर लेगा. फ्लैश दे रहा हूँ वहाँ पे. स्टन वेस्ट हो जाएगा यार वहाँ पे. ऐसे पीक लेते हैं अब नॉर्मली. छोड़ो भाई ऐसे पीक लेते हैं. वेस्ट नहीं करना है अपन वेस्ट. इधर देता हूँ बैक साइड ठीक है. लेज़र बैक साइड देता हूँ ठीक है. तेरा वो कहाँ गया? बॉल बेकार है. इधर है एक. वो मार दे वो मार दे. One enemy remaining. Last player standing. हेवन. ओहो बढ़िया इजी बे. पीजी भाई इजी. अबे 145 क्या होता है पहले राउंड में? Stay safe. मार गया हुआ. ओमन को. तो हील मारा है ना फिर. अरे अभी मेरे सामने था उसको मारा मैं. इंस्टेंट स्मोक देगा. 145 पहले बार ही मारा मैंने उसको. क्या बात कर रहे हो सच में? इंस्टेंट स्मोक देगा. 145 वो होगा ना फिर. ओए सुन रहे हैं? नहीं 4 बॉडी 1 लेग. यहाँ पे इधर ठीक है. ओ हट जाओ सच मार रहा मैं. हट जाओ. Satchel out. Launching smoke. Enemy spotted A. Stim beacon here. Flash out. Enemy spotted A. Forever. साइड क्लियर कर लो एक बार स्मोक के अंदर की. प्लान करो डिफॉल्ट. ठीक है मैंने प्लान करो. Spike down A. अरे तो तू लिया करना स्पाइक. मैं नहीं कर पाता. भूल जाता हूँ मैं. सिटी ला सिटी. भाई स्पाइक भूल जाता हूँ. मेरे पास स्पाइक है. अरे मैं मांगा भाई तुमने दिया भी नहीं. सिटी लास्ट सिटी दिखा दे को. चिल करो भाई चिल. Oh my wire. बंदे को एक किल में देगा. थोड़ा चिल करो ना. मर जा. सिटी आ गया वापस. वॉल सिटी आ गया. सिटी आ गया वो. गला दर्द कर रहा है मेरा. Stay in range of my stim beacon and we'll mow them down. लादे शॉटगन दे. मैं वो करता हूं. Need equipment. और फैंटम देना अपनी. सेकंड राउंड में. और थर्ड राउंड है क्या? सेकंड राउंड का मैं क्या मांगू? I need this. बोनस खेल ले. फैंटम दो भाई. अरे बोनस का भाई हो गया. बोनस नहीं करना है. I need this. उन लोगों ने बाय किया था भाई बोनस. Satchel out. Launching smoke. Reloading. Stim beacon here. Hey. My own मेरा साइड में. concussing. Clearing out. सिटी आ गया एक. Reloading. स्मोक. घुस गया अंदर. 110 ब्रीच.
अरे तो बस इजी हो गया लाइनअप 110 ब्रीच। ये क्रेजी सा मॉली देखोगे क्या? क्रेजी सा डाल दोनों सीढ़ी लो। ब्रिज देखना उधर। Flash out. One enemy remaining. ये भी अरे शायद सही है 110 है वो। कुछ भी मारा ना वो। राइट क्लिक मारा उसने शायद, पता नहीं क्या मारा। एवेंटेड पड़ा मुझे सिर पे। I need a drop. फैंटम देना स्किन। Talk. I need a drop. अरे मुझे भी कोई बाय दो भाई। एक साइफर का जरूरत थोड़ा सा बाय करना। स्टार्टिंग में बोल रहे थे तुम लोग नहीं है। क्या नहीं बोल रहे थे भाई? जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है बोल रहे थे बैक स्टेप की सबका ट्रिप का। मैं तो पूछ रहा था साइफर की जरूरत है क्या? अबे स्मोक कौन करेगा? साइड में हो सकता है, क्लियर कर ले। स्मोक के अंदर होगा एक। ऊपर हेवन देखना सही, ठीक है? हेवन देख प्लांट जा रहा है तो प्लांट जा। अरे सुन ना, तेरे पे अल्ट है ना ब्रीच। हिडन रही हो, ठीक है? हिडन रही हो। Hiding. My ultimate is ready. हिडन रहा है तो अल्ट होते में। One enemy remaining. ये से दे। मजे में मार रहे हैं। सच में करना, ठीक है? मैंने एस चला लूंगा। सीटी है। जाना मार। इधर है। लास्ट राउंड है क्या? अरे भाग के मार दिया जाटू ने यार। जी Attackers win. हाँ भाई, इशारा है कि मत करो, मत लगाओ। इशारा है। विजन गेमिंग। कौन था इशारे वाला? क्या इशारा? शरारा बता। बातों ही बातों में बातें मत। भाई अपने पास ब्रीच की जगह कोई और इनिशिएटर होता ना तो शायद से मुश्किल पड़ता। भाई एक और खेल ले क्या? मेरा रैंक अप है। रैंक अप है तुम्हारा? इतने जल्दी रैंक अप अभी कहाँ से हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ 73 पे हो भाई तुम? अरे 27 कर लेंगे, 23 हो रहा है मतलब। चलो स्टार्ट करो फिर। क्या है मतलब वैसे वो 0 पे अटक जाएगा, देखना 0 ऐसा मिल जाएगा 23। अगर थोड़ा अच्छा खेलेगा तो मिल जाएगा। एक दो सारा की को 22 मिल गया, देखना। अगर तुम ब्रीच ले लोगे ना तो फिर भाई कंफर्म है भाई। अरे मैं ब्रीच ले लूंगा मतलब? तुम ब्रीच ले लोगे, मैं नियॉन ले लूंगा। असेंडेंट का बंदे थे भाई अपने। और क्या, दोनों असेंडेंट थे भाई। दो असेंडेंट थे, उनका भी असेंडेंट 2 था। लेकिन असेंडेंट का तो मैं भी हूं। कच्चा पक्का। एक बंदे ने कैरी किया था वो इसको। Match found. ओ भाई सारे फ्लैट के आ गए। बस तुम दोनों तेरे को एक फोटो भेजता हूं, रुक जा। अरे हेवन आ गया इसमें तो भाई। ब्रीच इंस्टा लॉक। नहीं ब्रेम इंस्टा लॉक। कितनी पता जब मैं नया खेलता था ना, मैं ब्रीच और सोच रहा हूँ काफी टाइम से रेना नहीं खेला। रेना ले लूं क्या? मेरे को तो भाई लगते थे भाई दोनों, ब्रीच और ब्रिम। तो समझ ही नहीं आता। पता है इनके ना फुटस्टेप भी बहुत सिमिलर है। तो पता है हर एजेंट के ना अलग-अलग फुटस्टेप पता चल जाता है। आते हैं। और अस्त्रा की तो पायले बजती है। पायले और आज इसने पायले बजाई ना, पायले बजाई और रेस मरवा दिया मेरे को पायल में। योगा ऐसे टुक टुक करके योगा मशीन का साउंड। नहीं पर ब्रिम वो ये देख सेम है भाई, पूरा सेम। ओए विजन चेक कर, कुछ भेजा है। बातों ही बातों में बातें बताता। किसका ये? मेरा। कोई अलग आईडी में? नहीं मेरा ये मेरे पहले का काफी। मैं क्या खेलूं इसमें? मैं क्या खेलूं भैया? भाई के घर पे घर की है, मतलब भाई के घर पे। सेटअप का फोटो भेजना। हां भेज रहा हूं। अबे ये मेरे सेटअप की थोड़ी ना है फोटो। तो भेजो ना अभी जिस सेटअप पे भी हो तो। भेज अपना भेजता हूं। तो गिगा भाई तुम सेटअप टूर कब लाओगे? सेटअप मेरा अभी है ही नहीं कुछ इतना खास। तो भेजो ना, भेज दिया। हाँ वैसे फोन में फोटो है, भेज सकता हूँ। ओ भाई ये क्रियो चिमेरा है क्या? हां नहीं वो है यार, ये पेगासस है शायद। निशांत फिर से आ गया भाई। निशांत पिछले मैच ब्रीज था।
महंगी बातचीत है भाई। भाई इसका तो रईसों वाला सेटअप है भाई निशांत पिछले मैच में हेलो आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। निशांत ब्रीच था ना ओपोनेंट। हाँ ब्रीज था केजे। Let's go write this war story, shall we? ओए मत लिखो भाई विजन निशांत भाई स्ट्रीम स्नैप तो नहीं कर रहा हूं। की करे ना। हाल हो सकता है भाई, हो सकता है भाई। डिले मारते ना 40 सेकंड का। अरे भाई मैं बताऊँ ना, मैं सच बताऊँ ना तो डायमंड में कोई स्ट्रीम स्नैप कर ही नहीं पाता क्योंकि पूरा फोकस उनका रहता है देखने पे, वो गेम पे ध्यान ही नहीं दे पाते। भाई ओ सही सी छोड़ दियो, सभी आगे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ वेले भाई भाग जाओ भाग जाओ। मॉडल लॉबी में होता है भाई स्ट्रीम स्नैप, ओए इधर नहीं सुन होता। ब्रिम ओए तू बी खेलियो भाई, तेरे स्मोक नहीं पहुंचेंगे सी पे होल्ड कैसे करेंगे? फर्स्ट राउंड खेलूंगा भाई, मैं फर्स्ट राउंड खेलूंगा इधर बस। चेक करना जल्दी चैम्बर। एनिमी ये कर रहा है ब्रो, हैकर है ये। Launching missile. अल्ट अच्छा नहीं वो है। Reloading. Spike planted. करो करो तगड़ा डैश मारो। वैलोरेंट खेल रहे हो भाई? Last player standing. चलो अपना टीम तो अच्छा है भाई। रेज भी है, वेले भी है, इनिशिएटर भी है और चैम्बर है। Show up now. We live later. My ultimate is not ready. Reloading. ये पोस्ट प्लान तो हो जाएगा भाई। पर वो क्या मारा भाई? वन टैप मारा मेरे को, ठीक है वन टैप मारा और स्मोक के अंदर से मारा भाई। हाँ ना भाई यार, अपन काफी टाइम से जीत रहे हैं वैसे। अबे तू चुप कर जाएगा काली जुबान। ये विजन ऐसे बोलता है भाई, वन टैप मारा, ये मारा, वो मारा भाई। मैं बोलता हूँ स्मर्फ है सामने वाला, और क्या क्या ही बोलूँगा। कर भी तो मैं बोल रहा भाई। कहां से यार? ओडिशा से भाई, ओडिशा। लेकिन लास्ट में से आया यूट्यूब ने रिकमेंड किया। ले फेल दी ले। Last player standing. ब्रो ये हैकर Long. हैकर नहीं है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। विजन भैया इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, हैकर नहीं है, You know the कॉन्फिडेंस। drill. Gear up and get back out there. I don't want any sass about it. और जब कॉन्फिडेंस होता है तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कहां खेलेगा मैं वेले का? हां मैं ये पे ज़्यादा अच्छे से खेल पाता हूँ। बातों ही बातों में बातें बताता हूँ, गैरेज नहीं देख रहा हूं मैं, ठीक है आशा क्योंकि में यहां पे अगर तुझको स्टडी मैं करेंगे घर तो जरूरत लेके पड़ेगी। जाता हूँ। पीछे ही हूं मैं, ठीक है। ये पूछ रहा है किसका अकाउंट भाई? वैसे कॉन्फिडेंट देख, तू भागता आता सीधा सीधा भागता हुआ आता है Missile वो। deployed. Launching missile. Enemy spotted A. Spike spotted A. अब मेरे को मार दिया भाई उसने। क्या सो रहे हो क्या? शॉट पे एक शॉट। One enemy remaining. मार इस यूरो को भाई, इसने मेरे को मरवा दिया। Now they're over. यार मेरा भी मन करता है वैलोरेंट खेलने का, पर मेरे पास This is what it's about. You want something easy? Leave. You want to be great? Keep fighting. मेरे को थोड़ा सस लग रहा है भाई, पता नहीं। तो क्या यूट्यूब ने रिकमेंड किया? तेओ भाई ये चले जाओ वहां पे स्मोकर खेल रहा है ना, आप पहुंचेंगे नहीं साइड पे। ये खेलो। अरे तू इधर आना। खेलता भाई मैं भाई, इधर गार्डन में खेलने भी नहीं दे रहे भाई बंदे। बेटा सामने टीम अच्छी है, सेट लेंगे अभी। मेरा एफ पे Gonna fall back here. कंट्रोल दे रहा। Mike Moniba. Don't miss me too much. भाई मतलब उसकी गोल नहीं मेरे को नहीं लगी, और क्या है भाई ये गेम। भाई सी रोटेट मेरे को लग रहा है भाई। कहां देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं लॉन्ग। हो गया भाई रोटेट, बहुत हो रहा। ऊपर चढ़ा होगा जट, चैम्बर ध्यान से। Teleport's ready. रुकना
Spike planted. अग्गू चैम्बर. Last player standing. One enemy remaining. नहीं साइड तक पड़ा है. नाइस भाई. हाँ हाँ दब तो गया है, लेकिन हमारे चैम्बर ने जो हग्गू करी ना लोग के ऊपर, भाई चैम्बर को मैंने देखा और चैम्बर ने मुझे देखा बस. हाँ भाई आप कौन सा गेम खेलते हो? भाई मैं खेल लेता हूँ GTA है. अरे वो खेलना है क्या? जो भी डेड बाय डेलाइट खेलेगा कल? क्या इंस्टॉल किया क्या? Get out of my way. खेलेंगे. चलो ठीक है. भाई पहले पिक मत मारना भाई, एंट्री इजी हो जाएगी उनकी. भाई स्प्लिट खेल ले, ठीक है स्प्लिट खेल ले वो लोग. दो है यहाँ पे, दोनों डोले. Doing a thing. Bye bye. My ultimate is ready. Outside garage and weak. Multiple. इधर चेंबर इधर है. Slowing them down. यहाँ पे गैरेज आ रहे हैं शायद से. भाई गन मिल जाएगी इधर आ चेंबर. मैं बोल रहा हूँ गन मिल जाएगी इधर, देख ले यार क्या बंदा है भाई. मल्टीपल सी. Grenade is live. चूतिया है चेंबर. तो गिगा भाई तुम ही बचा सकते हो. Enemy spotted. अल्ट इधर पे. Spike planted. एक मेन गया. दो साइड है. Line them up. क्लोज तेरे. Don't miss me too much. साइड चेक कर लो. डिफेंस करना पड़ेगा. Last player standing. इसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पे आ रहा है. Everyone good? 3 जने. Take a sec if you need. भाई आप मोबाइल गेम्स कौन से खेलते हो? मुझे आपके साथ खेलना. भाई मैं BGM में खेलता था पर अभी तो बस टूर्नामेंट कर रहा था भाई मैं. अगर तो ज्वाइन करना तो कर सकते हो भाई. बाकी चैनल के अंदर जाओ, स्ट्रीम्स तुमको दिखेंगे भाई पिछले वाले. क्या क्वालिटी में होती है भाई. अरे बहुत सुने. Be right back. गलती. हाँ थी. अबे भाई अब यार मैं ध्यान नहीं रखा भाई. Spike down A. ये जा रहे हैं अभी, ठीक है. Gotcha, fun. My turn. रेज ने ऑलमोस्ट भाई मरने वाला था त्यो. भाई मैं क्या करूं? वो शॉटगन में मारा उसको पता 80 मिला है रे शॉटगन पे. Spike planted. अरे कोई ना. क्या ट्रायड कर रहे बंदे यार. Last player standing. वो देख भाई वो वॉकिंग कर रहे हैं भाई, हमारे ना मौजूदगी में वो वॉकिंग कर रहे हैं और इजी साइड लेके वो फिर कॉल दे रहे हैं कि आ जाओ. एक गैरेज के बाहर है, तेरे को पता है भी. एक गैरेज के बाहर है भाई. स्पॉट है. अब तो भाई जीजी है भाई, सेव कर लो. All missiles away. That's 3. My ultimate is ready. This is how it ends. Mierda. W तेजो. The corner can I? You all feeling good? We got this. इसने अल्ट मैप के बाहर करी है, देखो पता है. वो इधर से करते ना भाई. चार्ज है भाई अल्ट. मैप के अंदर ही अल्ट कर रही भाई. यहाँ से करी यहाँ तक बाहर को. भाई
इसका इधर से स्टार्ट हुआ भाई, इधर से स्टार्ट हुआ उसका। Back in a flash. Blow down. Who's next? Out. Spike down A. Deployed. Nowhere to run. Sorry, little wind. Gonna fall back here. My ult's ready. भाई बढ़िया भाई। Stim beacon here. ये शॉट पुश कर रहा है, शॉट पुश। अबे ये इधर कैसे बैठ गया भाई इधर? One enemy remaining. These new friends of ours are not too friendly. Need a drop. पैंडल दे, पैंडल दे दे, पैंडल दे दे। मारे को भी बाय दे दो चैम्बर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। ये ले, आएगा शी। रेस भाई नेट फेंको अपना यहाँ पे। अबे वो आज डैशिंग करता है। करने दो ना, बाकी पीछे वाले तो आते हैं ना। Doing a thing. Slowing them down. भाग जा मल्टीपल। Bye. Get him. मैं बी देख रहा हूं भाई। शॉट घुस गया होगा। Drone is down. स्मोक करूं या फिर गान मारूं? आखरा वाला। आराम से चेंबर। Last player standing. अरे डब्ल्यू टीम प्रेम तू मार नहीं पा रहा क्लोव को? Take aim, Zenfire. Let's not complicate it. अरे तू छोड़ भाई, तू अपना गेम खेल यार। क्लोव 1v1 फाइट तो ले कम से कम। अबे ये लोग ना थ्रो कर रहे हैं भाई, ये क्या फालतू की ये चेंबर से साइड नहीं होल्ड होती है। अरे कुछ कहा भाई, एम भी तो होना चाहिए ना भाई। अबे हम 3 खेल रहे हैं ना, एक काम कर दोनों को म्यूट मार दे। उससे पार्टी में बात कर। नहीं है भाई, म्यूट की बात नहीं है। पार्टी में बात बोल रहा कि भाई वो टेओ देख रहा था इधर। Make me proud. देख 3 तेरे चैम्बर के साथ खेल। 3-5 चल रहा है, थोड़ा संभलेंगे तो खेल लेंगे। स्पॉट पे तो अल्टी करना है, ठीक है? स्पॉट पे तो अल्टी करना है। Back in a flash. Enemy spotted A. मत जा। तेरे पे अल्ट नहीं है। पहले वो कह रहा है वेले। Line them up. I'm going in. Hitting the brakes. ये घुस गया क्या? आगे भाई अरे 3 कैसे बचे भाई हम? Last player standing. Flawless. अरे जीजी भाई सरेंडर करो यार। I'll teach them to respect their elders. भाई वो इतने फटे में खेल रहा है भाई, सामने वाले क्या ही बोलूं। और हमारे भाई अरे कुछ भी नहीं कर रहा भाई, वो तो भाग जा रहा है डर के मारे, वो आ ही नहीं रहा। जेट 3 बंदे मारेगा हमारे सामने। वो हमारे कमजोर को देख रहा है भाई, जो हमारे कमजोर चैम्बर को मार रहा है, कमजोर को चुन रहा है भाई। Be right back. Missile deployed. Spike down A. 120 इजी। अरे भाई कल आ गई थी, रिवील आ गया था, क्या करता मैं? वो भी वही चीज। क्या यार तो Last player standing. Smoke. Launching smoke. One enemy remaining. Spike down A. इधर तो दूर गया ये। Out of charges. ये क्या कर रहा है? 30 seconds left.
क्रेजी भाई बराबर crazy। ये क्या गेम पे ले देखा भाई? रिवील आ गया। अबे स्मोक के अंदर रिवील आ गया है। तो क्यों स्मोक के बाहर आओ ना फिर? अरे क्या मोटी भाई, यहाँ इधर था मैं जब यहाँ पे इधर रिवील आया है, मैं रिवील भी हो गया था। तेरे को पीछे आना था, इधर पीछे साइड आना था। भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोग, रिप्ले देख लेना, फायर आ गया था। मैं तेरे को देख रहा था रेस भाई, तेरे पास रिवील आया, तेरे को वापस पीछे आना था, पीछे साइड। लेकिन तूने बुश किया वो ठीक है, लेकिन उसका हेड लग गया भाई, बात ये है, कोई दिक्कत नहीं। और वो भाई वो बेल बुद्धि वो भी वही कर रहा है। Drone going out. Drone is down. Don't miss me too much. Launching missile. My turn. बग जा क्लोज से मत मरना, क्लोज से मत मरियो। Grenade is live. You should run. Biusa, jet Biusa. Jet Biusa है। I have them. Enemy A. सीढ़ी आ गया देखो। Stim beacon here. कर दे अल्ट रेस भाई, कब बचा के रहेगा अल्ट? Spike कब planted. तक? Last player standing. इसको बोल रहा है भाई। रेस नहीं, सॉरी ब्रिम को बोल रहा हूँ। ब्रिम भाई। Last round before the switch. If you're not spending your cash, at least buy me something fancy. बैंडल चलाएगा? सोच समझ के करता हूँ भाई। हैं? डुएलिस्ट नहीं हूँ मैं कि किल करूँगा आ जाऊँगा। बैंडल चलानी है तुझे? हाँ बचो तो ले, मेरे को जज दे दे, या फिर पक्की दे दे। जज का पैसा नहीं हो रहा मेरे को। पक्की दे दे। शॉट मैं देख रहा हूँ, तू वहाँ देख। Get out of my way. ए स्मोक दे, कंट्रोल मत दे। अरे कंट्रोल नहीं Doing a चाहिए thing. यार। Somna. कंट्रोल नहीं चाहिए। बेटे उधर ट्रिप है भाई, इधर आ जाएगा। ये छोड़ दे, ठीक है? छोड़ दिया पूरा। ये पूरा। Enemy spotted mid. Launching smoke. Reloading. रेस भाई आ रहा है क्या तुम्हारे पास? फुट्स तो नहीं है, देख। कुछ भी मार रहा भाई टैप। Who's next? Enemy spotted C. Last player एक्चुअली भाई मेरी साइड पे नहीं आने दिया भाई उनको। 30 seconds left. मैं आने नहीं दिया। Spike planted. लिटरली भाई। ट्रिप लगाया उधर, फाइट लगी हुआ है। हो नहीं रही कुछ। कम ऑन D1। ओ आई मीन D3। तुमसे ही होगा भाई, तुमसे ही होगा भाई। तुम दोनों से होगा, अटैकिंग में जो होगा अब। क्या अटैकिंग में भाई, पूरी एनर्जी लगा दी भाई पूरी डिफेंस में। बोल रहा ना अपन तीनों ही काफी है, ठीक है? मैं स्मोक हूँ, तुम दोनों डुएलिस्ट हो। तो भाई अब स्मोक ले। Engineer killed. My ult's ready. Here comes the party. One enemy remaining. Wait for me. लाइव है बढ़िया। सेफ किया क्या? Clutch. Don't mess with this नाइस, अच्छा Bayana. खेला। Switching sides. छोड़ जो भी हो। Remember. लर्क वर्क कर रहा आया हूँ। था क्या? अरे सबसे मेरे को पता सबसे इजी साइड सी ही लगती है, सी है भी। और केजे से इशू आता है, लेकिन हाँ आता तो है। सैचुलर और डैश पे ना, सैचुलर और डैश पे अगर हवा में लगती है, अगर उसमें उसकी बुलेट हवा में लगती है अगर, तो दिक्कत है। किसको कह रहा है? उसको ही बोल रहा हूँ ना। एओ को? हाँ, एक मॉली इधर कर दिया उसका, वो सुन भी कहाँ रहा है? सुनना विजन, वो विजन कह रहा हूँ।
ठीक है भाई, तुम लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे? बैक साइड मैं इधर जाऊंगा इसके ऊपर, इसके ऊपर। फिर अपना नीचे देख लेना, ठीक है? अपने नीचे देख लेना। हाँ वो मैं देखता हूँ, पूरा करना चेक करता हूँ। और पीछे के लेफ्ट कॉर्नर चेक कर लियो, लेफ्ट राइट ये एग्जैक्ट। ड्रोन कर रहा है वो। साइड के अंदर हो, साइड के अंदर हो। ये कौन मर गया भाई? चैम्बर मरा। सिटी देख, सिटी होल्ड कर, सिटी होल्ड। ए 78 शॉट, गैरेज गैरेज। Last player standing. अरे नहीं होगा भाई, प्ले बनाओ, लर्क वगैरह करके कॉम्स पर खेलो। भाई हमारे दो टीममेट तो सन्नाटा है भाई, कुछ है ही नहीं। संजीव कुमार सिंह, एनी टिप्स फॉर सिल्वर प्लेयर? भाई ऐसी कुछ खास टिप्स नहीं है भाई, बस खेलते रहो, बस खेलते रहो। तू भी स्ट्रीम करता है क्या? दोनों स्ट्रीम करते हो क्या? हाँ स्ट्रीम करता हूँ। संजीव भाई ऐसी कोई खास टिप्स नहीं है, बस खेलते रहो, बस अपने आप एम अच्छा हो जाएगा। अरे चैम्बर ने एक लड़कर मारा है, फ्लैंक में नहीं होल्ड हुआ उससे। दूसरा शॉट भी वो देता है ना उसको। रुक जा रुक जा रुक जा। All missiles away. Down. Reloading. Enemy मारा। down and out. Last player standing. कोई ना, Spike down A. कोई ना, ये मैच जीजी है। तो क्लियर कर रहा था। मैंने तो तगड़ा मारा है जेट को डिफेंस में, नो डाउट। जेट को मैंने शायद से मारा है। डिफेंड में मेरे 12 हैं, उसमें से 8 पता नहीं कितने, 3-4 तो मारे हुआ है जेट को मैंने। संजीव भाई डेथ मैच तुम खेलते हो ना, तो उसमें जो एनिमी है ना, उस पर तुम हेड एम करना, बस ओनली हेड, ओनली हेड। तुम चाहे कितनी बार मरो, कितनी भी बार मरो, बस हेड एम करना, एम अच्छा हो जाएगा। अरे यार छुप जा, क्या जरूरत? वेलकम भाई, बड़े दिनों बाद। Missile deployed. Stim beacon down. Bomb going out. Nice and slow now. Don't miss me too much. Plant the spike. Ignition. Reloading. Spike planted. सिल्वर में खून खोल जाता है, टीम बहुत बढ़िया आती है भाई। चैम्बर क्या स्प्रे मार रहा है? ऊपर देख, ऊपर देख। 15 गोली ऊपर से जा रही है, एक गोली लग रही है। सच में अभी देख कर आया। अरे One enemy remaining. एक तो 43 किल्स गया था। Grenade. मतलब अभी नहीं, वो टाइम मतलब No one's gonna give you what you want. वो अलग ही लेवल के बंदे होते हैं। मजा तो आएगा ये जो भी हो। फुल नो एम, ओनली ब्रेन गेम। Safety's off. Get out of my way. Locating targets. अरे Be right back. Stim beacon here. Nice and slow now. मेरा बैक साइड है, बैक साइड है। Spike carrier is down. अरे वाह। Spike down C. Last player standing. क्यों कर रहे हो भाई पीक? कौन था ये करने वाला है? भाई हमारे टीममेट को साइड आने ही नहीं है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। You pick a gun and it tells me who you are.
लर्क भी तो तंग से करना आना चाहिए भाई। Reloading. लर्क पता कैसे करते हैं? पीक ही नहीं राउंड देते। शुरू होते ही लर्क करने जा रहे हैं भाई। इसका लर्क मतलब नहीं, ये पिक दे रहे हैं उन्हें, लर्क नहीं बोलते उसे। वॉकिंग अल्ट और रुक जा। ये रहा। Enemy spotted A. चला गया। Reloading. रुक वही रुक रहा, वेले रुका। अब चल। Reloading. Light planet. Launching smoke. लॉन्ग गया होगा फ्लैंक वाला, देख लो एक बार। अरे बैक स्टेप तो नहीं आ रहा कोई? भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज। ये जीते तो सुपर चैट। मैं फ्लैंक होल्ड कर रहा हूं। मुश्किल लग रहा है भाई। Enemy A. One enemy remaining. शॉट देख ले। सेव कर। Last player standing. ब्रेकिंग बैड भाई ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे चैम्बर भाई और तेहो के एक जुबान नहीं निकल रही भाई मुंह से। अबे जुबान की बात नहीं है, वो कौन सी मूवी हाँ बड़ा बोल ले। ये होते हैं कि भाई ऐसे सुन। अरे रुक एक सेकंड, रुक जा। वेले तू अल्टर ले रहा है, मैं लूं? तू ले ले, तेरा काम का है, मैं तो ऐसे घुस जाऊंगा। का ना? हाँ ले लो। तो मेरी अल्ट के पहले मत करना, जब मैं अल्ट पॉप करूंगा तब कुछ डैश करना, ठीक है? कवर दे पॉइंट के लिए। Drone going out. अरे हट जा भाई रास्ते से। My ult's ready. रुक जा। वाओ। Gonna fall back here. Missiles away. गैरेज पे है। प्लांट ले ले, बुश प्लांट पर खेल पाएगा। स्मोक कर देगा भाई। Planet. They found my trap. You should run. मरना मत। Last player standing. मैं इसको वेट करना। कोई नहीं यार, जीतेगी मैं वैसे भी। Flawless. जुबा केसरी है क्या दोनों? हाँ जुबा केसरी है। Match point. These dumplings are okay, but I will also bring my own. No offense. हाँ वो भी नहीं कर रहे भाई। भी आजा, एंट्री करा दूंगा। एक तो थोड़ी बहुत हूँ कर रहा है, एक तो भाई थूक ही नहीं गुटक रहा है, थूक रहा है ना गुटक रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा है। गने क्या? मेरे पे नहीं है, मेरे सारे पे हम पे। क्लोज आ गया। उसका वो तोड़ सकते हैं क्या? Stim beacon down. Missile deployed. Be right back. I have them. Planet. Light munition. दोनों साइड। लेफ्ट साइड पे, यस, लिंक। डाल दे। One enemy remaining. Last player standing. Open up the sky. Ollie. मार, ऑफ लेगा। लैग में लगी, उसके पैर में लगी ना। Smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. दूसरी नाइफ हेड पे लगी, पहली जो मारी पैर पे लगी। ऑफ कर रहा है। कह रहा ऑफ कर रहा है। शॉट गन दे अपनी।
मैं करूँ क्या ऑप यार, मैं करूँ क्या? नहीं करने दे सुनना अबे तेरी जरूरत है मेरे को। ब्रिम सुनना, यहाँ से पीक ले, बंदे की पीक ले, ठीक है? उसको मत, अगर उसका वो होगा ना बॉट को मत देखियो, बॉट वेले तोड़ियो, ठीक है? Stim beacon down. ये रहा राइट में। Doing a thing. You're done. Go get him. Grenade is live. Spike planted. ओए बाय द वे Gun ये here. मेरे को गन थे भाई, ले गया मेरे से। Smoke's down. फ्लैंक देखो। One enemy remaining. रुको भाई, पिक्स में काम आएगा भाई। फर्स्ट पिक लेने में। It seems these strangers want me ले dead. सकते हैं अपन। Yeah, they're not. मेरा अल्ट कहाँ चल रहा है? ये बी कर सकते हो वापस अल्ट करके। तो मुझे लगता है सैंडविच हो जाएगी बी। 20, हाँ बी तो सैंडविच हो जाएगी। अगर तेओ इधर से अल्ट करे ऐसे करके तो हो जाएगा भाई। अरे हाँ, ओए तेओ सुनाई दे रहा है ना? नहीं सुनेगा। हेलो, ओए चेंबर का तो बंद ही कर दिया चेंबर ने, तो अभी बताओ। अगर सुनाई हाँ दे चेंबर ने तो म्यूट कर दिया। अरे वो गलती करेगा, वो सुन नहीं सकता ना भाई, शक्ति नहीं हो। Stim beacon here. Right back. fun. My turn. Drone is down. स्पाइक तुम पे है वैसे। Spike down. C. Last player standing. Get out of my way. Trap destroyed. भाई इसने क्या मारा ये स्मोक के अंदर? I have the spikes. Nowhere to run. Hey. Defenders win. चलो भाई जी चलते हैं। रैंक का भी गंडमरी हो जाती है भाई फिर। भाई क्या कर सकता है आदमी? ये अगर चेंबर साथ में आता ना भाई, छोड़ो क्या भाई, अपन तीन ही भाई काफी थे। अरे रिफंड हो गया? मेरे को नहीं हुआ। क्या? भाई वही बंदे की वजह से हुआ। जेट की वजह से? हाँ। मुझे क्यों नहीं आया? वो भाई तुझे आया क्या भाई गिगा भाई? देखो क्या लिखा ही, देखो भाई आरआर रिफंड प्लस 16 आरआर। अच्छा प्लस 16 क्यों हुआ भाई? 73। चलो 2 आरआर छोड़ो भाई, गांड में रहा था वो 2 आरआर। हाँ आरआर तो कम माइनस हुआ है भाई, 20 दिखा रहा है और हुआ कम ही है। अबे इधर पे दिखा रहा है ना भाई, वो जो दिखाता है जब जो ड्यू टू गुड परफॉर्मेंस, वो स्क्रीन पे हूं मैं अभी, ठीक है? दिखा रहा है कि 16 आरआर रिफंडेड ड्यू टू पास्ट अनफेयर इवेंट। पर अनफेयर क्या था उसमें? तो तुम्हारे से पहले का मैच तो नहीं था? ना चेक कर ले एक बार। यही मैच भाई मेरी 47 थी और अभी 38 है बची है। अब बताओ देखो इतनी, और 20 का माइनस दिखा रहा है। अबे यही था भाई, यही मैच में हुआ भाई। यही मैच में कुछ गड़बड़ हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अबे मैच भी तो दिखाता है, कौन सा मैच था? हाँ हेवन में ही तो दिखाया। दिखा रहा है मैच। मेरा 9 ही माइनस हुआ भाई, 20 दिखा के 9 माइनस हुआ। अबे रुको 1 सेकंड। गीगाफ्लिक भाई, हाँ वो दिखा रहा है 16, ठीक है? तुम्हारा भी 16 ही हुआ क्या? नहीं 11 माइनस, मतलब मेरा 9 ही माइनस हुआ है भाई, 9 ही माइनस हुआ है। पूरा माइनस हुआ है। अरे रुको 1 सेकंड, रुको मैं तेरी स्ट्रीम देख रहा, रुक जा। और नहीं सहा जाता क्या? मैंने रिपोर्ट किया था ना भाई, मैंने भी करा था रिपोर्ट। क्या जेट को? मैंने भी करा था जेट को। हाँ जेट को ही। तो फिर ये लग रहा है मेरे को, ये 16 हुआ मतलब इसका हुआ होगा भाई रिपोर्ट। मेरे को लग रहा है तो तुम्हारा एक मैच, तेरा मैच नहीं पहले वाला एस्ट्रा वाला शायद से उसका है। हाँ वो वाला जो क्या बोलते हैं उसको, रुको पर्ल का 16 हुआ। हाँ पर्ल का 16 आरआर देखो क्या मैं भी, पर उसमें कुछ था नहीं भाई से, सब अच्छे थे भाई उधर। क्या हो सकता है ना, पॉसिबल हो भाई, कभी कभार दिखता नहीं है। और कोई मैच का होगा तो होगा भाई, पता नहीं। अगर इसको भी हुआ मेरे को नहीं हुआ, इसका मतलब यही होगा भाई। नहीं कुछ दिक्कत ये है क्योंकि मेरा जो 9 माइनस हुआ है और 20 दिखा रहा है, मतलब 47 था 38 बचा है। तेरा भी प्लस तो हो गया ना फिर वही है ना भाई, 16 कर दो फिर 38।
क्या 47 था ना? 20 minus 16 कितना होता है? रुको 20 इसने भी तो खेला था पर्ल पे, देख इसने भी पर्ल पे तो खेला सही तो था, है। इसने भी पर्ल पे खेला था देख। हाँ वो मेरे साथ ही था भाई। वही पर कह रहा हूँ ना, उसी मैच का होगा भाई तुम्हारा। हाँ उसी मैच का होगा भाई, मेरे को तो लग रहा है। पर्ल वाला। हाँ पर्ल वाला 16 उसमें था, 16 माइनस हुआ था, हो सकता है, पर उसमें कुछ रिपोर्ट नहीं किया था मैंने किसी को। वो तो जरूरी थोड़ा रिपोर्ट करना भाई, वो तो गेम चेक करता रहता है। कैरियर देख लो उधर अपने टीम में, ठीक है गोल्ड भरती है, और आगे टीम में भाई डायमंड। होता है होता है होता है। और भाई काजा तुम देख लेना भाई, हमारी जो लॉबी थी ना पूरी सेम थी, सिर्फ जेट को छोड़ के। जेट ने 34 किल कर दिया अकेले। हाँ भाई अब क्या ही कर सकते, छोड़ो। 14 लाइक हो गए आज तो। हाँ भाई 14 लाइक हो गए आज। मारा तो क्रेजी भाई, कुछ भी बोल। अरे हो जाता है, क्या है ना, सुबह भाई उठा होगा, माइंड फ्रेश होगा उसका, मार दी, उसमें क्या है। बूस्टर है, अरे बूस्ट कर रहा होगा भाई, बूस्ट करा रहा है भाई, क्योंकि उसका भाई ट्रैकर स्कोर देख लो। हाँ ये आया भाई, देखो लिखा है अमाउंट टू बी रिफंडेड प्लस 11 आरआर, रीजन फॉर रिफंड चीटर डिटेक्टेड इन अ मैच। कहाँ पे दिखा दिख रहा है भाई। मैच दिखा रहा है, मैच नहीं दिखा रहा है, उसी मैच का है। ये पढ़े कहाँ से फिर? ये दिख रहा है मेरे में, पूरा लिखा हुआ है भाई सामने मेरे, लिखा हुआ है अभी भी है। कहाँ पे बताओ तो। स्क्रीन में पॉपअप आया ना उसकी, हाँ पॉपअप आया है मेरे में, दिख रहा है स्क्रीन पे, देख सकता है मेरी स्ट्रीम पे जाके। मैंने अभी हटाया नहीं है। हटा दे, वो तो स्ट्रीम में देख लेगा पढ़ के। अबे उसी मैच का होगा वो, पर्ल वाले मैच का, मैंने देखा ना, पीछे जाके दूंगा। चीटर डिटेक्टेड, पर उसमें इतना अच्छा अचानक से दिखा क्या ऐसे? हाँ अचानक से अभी आया। रुकना मैं होम जाने दो मेरे को। हाँ मेरा भी दिखा रहा है भाई। अबे तू जा फिर होम पे जा, पूरा होम पे जा काजा। हाँ कुछ दिखा रहा है क्या तेरे को? होम पे तो कुछ भी नहीं दिखा रहा भाई। होम मतलब समझ गया ना, जो ट्रेलर चलता है जिधर। तेरे को भी दिखा रहा होगा है ना विजन? हाँ मेरे को तो दिखा रहा है, व्हेन ही स्टूडेंट आरआर ये वो चीटर डिटेक्टेड। मुझे कुछ नहीं दिखा रहा। हाँ तो फिर वही वाला मैच है भाई, उसी मैच का है ना, मैं बोल रहा हूँ पर्ल वाले मैच। किसी ने मारा क्या? पर ऐसा किसने मारा भाई, ऐसा कुछ? अरे जरूरी थोड़ी ना है कि किसी ने भी रिपोर्ट मारा होगा तब भी हो जाता है, और रिपोर्ट नहीं भी मारा होगा तब भी हो जाता है भाई, सबको होता है भाई, वही तो। हाँ पर सबको मतलब हो जाता है कोई ऐसा कुछ खास मार नहीं रहा था उस मैच में। अरे तो जरूरी थोड़ी ना है, अच्छा जरूरी थोड़ी ना कि एम बॉट ही होगा, वॉल हैक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अबे अगर तूने ना, नहीं पता है क्या इसमें अगर तुमने जैसे ना इसके कोड में जाके अगर तुमने जैसे वॉलपेपर वगैरह के लिए भी कुछ स्विच मार दिया ना बाय चांस, अच्छा तो तब भी इसमें चीटर वो आ जाता है, चीटर डिटेक्ट का पॉपअप आ जाता है। हाँ लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी यार काजा भाई, कि हम जहाँ जा रहे थे ना उसी साइड पे वो मिल रहे थे भाई, सब स्टैक रहते थे। जेट जेट अच्छा अटैकिंग में, अरे इसमें नहीं, स्टैक रहते थे पर्ल वाले में। हाँ तो वॉल हैक्स होंगे फिर। भाई काश हो जाए भाई, ये जो अपना जो माइनस हुआ ना अभी, ये भी फ्यूचर में रिफंड हो जाए भाई। नहीं भी होता क्या फर्क पड़ रहा है। देखो तो बूस्टर नहीं लग रहा है भाई वो। To ensure fairness and accuracy in खेलना है क्या? चलो भाई जा रहा हूँ मैं अब, ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। शिट ओके भाई अपना जीटीए कब होगा? करना है क्या आज? अरे इसको बोल रहा हूँ गीगाफ्लिक। जीटी अगर ऑफलाइन अगर खेलना हो तो अभी स्ट्रीम बंद कर देना, खेल सकते हैं अपन ऑफलाइन के लिए मतलब ऑफलाइन मतलब ऐसे ऑफ स्ट्रीम बोल रहा हूँ। हाँ ऑफ स्ट्रीम खेलना है तो खेल सकते हैं। क्यों क्योंकि थंबनेल नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हाइस्ट करते हैं, चलो तीनों करते हैं। अच्छा वैसे बोल रहे हो? वैसे खेलते हैं। अरे अरे विजन खेलते ना ऑफ स्ट्रीम खेलते हैं, आजा शाम को आ जाओ फिर, बता देना मुझे, मैसेज कर दियो, मेरा पक्का नहीं रहता। चल ठीक है। ठीक है D3 कब होगा? प्लस नहीं होता अब, हारने वाले मैच से निकल जाता है। ओ D3 कब होगा? हो जाएगा। कितना टाइम बचा है मैं ये जाने के लिए एक्ट? बाकी गीगा भाई तुम वो डीबीडी तुमको वैसे अच्छा तो लगेगा, वो डेड बाय डेलाइट इंस्टॉल कर दोगे तो सही रहेगा फिर। 2 दिन बचे हुए हैं अभी, हो जाएगा D3 हो जाएगा। GTA नहीं, कुछ न्यू गेम और क्या भाई, और कौन सा नया गेम भाई? तेरे सूर्य भाई देखा क्या नया एजेंट? चलो मैं जा रहा हूँ। भाई जैसे मैं जा रहा हूँ वॉचिंग बढ़ रही है मेरी भाई, क्या हो रहा है ये? लाइक कर दो भाई जाते टाइम, सब्सक्राइब भी कर दो।
ब्रेकिंग बैड भाई D3 हो जाएगा, आज हो जाना चाहिए रात में। चल जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्रेकिंग बैड भाई मिलते हैं अपन, और देखता हूँ भाई क्या क्या मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एक्सेस एज अ मॉडरेटर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तुमने मुझे भेज दिया ना वो, जीमेल भेज दिए। जीमेल भेज दिए। चलो नहीं भेजी होगी तो भेज देना, ठीक है। हाँ कर देना, वही जीमेल जो अभी तुम हो, अभी कोई भी भेज देना जिस जो तो आईडी चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जा रहा हूँ मैं, गुड नाइट, सोऊंगा अभी।